my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. हेलो देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका यहाँ पे अलगामो ई स्पोर्ट्स पे। और इस समय टूर्नामेंट चल रहा है, वो देख रहे हैं आप, बैटल फॉर द क्राउड। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये जंग है नाम की, रिस्पेक्ट की, एक लेगेसी की, जहाँ हर रोटेशन मैटर करेगा, हर टीम फाइट एक हिस्ट्री लिखेगा और एंड में सिर्फ एक टीम बनेगी वो विक्ट्री का ताज। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द बैटल फॉर द क्राउन। और आज सभी के सामने कास्टिंग करने के लिए आया हूं मैं, यानी कि शिनरा, और मेरे साथ कास्टिंग करेंगी पीची। तो पीची, क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया सब बढ़िया। आज के नए दिन पे आई थिंक हमारा ये लास्ट ग्रुप बाकी है, इसी के आगे हमारा राउंड ऑफ 32 चालू होगा। तो मतलब आगे के भी मैचेस काफी हार्ड होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो राउंड 1 राउंड 2 चालू है, इट्स स्ट्रॉन्ग ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम्स आर विनिंग एंड वही टीम्स आगे बढ़ते जा रही है। जैसे ही टूर्नामेंट बढ़ती जा रही है वैसे ही छोटा होते जा रहा है, बट उसी के साथ सब लोग रेडी है एक वो दिन पहुंचने का जहां पर वो जीतेंगे। तो देखते हैं आज की टीम कौन होगी। तो लगता है we have मॉमी लवर्स वर्सेस आरटी। और अभी ग्रुप डी का मैच चालू है। जितना मैंने अभी डे नंबर 1 से देखा है, ग्रुप नंबर ए से सी वॉज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आज मुझे वो देखना है कि क्या ग्रुप डी भी स्ट्रॉन्ग है या नहीं।
जी बिल्कुल, वो देखने को ज़रूर मिलेगा क्योंकि दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। एक ही चांस रहेगा, पूरा दमखम आपको एक ही मैच पे लगाना है और यहाँ पे गलती करने की गुंजाइश वो बहुत कम रहने वाली है आपसे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो प्रेशर एक वो रहेगा, क्योंकि एक गलती के कारण आप पूरा एक मैच हारोगे, जहाँ से आप सीधा बाहर हो जाओगे, दूसरे चांसेस नहीं दिए जाएँगे यहाँ पे। तो थोड़ा-सा प्रेशर रहने वाला है टीम्स के ऊपर। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ, तो ड्राफ्टिंग पे देखा जाए तो थोड़े इनिशिएटर मैं देख रहा हूँ जो डाइविंग कॉम्प है उनके ऊपर टारगेट करती हुई दिख रही है मोमी लवर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले कनिता को बैन किया जाएगा, उसके साथ-साथ ग्रॉक को बैन किया गया है, जो अच्छा खासा इनिशिएटर है। टैंक के तौर पे हमने देखा है कि बहुत सारी फाइट्स जो है ये इनिशिएट करते हैं अपने टैग चार्ज के साथ। फिर बात की जाए उनके जंगलर को अनॉय करने के लिए और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे ग्रॉक लेके आते हैं, तो यहाँ पे बैन लाजमी बनता है। दूसरी साइड पे देखा जाए आर की तरफ से जूशिन बैन आता हुआ दिखेगा, उसके साथ साथ लापू लापू बैन होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मैचअप पे अभी इतने नहीं चल रहे, लेकिन ठीक ठाक है। मतलब EXP पे अगर आपको कोई और पिक नहीं मिल रहा है तो लापू लापू एक सेफ चॉइस रहती है, तो वो यहाँ पे बैन होता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली यहाँ पर ग्रॉक बैन तो हो चुका है, बट कोई बार ऐसा भी देखा है कि मैंने ग्रॉक ओपन है और टीम्स नहीं लेती है। आई थिंक वो तो कोई कोई टीम्स नहीं पहचानती है कि पूरी पोटेंशियल क्या है ग्रॉक की, बट कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ वन सीरीज है, इट इज बेटर सेफ देन सॉरी, तो उसी की वजह से बैन किया गया है। मॉमी लवर्स आज क्या लेना चाहती है? फर्स्ट पिक थोड़ा सा अजीब सा पिक है, क्योंकि डायरेक्ट कभी हम फर्स्ट पिक पे नहीं देखते, बट इंटरेस्टिंग सा मैच बना रहे हैं। दायरा आया है अर्ली गेम पे, थोड़ा पोटेंशियल हमें दिख सकता है। तो अर्ली गेम जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी है, लेकिन हमने देखा है कि डायरा मिड से लेट गेम की तरफ जब आता है तो उसका जो टीम फाइट में एक तरीके से आप बोलेंगे ना, जो इम्पैक्ट है वो कम होने लगता है, फिर इसको इजिली मारा जा सकता है। लेकिन अर्ली गेम पे एक जो प्रेशर है वो स्नोबॉल करने के लिए अच्छा हीरो रहेगा। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे EXP की तरफ जाना चाहेंगे, जंगल खेलना चाहेंगे डारत के साथ। और दूसरी साइड तरफ से देखा जाए तो जीतियन का आगमन होगा, उसके साथ साथ बेलरी की अच्छी चॉइस रह सकते हैं। तो जो सीसी है यहाँ पे डाइव इन करने के लिए अगर डायराउट आते भी है तो उनको दिक्कत होगा, तो इसलिए यहाँ पे दो अच्छे खासे डिसएंगेज लिए हैं जो कहीं ना कहीं टीम का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे ईशिया बैन होती हुई दिख रही है टीम RTR की तरफ से। ईशिया बहुत ही मैं कहूंगा भी, हालांकि जब से नर्फ आया उनके ऊपर तब से इतने ज्यादा मेटा पे नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरी साइड पे देखे जाएंगे एमन का पिक होगा, काफी इंटरेस्टिंग पिक है एमन। और दूसरी तरफ से यहाँ पे कडिता वो ओपन एक सेकंड, कडिता यहाँ पे पिक हुई है, तो पहला बैन क्या था यहाँ पे? कोई बात नहीं, बग होगा प्रोडक्शन के साइड से, वो फिक्स हो जाएगा जल्द से जल्द, बट हम गेस कर सकते हैं मे बी ओके वो होगा कैरी, करिता कैरी पे कंफ्यूजन एंड कैरी निकल गया एंड करिता ही बैन है। एंड कैरी इज अ गुड पिक, बट बेलरिक के आगे मुझे काफी डाउटफुल है, क्योंकि एक बार बेलरिक ब्लेड आर्मर बना देते हैं और कॉल्ड्रन बना देते हैं, तो चास्टिस कॉल्ड्रन बना देते तो काफी कैरी को दिक्कत देगा। एंड इसी के साथ दिक्कत बढ़ाने के लिए आलू कार्ड एज जंगल भी ले चुके हैं RTR। दोनों की दोनों टीम्स डेफिनेटली कुक कर रही है। जी देखा जाए तो थोड़े टिपिकल टूर्नामेंट छोड़ के कंफर्ट पिक्स की तरफ जा रही हैं टीम्स, और वो बेटर भी रहता है कि आप जिसमें अपना 100% दे सकते हैं आप उस कॉम की तरफ अगर जाते हो तो वो बेटर रहता है। हमने देखा है कि काफी सारे मैचेस में कि टीम अच्छा ड्राफ्ट लेके रख देती है, लेकिन दूसरी साइड पे अगर बात की जाए तो जो दूसरी टीम्स होती है ना, जो कंफर्ट पिक की तरफ जाती है वो बेहतर खेल जाती है, तो वो दिखाता है यहाँ पे। और इस तरीके की जो कॉम्प है वो हमें आती हुई दिख रही है। आलू कार्ड यहाँ पे जरूर आए हैं, तो एक तरीके से आप एमन का काउंटर भी बोल सकते हैं लगभग अगर उनको मौका मिलता है तो लाइफ स्टील उनके पास रहेगा, आगे चार्ज कर सकते हैं डाइव इन करने के लिए और फिनिश ऑफ कर सकते हैं एमन को। और उसी के साथ डायराउट जो है अंदर की तरफ अगर चार्ज करते हैं तो उनको रोकने के लिए, उनको डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे जीतियन रहेगी, उसके साथ साथ बेलरिक भी रहने वाले हैं। जैसे कि आपने कहा था कि यहाँ पे कैरी को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो वो बहुत सही बात बोली थी आपने कि कैरी के पास देखिए एक तो शॉर्ट डिस्टेंस है, उसके पास रेंज नहीं है कैरी के पास, कैरी को आगे ही जाना पड़ता है। और बेलरिक का यही सबसे बड़ा फायदा कि आप आगे जाके सीधा उसको वेंजेंस लगा देंगे, उस पे वेंजेंस लगाने के बाद ब्लेड आर्मर एक बार आपका बन जाता है तो फिर वो डैमेज जो है अच्छा खासा दे सकते हैं। हाँ कैरी के पास
एक तरीके से बोल सकते हैं कि ट्रू डैमेज उनके पास आएगा, अटैक स्पीड आएगा, लेकिन वो काउंटर करने के लिए बेल्ट्री के पास इनफ इतना डैमेज होगा कि कैरी को पूरी तरीके से मेल्ट डाउन कर सकते हैं वो। तो सेफ ऑप्शन ये रहेगा कि डायराउट अगर आगे जाते हैं, टैंक इनिशिएट करते हैं, वहां पे रिसोर्सेज वेस्ट करवाते हैं, तो कैरी अगर एंड में आती है तो तब वो कुछ कर सकती है। अगर पहले एंगेज होगा उसके ऊपर तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे मोबाइल लवर्स को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पील की। तो यहाँ पे एक ऐसा पील चाहिए, इनको ऐसा टैंक चाहिए जो कैरी को प्रोटेक्ट कर सके आगे आने वाले इनिशिएटर्स से। हाइलोस में भी यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एमएल ले सकती है मोमी लवर्स, एंड इसी के साथ थोड़ा बहुत मोबिलिटी मिलेगा फ्रॉम हाइलोस का अल्टीमेट, एंड स्लो डाउन भी हो सकता है क्योंकि आरटीआर के पास काफी ज्यादा मीली हीरोज है, सच एज द मिन सितार एंड दी आलूकार्ड, तो उन्हें सामने आना पड़ेगा मारने को। अगर हुक नहीं लगा तो मिन्सितार को कैसे भी आगे आना पड़ेगा। तो ये बात पे आई थिंक हाइलॉस का काफी पिक अच्छा होगा, बट वही प्रॉब्लम आती है मोमी लवर्स के हाथ पे कि ईएक्सपी लेन पे डायरेक्ट लिया है, वो ऐसा हीरो है कि जो बर्स्ट डाउन करेगा। अगर इफ ही इनिशिएट्स एंड उसका वो सक्सेसफुल इनिशिएशन नहीं हुआ, जैसे हम बात करें जूशिन के पास जा रही हो एंड जूशिन का पैसिव है, तो वो काफी दिक्कत देगी। बट ये क्या देखने मिल रहा है, मिड लेन पे डायरॉट या मिड लेन पे एमॉन? आई थिंक मिड लेन पे एमॉन होने वाले हैं। डायराउट जो है वो जंगल की तरफ जाएंगे और मिड लेन पे थोड़ी बोल्ड चॉइस रहेगी आपके पास, लेकिन यहाँ पे क्राउड कंट्रोल की कमी रहेगी जो रेंज हीरो के तौर पे मैं कह रहा हूँ। रेंज आपके पास है ही नहीं, आपके पास सारे हीरो जो है वो अंदर डाइव इन करके खेलने के लिए, और एक बहुत बड़ा दाव वाव लगा रहे हैं यहाँ पे। और इसी बात का फायदा जो है इनका मेज यानी कि जेतियन वो फायदा उठाएंगे इस चीज का। तो या तो इनको स्टार्टिंग से ही पूरा डोमिनेट करके खेलना पड़ेगा, तभी ये लोग ले पाएंगे। लेकिन अगर एक भी टीम फाइट टीम मॉबी लवर्स अगर हारती है तो मिन्सी फिर देखते देखते वो टावर खत्म कर देंगे। मिन्सी लेने का सबसे बड़ा फायदा भी ये होता है कि अगर आप एक भी टीम फाइट जीतते हैं तो अटैक स्पीड के साथ वो टावर मिन्सी के सामने ज्यादा देर नहीं टिकता है। सेकंड स्किल के द्वारा वो सीधा टावर जो है स्ट्रक्चर तुरंत खत्म होते हुए दिखता है हमको। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी, थोड़ी ब्रॉली जो मैं कह रहा हूँ कि ड्राफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि लगातार फाइट्स हमें देखने को मिले। तो ये गेम थोड़ा फास्ट पेस की तरफ जाएगा और आई थिंक ये गेम बहुत अर्ली गेम की तरफ एंड करने की कोशिश करेगी टीम आरटीआर। 100%। सो देखता है आरटीआर विद द लास्ट पिक एज द क्लिंट, एंड क्लिंट के पास रेंज होता है, क्लिंट के पास डैमेज भी होता है। तो गोल लेन पे यहाँ पर जो भी जा रहा है आई थिंक डायरेक्ट होंगे। थोड़ा दिक्कत तो पड़ेगी बट अर्ली गेम उन्हें चांस है डायरेक्ट को मारने को। बट अगर टीम फाइट ओरिएंटेड खेल रहे हैं तो वो भी काफी अच्छा है क्योंकि मोमी लवर के पास कार्मेला है, उनके पास टेरेजला भी है, काफी ज्यादा अच्छा इनिशिएशन है, बट एग्जीक्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लैंड ऑफ डॉन में जाएंगे काफी जल्द से जल्द, एंड वहां पर हमें पता चलेगा कौन सी टीम आगे बढ़ेगी राउंड ऑफ 32 के लिए। जी, राउंड ऑफ 32 के लिए टीम आपस में भिड़ने के लिए रेडी हैं और उसी के साथ आप सब भी रेडी हो जाइए दर्शकों, क्योंकि हम कुछ ही देर में जाने वाले हैं सीधा लैंड ऑफ डॉन में। और बोलते ही साथ स्वागत होता हुआ देवियों सज्जनों आप सभी का। तो यहाँ पे ब्लू साइड पे रहने वाली है टीम मोबाइल लवर्स और रेड साइड पे रहेगी टीम आरटीआर। और यहाँ से जो स्टार्ट होते हुए दिखेगा हमको युद्धभूमि की तरफ चले गए हैं ब्लू बफ की तरफ से, जंगलर को फार्म करवाएंगे। बात करें गोल्डन की तरफ तो थोड़ा सा आदान प्रदान होता हुआ पीछे रह के वो फार्म करने की जो है कोशिश होती हुई दिखेगी। और अभी अर्ली गेम से थोड़ा सा इन्वेड आने का कोशिश यहाँ पे आता दिख रहा है कार्मिला की तरफ से, अंदर की तरफ गए हैं और उसी के साथ कोशिश रहने वाली है। इवन आई थिंक थोड़ा सा अभी एक की तरफ है, दूसरी साइड पे देखेंगे, लेकिन फाइट ऑलरेडी जुट चुकी है, ज्यादा डैमेज आएगा। आलू गार्ड अंदर की तरफ जाएंगे, कार्मिला बहुत ही गलत पोजीशन पे और वहां पे इन्वेट करने के लिए गए थे, बहुत गलत डिसीजन जिसके कारण वो एक्स्ट्रा डैमेज आपको जंगल एरिया में पड़ेगा स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में। तो आपको बहुत संभल के इन्वेट करना होता अगर इन्वेट करने जाएंगे भी तो। और यहाँ पे वो बड़ा एक चूक हुआ जिसके कारण 2 किल आरटीआर के खातों में आ चुके हैं और अब मोमी लवर्स को इंतजार करना पड़ेगा अपने उस पीक का, अपने उस पावर स्पाइक का, और अपने इस लॉस को अब उनको मिनिमाइज करते हुए प्रॉफिट में बदलना है। लेकिन किस प्रकार से वो देखेंगे कुछ ही देर में। ओह माय गुडनेस, एमॉन एएफके होने की वजह से वो
गैंग जो हुआ था, जो इन्वेड किया था, वो काफी गलत गया। एंड इसी के साथ आरटीआर जा रही है एडवांटेज की तरफ। 3 किल्स ले चुका है इतने अर्ली गेम पे। एंड इसी के साथ रोरो जो है अपने जेटियन फार्म करते जा रहे हैं। लेवल 4 काफी जल्द हो जाएंगे। एंड एमन को अगर वो वापस आएंगे गेम पे तो काफी ज्यादा फार्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो वन शॉट नहीं कर पाएंगे। एंड मिड लेन काफी जरूरी होती है इन्वेड के लिए। पता नहीं क्यों वो 2 मेंबर्स गए थे, ट्राई किए थे, बट वो बहुत बड़ा फेल हुआ। बट अभी टर्टल पे क्या होगा? कोशिश रहेगी चुराने की, पीछे की साइड जाएंगे लेकिन जेथियन उनके हाथ से नहीं बच पाएंगे। और यहाँ पे कार्मिला का एक और किल। अब मॉमी लवर्स के पास ज्यादा चांसेस नहीं है। ऑलरेडी आपके पास एक हीरो कम है। 4 वर्सेस 5 की सिचुएशन बन चुकी है और अर्ली गेम भी पूरी तरीके से जा चुका है। फार्म की बात करें, फार्म भी पूरी तरीके से, लेकिन टरिजला यहाँ पे मौजूद रहेंगे। पेरेंटिजोल लगाएंगे जरूर 2 बंदों के ऊपर का प्रयास, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट लगेगी और पीछे से वो बैकअप आता हुआ एक और किल जाएगा चीमाचियार के खाते पे। 0-5 का स्कोर होता हुआ और उसी के साथ जो फार्म डिफरेंस है अब बढ़ने लग रहा है। 2500 का यहाँ पे फार्म डिफरेंस आ गया, जिसके कारण अब टीम को और ज्यादा सफर करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मोमिन लवर्स की उम्मीदें वो हाथों से जाती हुई, उनकी आंखों से जो है चूक होती हुई, और यहाँ पे गलती करने के चांसेस बहुत कम रहेंगे टीम आती आती। चलिए देखते हैं कैसे मम्मी लवर्स बैक अप वापस से कर आएगी, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा गोल्ड, काफी ज्यादा किल्स, 5 किल हुआ है फिर भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ऐसे कमबैक अचानक से नहीं होती है। थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। एंड उसी के साथ कैलकुलेटेड फाइट्स भी। यहाँ पर किंग ऑफ पैराडाइज के बारे में बात करें तो काफी सेफ खेल रहे हैं, बट नहीं, राइट ऑन टाइम आ जाते हैं बॉटम लेन में। काफी बैकअप भी आ चुके हैं। आलू कार्ड यहाँ पर जा रहे हैं बैक लेन्स के लिए, बट इट इज गोइंग टू बी द डायरॉथ जो पहले गिरने वाले हैं, पेस जाएंगे। इसका मतलब मिड लेन ओपन वापस से। मिड लेन की तरफ से रोटेशन आएगा जरूर, और एक बंदे की कमी बहुत ज्यादा खल रही है इस समय फॉर्मी लवर्स को, और उनको एक सीढ़ी नहीं मिल पा रही है जिसको वो चढ़ के आगे की तरफ चाहें। एक पिलर ही आपका कम है, तो जिसके कारण वहां पे आपकी जो स्थिति है वो डगमगा गई है। अभी उसको स्थिरता में लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फार्म करने की जरूरत है, लेकिन फार्म कैसे करेंगे क्योंकि चर्चल और ये सब तो सामने वाला जगना लेके चला जाएगा। डायरॉथ मौजूदा अंदर चुराने की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा कोशिश रहेगा। आज वो लेके जा चुके हैं। कार्मिला कर्ज ब्लाइड लगाएंगे जरूर, पीछे से कोई बैकअप नहीं, जिसके कारण उनको भी धाराशायी होना पड़ेगा। एक और किल टीम आर्चिया के खाते पे। खाता मॉमी लवर्स का खुला जरूर है, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। 1-8 का स्कोर लाइन, और उसी के साथ ये गेम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है क्लिंट और ज्यादा फार्म हो रहे हैं, और क्लिंट जब उनके पास वो डैमेज आएगा तो वो पोक करते हुए इजीली किसी को भी सामने फ्रंट लेन पे स्ट्राइक करते हुए जाएंगे। 100% राइट हियर, कज अभी जैसे हम देख रहे हैं क्लिंट काफी सेफ खेल रहे हैं। उन्हें भी पता है कि एनिमी इज मिसिंग है, तो इट इज जस्ट बेटर टू प्ले इट सेफ देन लूजिंग योर ओन लाइफ। अभी मिड लेन ओपन हो चुका है, तो मतलब डायरॉथ को बफ मिलना भी काफी मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि एक बात है मिड लेन की काफी इंपॉर्टेंट टरेट है पूरी गेम में। एंड इतना अर्ली गेम पे टरेट जाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम देख रहे हैं बेलरिक घूम रहे हैं बुशेस में, ये अलाउ हो जाता है मिड लेन जाने से। क्या मतलब रुक आ गए फाइनली इन गेम। देखिए फार्म करते हुए, एंड लेवल 4 और लेवल 8 का डिफरेंस हो चुका है, तो मतलब 4 लेवल बढ़ाना है जेटियन के आगे। अभी तो वन शॉट नहीं कर पाएंगे अल्टीमेट के साथ, बट जैसे ही आइटम्स बढ़ते जाए तो हो जाएगा। फाइनली 5v5 हो चुका है, बढ़िया पर बेलरिक अकेले जी बिल्कुल अंदर की तरफ गए हैं। बहुत अच्छा जो डैमेज है वो आता हुआ दिखे, लेकिन आलू का जो आएंगे रिव्यू के यहाँ पे खत्म होंगे। पीछे की साइड से आते हुए टायरआउट के ऊपर चढ़े थे, और उसी के साथ ये चैरिट बॉटम लेन का वो जाता हुआ दिख सकता है हमको। पुश करने की तैयारी, बेलरिक मौजूदा है वहां पे जोन आउट करने के लिए। अच्छी आती हुई बॉटम का जो टैरेट है वो भी धाराशायी हो जाएगा, और उसी के साथ गेम जो है थोड़ा आगे बढ़ता हुआ है। लेकिन मॉबी लवर्स की अगर बात की जाए, उनकी पोजीशन की बात की जाए, तो वहां पे कोई सुधार नहीं इस समय। वो अभी भी बहुत पीछे है इस समय, और यहाँ से वापसी कर पाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि क्राउड कंट्रोल नहीं है आपके पास। एज आपके पास इवन है जो चाह के
एम्बुश कर सकता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा आइटमाइजेशन की जरूरत रहेगी कि वो फार्म इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, और वो फार्म डिफरेंस इतनी जल्दी कम नहीं होने वाला। ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग लगभग देखा जाए तो 6K का जो फार्म डिफरेंस है वो यहाँ पे होता हुआ जा रहा है। अब 6000 का यहाँ पे फार्म डिफरेंस रहेगा तो टीम को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे किसी भी तरीके से लॉर्ड चुराने की जरूरत रही है। अगर लॉर्ड मिल जाता है तो एक राहत की सांस ले सकते हैं, और उसी के साथ अगर वो लॉर्ड नहीं मिलेगा तो यहाँ से दिक्कतें स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये अभी तक देखा जाएगा टीम आरटीआर ने कोई भी फालतू फाइट नहीं ली है, हर एक फाइट वो डिसीजन वाइज ले रहे हैं। जहां पे जीतने के चांसेस होते हैं सिर्फ वहीं पे ही इंगेज कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव के लिए इंगेज कर रहे हैं। वो रियो वापस है, ये काफी गलत हो रहा है क्योंकि 4v5 सिचुएशन था इनके हाथ पे, कुछ कर नहीं पाए। यहाँ पर एस्केनोर भी ट्राई कर रहे हैं फार्म अप करने के लिए, ट्राई करेंगे अपने टीम को कैरी करने के लिए, बट जो गोल डिफरेंस है वो काफी बढ़ता जा रहा है। अभी आरटीआर मैप खोलने के लिए ट्राई करेगी, पता नहीं क्यों क्लिंट अभी भी इतना बेस में खेल रहे हैं व्हेन उनका टैंक को विजन दे रहे हैं और उनका ही टैंक मिनियंस ले रहे हैं। बट इसी के साथ टीम टॉप लेन में जा रही है अभी। ओके, हमला मिंचितार के ऊपर, मिंचितार अल्ट खोलते हुए कब्जा कर देते हैं टाइरॉथ की। लॉर्ड की टाइम मर जाना, ये काफी गलत बात है। जी बिल्कुल, और यहाँ पे अब जो टीम है वो बहुत ज्यादा अंदर घुस के खेलेगी टीम आरटीआर, और वो होता हुआ भी मैं देख सकता। लेकिन टॉप लेन की तरफ बात करें तो टेरिज्ला बहुत ही इजीली उस लेन को होल्ड करे हुए हैं, जिसके कारण वो टावर अभी भी खड़ा हुआ है, जिसके कारण वो लेन का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम पड़ा हुआ है टीम की तरफ। और यहाँ से गेम जो है थोड़ा सा अब सीरियस की तरफ होता हुआ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो लॉर्ड लेने के लिए टीम को वापस आना पड़ेगा, पोजीशन लेनी पड़ेगी, और यहाँ से ये लॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोशिश करते हुए टीम जो है यहाँ आएगी, लॉर्ड की तरफ गई है, लॉर्ड स्टार्ट करने का प्रयास, लॉर्ड डांस यहाँ पे होता हुआ जाएगा। कार्मिला मौजूदा है, खुद को दिखा चुकी है, तो यहाँ पे रिवील हो चुकी है कार्मिला, उनकी पोजीशन जो है वो एक्सपोज हो चुकी है इस समय। और बेलरी को भी पता है, चलिए एमन की तरफ यहाँ पे गए हैं, ब्लेड लगाएगा जरूर, उसी साइड पे मौजूदा रहेंगे। अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए गैलरी उसके साथ पीछे से यहाँ पे मिन सितार का अल्टीमेट आएगा, एक बढ़िया इंगेज, उसके साथ डायरॉथ भी खत्म हो गए हैं। 3 बंदे ऑलमोस्ट खत्म होते होते रहे, 2 बंदे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी, 3 बंदे रहेंगे जो अभी भी जिंदा है, किसी तरह डिफेंड करना चाहते हैं। कैरी की बात करें तो कैरी को अच्छा खासा फार्म इस समय मिल रहा है, ज्यादा लॉस पे नहीं गए हैं। अभी ट्रिनिटी की बात करें, अभी ट्रिनिटी कंप्लीट नहीं हुआ है, गोल्डन स्टाफ आया है जिसके कारण वो पैसिव उनका जल्दी आएगा, अटैक स्पीड पे थोड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन जब तक उनका डीएचएस नहीं आएगा तब तक उनका भी डैमेज नहीं आने वाला, तो उनको बहुत ज्यादा संभल के खेलने की जरूरत है। हालांकि 10 मिनट हुए तो होली शील्ड जरूर वहां पे मौजूदा रहेगी, और अर्ली गेम का लॉर्ड है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी डिफेंड करने में। लेकिन वो देखना पड़ेगा किस तरह रहेगा, क्योंकि बेलरिक वहां मौजूदा रहेंगे। अल्टीमेट लगाते हुए स्टन किया, उनको टॉन्ट करते हुए वहां पे खत्म किया, और उसी के साथ ये लॉर्ड आएगा जरूर मिड लेन की तरफ से। लेकिन होली शील्ड होने के बावजूद बच जाएंगे, और एक और थोड़ी सी जो समय है वो मिलेगा मॉमी लवर्स को कम बैक करने के लिए। इंटरेस्टिंग सी बात बनी है कि लॉर्ड के साथ इनहिबिटर, कोई भी इनहिबिटर नहीं गिरा, एंड टॉप लेन भी काफी लेट गिरा है। मेरे को लगा कि टीम आरटीआर ये लॉर्ड के साथ कर पाएगी क्योंकि गोल डिफरेंस काफी ज्यादा है, प्लस टीम के पास कोऑर्डिनेशन अभी बहुत जरूरी है। एक बात बनी कि मिड लेनर का नहीं होने से, एंड एमोन एज अ मिड लेनर काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो काफी दिक्कत पड़ रही है। यहाँ पर टेरिस्ला को स्टन किया गया है जेटियन के अल्ट के साथ, एंड रोरो अनस्टॉपेबल, एक के बाद एक किल निकाल रहे, बट र्यूक फाइनली किल निकाले, बट नहीं, ट्रिपल किल रोरो के हाथ पे। ट्राई कर रहे मेनियक के लिए, बट नो, विन डीजल जाएंगे, एक के बाद एक मार के निकल जाएंगे। अभी एस्कनोर ऑल अकेले, यहाँ पर उन्हें मिनियंस बचाना पड़ेगा, एंड इसी के साथ लेन्स भी बचाना पड़ेगा। बेलरिक फाइनली ब्लेड आर्मर ले लिए हैं, काफी लेट लिए, बट फिर भी अभी कैरी को दिक्कत देना चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल, हालांकि अभी बफ भी हुए हैं बेलरिक रिसेंट ही पैच में, तो जहां पे उनका जो डैमेज है वो अब थोड़ा और चुभेगा, और जिसके कारण उनका सस्टेन अच्छा खासा बना हुआ है।
तो सामने वाले को उतना ही डैमेज जो है रिफ्लेक्ट करते हुए, और वेंजेंस के साथ तो और ज्यादा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे बचने के चांसेस कुछ भी नहीं है, और इस लॉट के साथ आई थिंक यहाँ पे इनविटेड टरेट टूटते हुए हमें देख सकते हैं। बात करें एमएम की, जो क्लिंट है ज्यादा टीम फाइट में आई नहीं है, तब से बहुत सोलो फार्म कर रहे हैं, बहुत समझ संभल के फार्म कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक अब वो समय आ चुका है कि आपको टीम फाइट के साथ आके डैमेज देते हुए वो किल बटोरने का, कि यहाँ से आपका कमबैक हो सकता है। लेकिन उधर पेनल्टी जोन लगाते हुए जाएगा आलूकार्ड के ऊपर फरार, अकेले पकड़ा गया आलूकार्ड, और वहां पे पकड़ के उनको समाप्त किया गया। सीधा पहुंचाएंगे रिकॉन स्क्रीप की तरफ, और यहाँ से गेम थोड़ा सा अलग चाहता हुआ, उम्मीद की किरण थोड़ी सी चमकी है। निराशा की जो है निराशा की जो भाव था वो थोड़ा सा आशा की तरफ जाता हुआ। लेकिन लॉर्ड डांस, उसके लिए टीम थोड़ा सा वेट करेंगी आलूकाट के आने का, और वहां से जो है इस लॉर्ड को लेने की लड़ाई है वो हमें देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली। सो देखते हैं कैसे ये लोग लड़ेंगे, क्योंकि सेकंड लॉर्ड है एंड ये लॉर्ड के साथ 3 इनहिबिटर गिरने का काफी ज्यादा चांस है। अभी टीम्स को बहुत बहुत अच्छे तरह से खेलना पड़ेगा, क्योंकि एस्कनॉट ट्राई तो कर रहे हैं लॉर्ड लेने को। रेट्रीब्यूशन, 2 रेट्रीब्यूशन है टीम मॉमी लवर्स में, इफ यू गाइस हैव नॉट नोटिस्ड। एंड यहाँ पर मे भी यहाँ पर एमोन का क्लच स्टील आ सकता है। क्या लगता है शिनरा, वो होगा या नहीं? ओके, आई डोंट थिंक कि उनका यहाँ पे इतना भी वो रहने वाला है, क्योंकि आलूकार्ड वो मौजूदा रहेंगे और लॉर्ड लेते हुए गए हैं। पीछे से डैमेज आएगा जरूर, शट डाउन दिया गया है यहाँ पे, और उसी के साथ एक किल जरूर मिलेगा रूल को। आलूकार्ड पीछे की तरफ से रहेंगे, और उसी के साथ आते हुए लेन, बॉटम लेन की लेन भी क्लियर हो जाएगी। लॉर्ड की समाप्ति हो चुकी है, आलूकार्ड मौका ढूंढ रहे हैं किसी को पकड़ने का, और मिड का जो टरेट है वो बचाने के लिए मौजूदा टॉप लेन से जो मिनियन है वो जरूर पुश करते हुए दिखेंगे। और जो लॉर्ड है वो मिड लेन से मार्च करेगा, और मिड लेन पे अब होली शील्ड भी नहीं है। टरेट की बात करें, उसकी एचपी नहीं है, वो सीधा जो इन्विटेड टरेट है वो तो फिनिश हो जाएगा। और आई थिंक यहाँ से गेम एंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रह सकते हैं, लेकिन एमएम उनको थोड़ा सा आने में समय लगेगा। मार्क्समैन जल्द से जल्द आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड आ चुका है। इनहिबिटर गिरने के काफी ज्यादा चांसेस है, बट नहीं, बचा दिया है। ठीक एचपी है। अभी यहाँ पर एक बेसिक अटैक अगर मेज के हाथ से भी लगी तो हो जाएगा, बट टीम जैसे आने नहीं देने वाली है। और रोरो के पास अभी पैसे हुए, तो मतलब कार्मेला या टेस्ला सामने भी जाएंगे तो वो काफी दिक्कत वाली बात बनने वाली है। बट इसी के साथ टीम्स को अभी स्टार्ट करना चाहिए सीधा सीधा एक के बाद एक पिक ऑफ के लिए। बट मॉमी लवर्स रुक रुक के खेल रही है, उन्हें भी पता है कि आरटीआर कहीं ना कहीं अब मिस्टेक करेगी, एंड वो मिस्टेक के साथ वो लोग जीत जाएंगे। बट सेम स्ट्रेटेजी मॉमी लवर्स के हाथ पे भी है, तो फाइट और जीत किसी के हाथ पे भी जा सकती है ये पॉइंट पे। तो जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे, कैरी डैमेज देने के लिए आएंगे जरूर। बेलरिक मौजूदा अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए रोका जाएगा, और बढ़िया इंगेज आता हुआ मेन सितार फिनिश ऑफ करेंगे। ट्रिपल किल यहाँ पे ले जा चुके हैं, ट्रिपल किल एमएम लेके जाते हुए। मेनियक लेने का प्रयास, क्या यहाँ पे ले पाएंगे? कोशिश रहेगी, पीछे से पोक आता हुआ, लेकिन बेस की तरफ वो फिनिश ऑफ करेंगे। मिन्सी भाले से सीधा क्रिस्टल जो है यहाँ पे टूटेगा, और विक्ट्री जो है टीम आरटीआर के नाम होती हुई, और एक बढ़िया जो गेम है वो उनकी तरफ से आया। एक बढ़िया जो मैं कहूंगा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो गई ड्राफ्टिंग के समय, जहां पे 2 रेटरी पिक हो गए थे, जिसके कारण गेम पूरी तरीके से पलट गया वहां पे। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि टूर्नामेंट में आके अगर आप ऐसी मिस्टेक करोगे तो वो ये बहुत दुखद वाली बात है। पीछे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एएफके का सीन हमें देखने मिला रूक के हाथ से। बट कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ 1 सीरीज था, तो यहाँ पर वो टीम मॉमी लवर्स कुछ कर नहीं पाए। बट नेक्स्ट टूर्नामेंट में डेफिनेटली चांस होने वाला है, बट ये टूर्नामेंट में हार्ड लक। इसी के साथ रिजल्ट जैसे हम देख रहे हैं, RTR 8013 रोरो एमवीपी, दैट इज क्रेजी। एज अ मिड लेनर जेके मैंने काफी तरह से खेला है, ये थोड़ा बहुत दिखता है कि जो मिड लेन पे जो मिसिंग था ना रो, उसके वजह से पूरा गोल्ड शील्ड मिला, उसके वजह से पूरा मिनियंस मिला, एंड उसी के साथ पूरा आइटम्स जल्द से जल्द कंप्लीट हुआ। जी बिल्कुल, टायर आउट यहाँ पे ग्लोबल 20 टायर आउट थे, तो इसलिए वो टायर आउट के साथ गए थे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल था उनका कि टायर आउट के साथ जा सकते हैं। हालांकि डिसएडवांटेज उनके साथ नहीं थी, किस्मत तो उनके साथ स्टार्टिंग से ही नहीं थी।
ये एक टीम मेंबर ऑफलाइन थे, से हमें पता था, और वो रेड ट्री था उनके पास। अगर कोई दूसरा स्पेल होता या प्रॉपर मेज होता, तो अगर लेट भी आते प्रॉपर मेज होता, आई थिंक चांसेस बन सकते थे बजाय एमन के। एमन के साथ आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन आप कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अगर आपको जीतने हैं फ्री में डायमंड्स, तो नीचे इंस्टाग्राम पोस्ट आपको मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा, लिंक को जाइए, फॉलो करिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए, और आप जीत सकते हैं ये फ्री डायमंड्स गिव अवे जो चल रहे हैं अलगाम्बो ई स्पोर्ट्स की तरफ से। और तब तक के लिए लेंगे हम आपसे एक छोटा सा ब्रेक। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नेक्स्ट मैच के लिए। I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
celebration. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका यहाँ पे अलगाम्बो ई स्पोर्ट्स पे। और उसी के साथ आज के ये मैचेस चलते हुए पहला मैच यहाँ पे खत्म होता हुआ गया, जहाँ पे मोमी लवर्स को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब दूसरे मैच की तरफ हम आते हुए बढ़ते हुए जाएंगे और आप सभी से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पानी पीते रहिए दोस्तों। हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। इस समय गर्मी का माहौल चल रहा है और ऐसे ही गर्मी के माहौल में तड़कते भड़कते मैचेस आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ अलगाम्बो ई स्पोर्ट्स के चैनल पे। और मैं हूं आपका कास्टर शिनराव, मेरे साथ कास्टिंग कर रहे हैं शिनरू भाई, तो जानेंगे उनसे भी हाल चाल। तो शिनरू भाई, कैसी कट रही है आपकी गर्मी में? आज तो यहाँ पे वेदर काफी मस्त हो चुका है यहाँ पे, पता है आपको। देखिए, इतना मस्त वेदर है कि मेरा हिंदी भी सही से नहीं निकल रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वेदर के चलते आप इतना बह जाते हो कि चीजें भूलने लग जाते हो। सो वैसी वेदर बन के रही है यहाँ पे। तो बात यह है कि वेदर तो बढ़िया है, लेकिन गेम प्ले, जिस चीज़ का हम सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, जिस चीज़ का हमें देखने का काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को उत्सुकता होती है, वो देखना पड़ेगा कि कैसे होने वाली इस जो मैच पे होने की, वो नेक्स्ट तो गेम पे नेक्स्ट तो टीम जो खेलेगी, तो वो जो खेलने वाले हैं यहाँ पे वो जल्दी ज्वाइन करेंगे। बट शिनरा भाई, बैक टू यू। आपसे भी ये सवाल कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपका दिन कैसा जा रहा है और आपके वहाँ पे वेदर कैसा है, बताओ। हमारे यहाँ तो अभी लाइक 2 दिन से ठीक था, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है गर्मी अभी बढ़ने लगी है। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, लाइक बहुत ही ज्यादा। और इस समय यहाँ पे लाइक कम से कम 45 का डिग्री का तो अभी चल चुका है। तो गर्मी तो बहुत सारी हो रही है अभी, लेकिन गर्मी के समय यहाँ पे राहत की सांस वो कौन सी टीम लेने वाली है, क्योंकि अब यहाँ से गेम जो है ना थोड़ा सीरियस होता हुआ जाएगा हर एक लेवल के बाद। जैसे बोल सकते हैं आप कि जो स्टेक्स हैं वो थोड़े और हाई होते हुए जाएंगे। यहाँ से टीम जो है रिफाइन होती हुई जाएगी, जो अच्छी टीम्स है वो आगे की तरफ जाएंगी। और बहुत सारी टीम्स जो है, जो ड्रीम्स लेके आई हैं, जो एक पैशन लेके आई हैं, वो भी बहुत सारे लोगों के अभी टूटेंगे। लेकिन उससे हारने वाली बात नहीं है। आप देखिए, जब भी टूर्नामेंट खेलते हैं ना, आप कभी हारते नहीं है। इवन तो आप मैच लूज कर जाएं, लेकिन तब भी आप हारते नहीं हो, आप अपने साथ एक्सपीरियंस लेके जाते हो। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा वो एक्सपीरियंस, वो चीजें किस तरीके से आएंगी। जो टीम ने जो मेहनत करी है, जो प्रैक्टिस करी है, उसका फल हमें देखने को मिलेगा आज। और बात करें टीम्स की, तो एक तरफ रहने वाली है टीम स्कारफेस ई स्पोर्ट्स, यहाँ पे हमें खेलती हुई दिखेगी। और दूसरी तरफ सुंगविल ड्राफ्ट जो ई स्पोर्ट्स है, उनका हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो पहले बैन्स की बात करें तो कैरी को सीधा बैन किया गया है स्कारफेस की तरफ से। नहीं चाहते कि कैरी यहाँ पे आए, तो टैंक मेल्टर बैन किए गए हैं। तो शायद से मेरे को लग रहा फेडरिन पिक करने की सोच रहे हैं, लेकिन सीधा फेडरिन ही बैन कर दिया। ओके, ये थोड़ा अलग हो गया है यहाँ पे। जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें पहले पहले समझ नहीं आएगी हमें, बट धीरे धीरे जब ये गेम्स और भी आगे के राउंड पे जाएंगे, तब ड्राफ्ट कुछ ज़्यादा हमें जो हमें पता है, जिस हिसाब से ड्राफ्ट होता है हाल ज़्यादातर टूर्नामेंट पे, वो देखने को भी मिल सकता है यहाँ पे। अभी के लिए द वे दे आर बैनिंग इज काइंड ऑफ टारगेट बैन्स कह सकता हो यहाँ पे, कि ये सारे हीरोज उनको फेस नहीं करना है यहाँ पे, इसलिए उन हीरो को वो लोग बैन कर रहे हैं। और टीम संग विल ड्राफ्ट, आई एम प्रिटी श्योर संग ड्राफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वरना उस टीम का नाम संग विल ड्राफ्ट नहीं होता। एंड उनका जो बैन आ रहा है वहाँ पे देख सकते हैं कि इज प्रिटी मच व्हाट यू वांट टू बैन ऑन द रेड साइड, क्योंकि रेड साइड पे आप अगर खेल रहे हो तो आपको सेकंड पिक मिलेगा, और फर्स्ट पिक पे ये दोनों हीरो आसानी से पिक हो सकता है, चाहे वो हार्ली हो, चाहे वो मार्सेल हो, या फिर जूशिन भी पिक होता है। तो आई एम इवन एक्सपेक्टिंग अ जूशिन बैन, मे बी देख सकते हैं हम लोग, या फिर EXP की तरफ भी वो लोग थोड़ा सा प्रायोरिटी रख सकते हैं, ग्लू को बैन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर चाहे तो यहाँ पे कुछ टैंक्स को भी बैन कर सकते हैं, जैसे ग्रॉक एक अच्छा बैन हो गया, या फिर कलेया या फिर काजा को भी बैन हो सकता है यहाँ पे। जी बिल्कुल, ओपन विंडो बहुत सारी है, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है।
आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं यहाँ पे बैन करने के, लेकिन सबसे ज्यादा बैन आप वही करेंगे जो जिसके अगेंस्ट में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा आप देख सकता है इनिशिएटर के तौर पे यहाँ पे 2 बैन होते हुए दिखेंगे, फेडरिन और अपने ग्रॉक। टेक 4 से आते हुए दिखते हैं ग्रॉक हमेशा, और बहुत सारे मूवमेंट में आपने देखा है जिस तरीके से वो फाइट बदल देते हैं। एमएलएमएस का मेरे को मैच याद है, टीम एपेक्स खेल रहे थे जी ग्रॉक, तो उस समय जी टीम आईक्यूएसएटीएल खेल रही थी। एंड देन वो मोमेंट पे जब ग्रॉक ने अल्टीमेट लगाया था टैक चार्ज बुश के अंदर, वहां से पूरा गेम पलट गया था। लाइक वो अल्टीमेट बहुत ही बढ़िया थी। तो इस तरीके की थोड़ी जो है अपने अंदर ये हीरो जो है वो रखता है क्वालिटी की गेम चेंज करने की। तो यहाँ पे बैन होता हुआ दिखेगा। और रेड साइड से आखिरी बैन जूशिन, जो हमेशा हमें दिखती है कि जूशिन को ही बैन किया जाता है टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बैन होने वाली इमेजेस में से एक। चलिए, और पहला पिक यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किससे पिक के साथ यहाँ पे जाना चाहिए टीम स्कारफेस ई स्पोर्ट्स। उनको कुछ सॉलिड पिक करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे वो कहलाएंगे कि चलिए एक ट्रेड ऑफ आपने अच्छा खासा लिया। क्योंकि सामने आप 2 पिक दोगे, अगर यहाँ पे पहला पिक आएगा तो क्या लगता है यहाँ पे शिनरू क्या पिक आ सकता है? चलिए, बोलने से पहले ही आ चुका है यहाँ पे काजा, जी पहला बिल्कुल, पिक काजा। जिस हीरो का मैं जिक्र कर रहा था, अगर आप इसको बैन नहीं करोगे तो ये भी एज अ पिक आ सकती है कोई भी टीम की तरफ से। आई थिंक नाउअडेज द पिक ऑफ कॉम्पोजिशन हैज बीन वेरी क्रिटिकल। बहुत सारी टीम्स पिक ऑफ कॉम्पोजिशन के साथ खेलना पसंद करती है। काजा के साथ आपके पास वो विजन कंट्रोल रहता है, एंड आपके पास एक टूल किट रहता है कि अगर आप कभी बैकलाइन, अगर आपका डाइव हो रहा है, अगर आप देख रहे कि आप बैकलाइन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर कोई हीरो जो ज़्यादा स्नोबॉल करने की कोशिश करे, उसको आप इजीली पनिश कर सकते हो। तो एम्बुश काइंड ऑफ गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है शायद हमें स्कारफेस की तरफ से। लेकिन संगविल ड्राफ्ट, उनके पास अभी 2 ऑप्शन है यहाँ पे। अभी चाहे तो यहाँ पे EXP फोवियस उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैरी मैन है, तो फोवियस को मात देने वाला ज़्यादा कोई है नहीं। सुयो इज़ अ वेरी गुड जंगल पिक राइट नाउ। वो काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है, आप इजीली इन एंड आउट कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव को जगह चुरा सकते हो, तो वो सारे हीरोज को ले सकते हो यहाँ पे। तो फोवियस भी आ गया, एंड सुयो इज़ ऑल्सो वेरी गुड पिक। एंड थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होता है अगर आप सुयो काजा के अगेंस्ट पे खेलते हो, लेकिन अगर टाइमिंग सही है तो आप कभी कभी काजा का जो अल्टीमेट है डिवाइन जजमेंट, उसको भी इम्यून कर सकते हो विथ योर फर्स्ट स्किल। जी बिल्कुल, माइक्रो के ऊपर थोड़ी बढ़त हासिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बात कर रहे थे तो 2 हीरो बहुत अच्छे तरीके से आ चुके हैं। चलिए, सुयो को यहाँ पे स्नोबॉल मिलेगा जरूर। दूसरी साइड पे देखेंगे लियो मॉड यहाँ पे उठाया जाएगा, सेफ पिक रहेगी। अगेन थोड़ी सी जंगलिंग स्पीड की बात करें तो सुयू को थोड़ा अपर हैंड मिलेगा। अर्ली गेम पे स्नोबॉल पोटेंशियल उनके पास रह सकता है, लेकिन लियो मॉड जब तक लेवल 4 होंगे तो उनके पास एक सेफ स्पेस रहेगा। वो टर्टल लेने के लिए थोड़ा सा एडवांटेज उनके पास जा सकता है, क्योंकि जोन आउट कर सकते हैं इजिली अपने फैंटम स्टीव के साथ साथ। और काजा के साथ ना एक थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आगे चल के यहाँ पे खेल सकते हैं वो। और चलिए, यहाँ पे एडिशन होगा ड्रैगन का। और ड्रैगन का सबसे बढ़िया पॉइंट यही रहता है कि लेवल 4 होने के बाद ना पहला जो टर्टल रहता है वो लेने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन जब भी अपने अल्टीमेट फॉर्म में आता है तो वो काइंडा जो उनके हाइपर को जो है जोन आउट कर देता है टर्टल से। जी बिल्कुल, एंड आई थिंक दैट लेवल 4 पावर स्पाइक इज वेरी क्रिटिकल फॉर द साइड ऑफ टीम स्कारफेस, क्योंकि अगर आप उनका ड्राफ्ट देखेंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं कि जो हीरोज हैं उनका मेन जो स्किल्स होगा जिससे वो जोन कर सकते हैं या फिर जो टीम फाइट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लेवल 4 के बाद ही होने वाला है। तो यहाँ पे रोटेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाला है आपके लिए। आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आप डिले कीजिए जितना हो सके फार्म फॉर द ओपोनेंट्स जंगलर, फॉर द ओपोनेंट्स अदर लेनर्स, ताकि उनके पास वो लेवल 4 पावर स्पाइक नहीं आए यहाँ पे। एंड क्लॉड इज लुकिंग अ वेरी गुड पिक अगेंस्ट द 3 हीरोज दैट टीम स्कारफेस हैज, बिकॉज यहाँ पे डाइव की ज़रूरत थी थोड़ी बहुत, क्योंकि उनकी तरफ से भी डाइव है। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे जो सप्रेस है, यानी डिवाइन जजमेंट जो आएगा काजा की तरफ से, वो थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर देगा। बट अगेन टाइमिंग विल सेट इट ऑल। अभी यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हीरो लिया जिससे पनिश कर सकते हैं संग विल ड्राउट, लाइक दे कैन गो फॉर द हाई लॉस, दे कैन गो फॉर द, if they want they can also go for the Kalea. Actually the Kalea can also catch the not the Farsa but the Kaja in its way, अगर वो कोशिश करे कि अंदर आके पनिश करने की कोशिश करे एक तरीके से। उसके अलावा अगर आप चाहे तो मिड लेन की तरफ अभी भी एक ऐसा मैच ले सकते हैं जिसके पास क्राउड कंट्रोल एबिलिटीज हो, या फिर जो लॉन्ग रेंज से अटैक दे सकें, ताकि काजा को पहले ही आप लो HP कर सकें, वो क्लोज बाय ना आ पाए, एंड इंस्टेंटली अगर आपके पास वो एडवांटेज रहेगा टीम फाइट पे, वो आप बिल्डअप कर सकते हो। बट देन अगेन यहाँ पे देख सकते हैं शिनरा भाई की जो लियोमॉड पिक हुआ है उसके अगेंस्ट पे फोवियस इज अ वेरी गुड हीरो। तो फोवियस को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा, नॉट फोवियस, यहाँ पे लियोमॉड को थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा फोवियस के साथ सामने। एंड अगर
उन्होंने यहाँ पे कोशिश की कि ज़्यादा डाइव इन करें, तो बैकलाइन की तरफ भी मतलब डाइव करने के लिए अभी कोई है नहीं, तो मेज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का मेज पिक करे यहाँ पे संगविल ड्राफ्ट, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे हाई ग्राउंड मेज आया तब पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली है, एंड आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आप फारसा या फिर ईव पिक करना चाहोगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को थोड़ा लग रहा था कि शायद जो है लूनॉक्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन लूनॉक्स यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। और एक अच्छी अप्रोच मैं कहूंगा, क्योंकि लूनॉक्स होते तो फूबियस को भी इजिली मेल्ट डाउन कर सकते थे और इम्यून होके बैकलेन की तरफ जो है क्लाउड की तरफ भी जा सकते थे, तो दोनों का खतरा होता वहां पे। तो वो बस्ट वो करना वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी भी चांसेस रह सकते हैं। मिड लेन की तरफ अगर बात की जाए तो गॉड अभी भी ओपन है, और हमने हालांकि अभी देखा है कि ओह थोड़ा या सा या राइज हो रहा है गॉड का, और गॉड आता है ना तो यहाँ पे वो गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। उसका जो ट्रू डैमेज है, उसके साथ साथ वो जो बार बार स्टन लगता है, जो पोक करने की एबिलिटी है गॉड के पास, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और काजा पिक के साथ ना गॉड बहुत ज्यादा ओपी चलेगा, क्योंकि सप्रेशन पे जब जितनी देर तक रहेंगे वो, तब तक गॉड अपने अल्टीमेट के द्वारा उसको जो है इजीली मेल्ट डाउन कर सकता है। और लाइक गॉड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि लाइक उसको कुछ चाहिए जो सामने पील की तरफ रहे, जो उसको लाइक सामने जो है सेशंस वगैरह से बचा सके, और काजा यहाँ पे वो ऑलरेडी मौजूद है। अगर गॉड आते हैं तो वो एक बढ़िया पारी यहाँ पे आ सकती है, एक आउटप्ले के तौर पे। जी बिल्कुल, आई थिंक गॉड इज रियली राइजिंग इन दिस करंट मेटा। आपने ये चीज़ बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया, क्योंकि गॉड का आज मैं रैंक खेल रहा था, आई थिंक आई वाज अराउंड इन 800 स्टार लॉबी, वहाँ पे भी गॉड पिक हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि किस हिसाब से गॉड का मेटा बन रहा है अभी। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द लीग्स एज वेल दैट वी आर लुकिंग अराउंड, जैसे कि एमपीएल पीएच हो गया, एमपीएल यस। आईडी में भी कभी कभार हम लोगों ने गॉड का पिक देखा, लेकिन यहाँ पे गरुड़ काचा अगेन अनदर गुड पिक। मैंने हाइलोस का बात बोल रहा था, लेकिन गरुड़ काचा कैन ऑल्सो पनिश द काजा इफ ही डाइव्स इन, क्योंकि आपके पास वो सेकंड स्किल रहेगा अनब्रेकेबल से, आप वो टॉन्ट दे सकते हो। तो उस वजह से आप एक तरीके से काजा को निगेट करते हो, काजा का जो एक प्रेशर जो होता है बिल्डअप होता है, उसका आप थोड़ा सा यहाँ पे पनिश कर सकते हो। अगर आप चाहो तो बैक लाइन की तरफ भी टाइप कर सकते हो एजी के साथ। लेकिन क्या लगता है यहाँ पे स्कारफेस कौन सी मेज की तरफ जाना पसंद करेंगे? उनके पास ऑप्शंस काफी कम है। जी बिल्कुल, ऑप्शन थोड़े कम जरूर है उनके पास। लाइक जो ऑप्शंस बन रहे थे वो ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। और मिड पे अब क्या ही गॉड, जब मैं बोल रहा था कि गॉड के साथ भी जा सकती, चलिए लिलिया यहाँ पे उठा लिया जाएगा। लिलिया भी बुरा नहीं है, पनिश कर सकता है। लिलिया बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फूबियस को पनिश करेगा, और उसके साथ साथ घटोत्कचा को पनिश करेंगे जो अंदर की तरफ आते हैं फाइट करने के लिए। और मॉस्को की बात की जाए एमएम के तौर पे, आई मीन मेरे ख्याल से चल जाएगा। अगर उनका यहाँ पे बीओडी लगता है टीम फाइट ज्वाइन करते हुए, तो वो प्रेशर जो है वो कम होते हुए दिख सकता है। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि उनकी एसओडी जो है वो कनेक्ट होता है या नहीं, क्योंकि अगर एसओडी मिस होता है तो वहां से गेम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बड़ी हासिल जो है यहाँ पे वो संघ ई स्पोर्ट्स से जो है टीम उनको मिलता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे ईव का आगमन होगा तो स्लो डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा स्लो मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी हीरो पकड़ा तो उसको एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे पकड़ लेंगे, और उस बॉक्स के अंदर डीपीएस के तौर पे एमएम का बहुत ज्यादा डैमेज आएगा। सुयू वहां पीछे से और डैमेज देते हुए दिखेंगे। तो एक तरीके से पूरा ब्रॉल का जो है ना लेयर वाइज जो है यहाँ पे सीसी मेरे को दिख रहा है, डैमेज दिख रहा है। तो ड्राफ्ट की बात की जाए तो दोनों ही टीम के ड्राफ्ट बहुत बढ़िया है, एक दूसरे को यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेशर आएगा वो अर्ली गेम की तरफ आएगा, क्योंकि सुयू को जो है वो स्नोबॉल की जरूरत होगी। उसको एटलीस्ट स्टार्टिंग में 3 किल चाहिए वो स्नोबॉल जी हासिल करने के लिए। अगर वो स्नोबॉल नहीं मिलता है तो चांसेस जो है फिर दूसरी टीम के वो बढ़ते हुए देखेंगे हम। जी बिल्कुल, ये चीज़ एकदम सही है, क्योंकि अगर आपके पास वो स्नोबॉल कैपेबिलिटीज ना हो देन यू विल बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। अगर आप लेट गेम की तरफ अगर कोशिश करोगे, आप पावर स्पाइक अगर वापस लेना है आपको, तब आपको वो मौका जरूर नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से वी कैन सी दैट वी आर इन द लैंड ऑफ डॉन फॉर द गेम नंबर 2, स्कारफेस ई स्पोर्ट्स वर्सेस संगविल ड्राफ्ट, अ बेस्ट ऑफ 1। देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम यहाँ पे जीतेगी और अगले राउंड की तरफ आगे बढ़ेगी। ड्राफ्ट काफी इंटरेस्टिंग है। एंड एक बात जो मैं उठाना चाहता हूँ यहाँ पे शुनरा भाई, मैंने कहा था कि ईव एंड फारसा काफी रिस्की पिक हो सकता है संगविल ड्राफ्ट की तरफ से, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। तो यहाँ पे ईव का ही पिक हुआ, लेकिन यहाँ पे ड्रैगन है यानी यूजोंग, तो उनके अगेंस्ट पे काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है उनको। जी बिल्कुल। और यहाँ पे ना आई मीन कोशिश यही रही है कि ईव को बहुत संभल के खेलना पड़ेगा।
और ईव को बचाने के लिए घटोत्कचा ही जो है एक मेन कड़ी यहाँ पे साबित होते हुए हमें दिखेंगे। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो वो पोकिंग मेज के तौर पे वो भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जैसे कि मैं बता रहा था ना आपको कि ड्राफ्ट ऐसा कि एक दूसरे को काउंटर करते हैं। यहाँ पे जो पिक्स हैं वो एक दूसरे को काउंटर करते हैं, जो जहाँ पे वीकनेस है वो वहाँ पे वीकनेस भी है और जहाँ पे प्लस पॉइंट है वहाँ पे प्लस पॉइंट भी है। तो यहाँ पे अब आता है कि एग्जीक्यूशन के ऊपर कि किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और चलिए यहाँ पे टेक्निकल पॉज लिया जाएगा, थोड़ी सी पॉज की डिमांड हुई है पीछे से बैकएंड की तरफ से, और यहाँ पे जो है प्लेयर्स को थोड़ा सा जो इशू आ रहा है वो फिक्स होते हुए दिखेगा। तब तक चलते हैं कास्टिंग नेक्स्ट की तरफ, या फिर अगर कुछ देर में यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन तब तक हम बात कर रहे थे शिनरू भाई की, जिस तरीके के ड्राफ्ट हमें दिख रहे थे, काफी इंटरेस्टिंग ड्राफ्ट यहाँ पे बनते हुए जा रहे थे। फारसा की तरफ जा सकते थे लेकिन फारसा की तरफ वहां पे गए नहीं है। और गॉड आता तो टू बी ऑनेस्ट गॉड भी बढ़िया रहता। लाइक जी। मेरे को लग रहा था कि शायद गॉड देखने को मिल जाता, लेकिन नहीं देखने को मिला, कोई बात नहीं। और जैसे कि आप बोल रहे थे कि रैंक गेम्स में अभी आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, तो गॉड का अभी हाईएस्ट विन रेट है। अगर आप नोटिस करेंगे रैंक गेम्स की बात करेंगे, अगर डेटा आप चेक करेंगे तो गॉड अभी राइजिंग में है और सबसे ज्यादा उसका विन रेट है जो सबसे पिक हीरोज में अभी आ रहा है। तो अभी वो और बढ़ता हुआ जाएगा क्योंकि धीरे धीरे जो उसके ऊपर छोटे छोटे से बफ्स जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। लाइक आप पोक कर सकते हो एनिमीज को, स्टन कर सकते हो, और अल्टीमेट उसका वो बहुत ही मस्त अल्टीमेट भाई, लाइक एकदम कामयाब मजा आ जाता है एकदम उसका अल्टीमेट चला जाए। Exactly. I think that's what most people think of God, right? Kamehameha. Really Goku related चीज है. And I also personally feel कि God की जो true damage अभी आ रहा है, and even with the items that have been recently buffed, उसके वजह से God को काफी आसानी होती है। अगर आपके पास वो stun plus वो long range रहता है तो उसका आप काफी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। And recently we have also seen कि God plus कलिया combo भी काफी ज्यादा एक famous strat बन चुका है काफी ज्यादा टीम्स के लिए। लेकिन वापस हम लोग गेम की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्तों। We'll see again how this teams would like to play the early game। बहुत ज्यादा पोक डैमेज आ रहा है because of the presence of Lilia as well as the Eve। दोनों ही हीरो अर्ली गेम पे काफी अच्छा पोक कर सकते हैं। गोल्डन की तरफ इज लिटिल बिट ऑफ अगेन 1v1, नथिंग मच गोना हैपन, बट ये पे अच्छा से कनेक्शन होता हुआ स्टन का फ्रॉम मैट टीजी इज ट्राइंग टू गेट द किल। फैंटम स्टिच का इस्तेमाल, मिड की तरफ डाइव इंस्टेंटली वन ब्रेक करके निकल जाएंगे, यहाँ पे पुश बैक करेंगे, यहाँ पे संगसन को फ्लिकर का इस्तेमाल, लेकिन ही कैन नॉट सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग। इवन द रिवाइटलाइज कैन नॉट हेल्प हिम फॉर नाउ। कुशल इज प्रीटी लो एंड ही विल गेट ट्रेडेड ऑफ एज द सैक्रिफाइस ऑफ द टीम फाइट। 1-for-1 विल बी द ट्रेड ऑफ, बट अभी के लिए टर्टल ओपन है एंड आई थिंक टीम संग विल ड्राफ्ट कैन प्रायोरिटाइज दैट। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे बोला सुयू ने कि आप आए जरूर है अंदर लेकिन फ्री में नहीं जाएंगे, और यहाँ पे ड्रैगन अल्टीमेट फॉर्म में आएंगे बहुत ज्यादा। मेरे को लगता है जो है टर्टल की तरफ आ सकते हैं कि नहीं, अंदर की तरफ गए हैं। फोबियस मौके का फायदा उठाते हुए और उसी के साथ यहाँ पे डैश लगेगा जरूर, अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए फिनिश ऑफ करेंगे। बहुत ही कम एचपी पे फोबियस यहाँ पे आउटप्ले करते हुए गए हैं। ड्रैगन थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट वहां पे किया फोबियस को, जिसके कारण उनको मृत्यु से गले लगाना पड़ा। The funniest thing was that SOD, वो SOD टॉप से लेके बॉट तक गया। क्यों गया? ताकि वो जो एक्सपीरियंस क्रैब है उसका एक्सपीरियंस लेके टॉप लेन की तरफ आ जाए। So the funniest thing I've seen so far in any of the games that I've been casting, but again अभी 2 किल का लीड रहेगा for team Sangwil draft and they have the slight advantage। तो उनके पास जो गोल्ड की बरत रहेगी उससे काफी अच्छा एक एडवांटेज बिल्डअप कर सकती है। टर्टल भी उनके लिए काफी ज्यादा मायने रख सकती है यहाँ पे, लेकिन देख सकते हैं कि जो पिक ऑफ गेम स्टाइल है फॉर स्कारफेस इट वर्क्स आफ्टर द काजा गेट्स लेवल 4। तो अभी जो लेवल 4 उनको मिल चुका है, यहाँ से शायद पिक ऑफ्स काफी ज्यादा एक प्रायोरिटी रहेगी उनके लिए, बट अभी भी विजन कंट्रोल मेंटेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि टीम संगविल ड्राफ्ट ऑल्सो हैव वेरी स्नो पॉलिश काइंड ऑफ ड्राफ्ट। तो उनके पास वो मौका जरूर रहेगा कि एक बार अगर और 2 किल्स मिल जाए, जैसे कि आपने कहा 3 से लेकर 4 किल अगर यहाँ पे सुयू को मिल जाए, स्काई पियर से स्टैक हो जाए, तो वहां से गेम काफी आसान हो सकता है। वापस से डाइव इन करेंगे, स्टर्न कनेक्ट होगा, काफी ज्यादा एचपी शिफ्ट डाउन कर लेंगे यहाँ पे सोल सेवर के साथ, लेकिन वो किल अभी तक सिक्योर नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए दोनों टीम थोड़ा सा सतर्कता के साथ खेल रही है एंड आई थिंक सतर्कता के साथ खेलना ही सही रहेगा क्योंकि अगर आप ज्यादा ओवर कमिट करोगे अर्ली गेम पे तो आपको दिक्कतें काफी ज्यादा हो जाएगी। तो बिल्कुल वो प्राइमेट रोल का एक डायलॉग था ना कि ऐसे समय में बेहतर यही होता है कि आदमी अपने कदम पीछे हटा ले। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा कदम पीछे रखे खेलने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे सुयू अंदर की तरफ आएंगे डैमेज देते हुए। काजा को एक एचपी पे छोड़ा है और काजा यहाँ पे रिकॉल करने के लिए मजबूर होंगे। अब यहाँ पे पनिश करने के लिए कोई नहीं रहेगा। सुयू अंदर की तरफ गए थे, डैमेज दिया जरूर। शैगन के अच्छे दिन अभी नहीं चल रहे हैं, फोबियस बहुत अच्छी तरीके से उनको मैनेज किए हुए हैं और
अच्छा खासा यहाँ पे जो है डैमेज वो दे रहे हैं, जोन आउट कर रखा है उनको। अल्टीमेट लगाते हुए अंदर की तरफ आएंगे, ड्रैगन मार करना चाहते हैं, देखना पड़ेगा, लेकिन मेज उनके ऊपर प्रहार होता हुआ दिखेगा। पीछे की साइड से गए हैं, ड्रैगन क्या फिनिश अप कर पाएंगे? सुयू 1 HP लेकिन बचते हुए निकल गए। यहाँ पे देखना पड़ेगा, मेज के ऊपर फोबियस लग चुके हैं, दोनों तरफ पे लगातार फाइट होता हुआ जा रहा है, लेकिन रिवाइटलाइज यहाँ पे आएगा जो घटोत्कच को मौत के मुंह से लेते हुए आएगा। दूसरी साइड पे पीओडी एसओजी कनेक्ट जरूर हुआ है वहां पे, लेकिन जाने का कोई प्रयास नहीं, वहां पे गए भी नहीं। उन्हें पता था कि जाने का कोई फायदा नहीं है मॉस्को को। अब मॉस्को को फार्म करना पड़ेगा क्योंकि पूरी टीम का भार है उनके ऊपर रहने वाला है, और एक वही है जो उनको एक विजय की तरफ ले जा सकते हैं अपनी टीम को। और यहाँ से गेम बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। एक तरफ लगा था कि गेम थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकता है स्कारफेस ई स्पोर्ट्स के लिए, जिस तरीके के मैचेस यहाँ देखने को मिले, और सुयू वहां पे अगर मर जाते तो एक ओपन विंडो मिल जाती, उनको एक सीढ़ी मिल जाती जहां से वो उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते थे। लेकिन मौत को टच से छू के वापिस आना कोई सुयू सुसी के। जी बिल्कुल, एंड आई वांट टू गिव द प्रॉप्स टू द संग यहाँ पे ऑन द ई, बट देन अगेन मैट टीजी वांट्स टू गेट अनदर किल। एओजी का इस्तेमाल होगा लेकिन वो कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। यहाँ पे विजन जरूर मेंटेन करके रख रहे हैं। फैंटम सी का इस्तेमाल शायद फर्स्ट चुके यहाँ पे मोची, एंड आई डोंट नो इफ ही कैन गेट बैक क्योंकि उनके पास रिवाइटलाइज नहीं रहेगा सही टाइम पे, एंड ही गेट्स टेकन डाउन 1 किल इनटू द हैंड्स ऑफ स्कारफेस। एंड बैक टू द थिंग दैट आई वांटेड टू से कि संग का जो यहाँ पे पोजीशनिंग था काफी बेहतरीन था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब यूशोंग का अल्टी खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने अपना अल्टीमेट इस्तेमाल किया ताकि वो एडवांटेज हो जाए, एंड दैट मैप प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द गेम क्योंकि उनको अपना पोजीशनिंग काफी सही से रखना पड़ेगा गेम पे, वरना उनको अगर अर्ली गेम से ज्यादा पनिशमेंट मिला क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किल दे दिया है ओपोनेंट को, उसके बाद अगर और भी किल्स देने लग जाए तब चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है फॉर संग विल ड्रॉप। बट अगेन फॉर नाउ आई थिंक द गेम इज स्टिल नॉट दैट फार अवे फ्रॉम बोथ द टीम्स। गोल्ड लीड यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस, गोल्ड लीड का ज्यादा यहाँ पे बात नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि फ्यू हंड्रेड्स का ही है, एंड दैट कैन बी टेकन बैक। अनदर टर्टल हैज स्पॉन, तो टर्टल की तरफ एक और फाइट हो सकती है। देख सकते हैं कि टर्टल पेट पे दोनों ही टीम कोशिश करेगी कि अपना पोजीशनिंग मेंटेन करे। संग विल बी द टारगेट फ्रॉम द यूजोंग, गोज इन विद द पेट्रीफाई आरडब्ल्यूएम का इस्तेमाल, लेकिन वहां पे फंस जाएंगे। शार रेसिड्यू विल कनेक्ट, फ्लिकर का इस्तेमाल, एओजी ड्रॉप हुआ यहाँ पे। मैट ईजी विल टेक डाउन कुशल एंड गेट्स अ डबल किल एज वेल, लुकिंग फॉर द ट्रिपल। यहाँ पे अच्छा से नॉक अप, बट वो किल सिक्योर नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए वापस अंदर जाएंगे टर्रेट के अंदर, वो ट्रिपल किल उनको चाहिए और वो लेकर जरूर जाएंगे यहाँ पे। एंड इसके साथ बहुत ही बेहतरीन टीम फाइट विन फ्रॉम द साइड ऑफ टीम संग विल ड्राफ्ट। बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन यहाँ पे लिए, और उसी के साथ वो जो थोड़ी सी जो है पेशेंस आपके अंदर रहते हैं वो दर्शाता है कि आपको पता था कि ज्यादा बच के नहीं निकल पाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे भी तो आपके पास चांस मिलेंगे उनको मारने के। और वो पूरी रूप से यहाँ पे सुयू ने अपना टाइम लिया, अंदर की तरफ गए और वहां से जो ट्रिपल किल निकाला बेहतरीन तरीके से। और अब जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो स्नोबॉल चाहिए था वो अब आ चुका है सुयू के पास इजीली, और अब जो टीम है यहाँ पे संगविल, उनका जो टेम्पो है वो सेट हो चुका है। अब उनको कुछ नहीं करना, उनको पीछे रह के खेलना है, पोक करना है, एंड ऐसे ही करते हुए वो गेम को धीरे धीरे जीतते हुए जाएंगे। बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर की तो मिड का जो स्ट्रक्चर है वो जा चुका है, और अब बॉटम का जो स्ट्रक्चर है वो जाने की कगार की हालत पे आते हुए लग रहा है। लेकिन टॉप का जो रोटेशन है वहां पे आते हुए दिखेंगे, और टॉप पे थोड़ा सा पोक आता हुआ दिखेगा क्लॉड की तरफ से, और कोशिश करना चाहते हैं लेकिन अभी भी थोड़ा हिचका रहे हैं कि आगे जाके फाइट अभी नहीं लेनी है। कचा मौजूदा है, लेन कट किया जाएगा क्लॉड के द्वारा, और मॉस्को यहाँ पे डैमेज देते हुए दिखेंगे। स्पीयर ऑफ मिजरी मारा जरूर है, दूसरी साइड पे हाथ की जाए एक सिर्फ पे यूजोंग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे फोबियस के अगेंस्ट पे, और यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। एमएम की तरफ अंदर की तरफ गए, इंची लगाते हुए रोकने का प्रयास, काफी अच्छी अल्टीमेट, लेकिन वो बॉक्स आएगा जरूर मैच का, निकलने नहीं दिया। लियोमोट पीछे से आएंगे, एक अच्छी बचते हुए निकले हैं, क्या सुयू बच पाएंगे? जब बिल्कुल बच चुके हैं, डबल किल, लेकिन पीछे से यहाँ पे पनिश करेंगे लियोमोट मैच को। एक और किल लेने का प्रयास, क्या वो कामयाब हो पाएंगे उसमें देखना पड़ेगा। सुयू एक अच्छी पे आते हुए और यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास, मेज बाल बाल बचते हुए जाएंगी, और उसी के साथ इनहेंस बेसिक अटैक जरूर रहने वाला है लियोमोट के पास, लेकिन सेकंड स्किल मार के खत्म करेंगे लियोमोड को। और यहाँ पे एसओडी मारा जरूर लेकिन कनेक्ट होगा नहीं, और दूसरी साइड पे ड्रैगन वो जरूर कनेक्ट होंगे, वो भी मृत्यु से।
जी बिल्कुल, अभी भी फाइट रुक नहीं रहा। देख सकते कि मैट टीज इज रियली मैड विद द वे दैट ही इज प्लेइंग, ही इज नॉट रियली स्टॉपिंग। एक स्नोबॉल के कगार पे आ चुकी है उनका जो केडीए है। हम लोग देख सकते हैं 5-0-2 एंड दैट्स अ वेरी गुड केडीए फॉर हिम। यहाँ से वो आसानी से और भी किल सिक्योर कर सकते हैं एंड लियो मॉड इज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट द प्रॉब्लम इज कि उनके पास वो सपोर्ट नहीं है और उनके पास अभी तक वो डैमेज रीच नहीं हुआ है। यहाँ पे 5000 का एक लीड बन चुका है फॉर टीम संग विल ड्रॉप अगेन अनदर फैंटम सीट बीइंग यूज्ड। देख सकते हैं फोबियस विद इन्फर्नल पर्सूट विल गो इन द एओजी कनेक्ट्स अलोंग विद आरडब्ल्यू एंड देन गो इन विद एवरीथिंग दैट दे हैव। ब्लेजिंग रेड का भी इस्तेमाल हो चुका है, 2 मेंबर इंस्टेंटली डाउन होंगे। यहाँ पे कोशिश है फ्रॉम टीम संगविल ड्रॉप टू गेट ऑलमोस्ट अ वाइप आउट। ब्लैक शूज का इस्तेमाल यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजोंग ड्राइव जरूर करेंगे, उनके पास ब्लैक ड्रैगन नहीं है, लेकिन संग विल गो एंड गेट दैट किल ऑन टूवर्ड्स द लिलिया। The Bernard will fall and the Black Dragon is just too low. Can they get that another kill? Not yet. वो वापस चले जाएंगे। यहाँ पे टॉप लेन की तरफ से एक पुश करने की कोशिश है फ्रॉम हुइस खाने की, बट देन अगेन ही विल नॉट बी एबल टू डू सो बिकॉज वहाँ पे मौजूद है बॉयको एंड आई नो दैट ही विल नॉट लेट दैट मॉस्को रिकॉल ऑन टाइम, बट यहाँ पे वो कोशिश नाकाम हो जाएगी। यहाँ पे मॉस्को को रिकॉल करने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन अभी भी एक और वेव्स आ रहे हैं चारों तरफ से अलॉन्ग विद द लॉर्ड। क्या ये डिफेंड कर पाएगी टीम स्कार्सफेस ईस्पोर्ट्स? यहाँ पे कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन होली शील्ड होने के कारण थोड़ा सा चांसेस यहाँ पे रहेगा कि डिफेंड कर लिया जाएगा। और बात की जाए ना, जिस तरीके से टीम अब यहाँ पे डोमिनेट करती हुई जा रही है, जो एक गैप है वो हमें साफ साफ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 10K का गैप यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है और यहाँ से कमबैक अगर करना है टीम को तो वो बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। उनको कोशिश करनी पड़ेगी कि संगविल जो है यहाँ पे कोई गलती करे और उसका फायदा उठा सके। और लगता नहीं है कि टीम यहाँ पे संगविल वो गलती दोहराना चाहेंगी, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि टीम जब स्टार्टिंग में किल लेना स्टार्ट करती है, डोमिनेट करना स्टार्ट करती है, तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और वहां पे टीम गलती करती है जहां पे उनको पूरा गेम कॉस्ट होता है। और वो घड़ी का इंतजार टीम स्कारफेस इस समय करती हुई। जी बिल्कुल, स्कारफेस के सामने काफ़ी बड़ा सा एक दीवार खड़ी हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं उनको यहाँ पे एक कोशिश करनी पड़ेगी जल्द से जल्द जो गोल डिफरेंस हो रहा है उसको अपने तरफ वापस लेकर आए एंड कोशिश करे कि यहाँ से गेम को पलट सके, लेकिन वो कोशिश क्या सफलता की ओर जाएगी या नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे एसएम भाई कहते हैं चमत्कार को नमस्कार ही शायद इस गेम को बचा पाए फॉर टीम स्कारफेस स्पोर्ट्स, बट फॉर संगविल ड्राफ्ट दे आर हैविंग अ बेटर टाइम। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा एक मैप प्रेजेंस बरकरार करके रखा है, उनके पास यहाँ पे पूरा मैप कंट्रोल ऑलमोस्ट है। देख सकते हैं कि जितने भी सेकंड टीयर्स है सारे डाउन हो चुके, भी जो इनहिबिटर टर्रेट्स है यानी हाई ग्राउंड टावर्स बस वही बचे हुए हैं एंड यहाँ पे टीम स्कारफेस को फोर्स किया गया कि ताकि वो डिफेंसिवली खेले। अगर आइटम्स की भी बात करें, यहाँ पे क्लॉट के पास 3 आइटम आ चुका है, वो अपनी आखिरी अभी अपने 4th आइटम की तरफ वेट करे जो मोस्ट लाइकली विल बी द विंटर क्राउन, ताकि वो अंदर जाके अल्टीमेट का इस्तेमाल करे, वहाँ पे पनिशमेंट ना मिले। एंड मेज के पास भी 3 आइटम्स है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा एक बरत है टीम संगविल ड्राफ्ट। दे आर ऑलमोस्ट 3 to 4 आइटम्स इन दिस गेम, तो वो जब वो 4th आइटम आएगा तब डिफरेंस और भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा टीम फाइट्स पे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक बस मॉस्को के पास ही इनफ आइटम है या फिर बिल्ड है जिससे वो काउंटर बैक कर सके, लेकिन मॉस्को ज़्यादा टीम फाइट्स के पार्ट नहीं बन रहे, तो वो डैमेज हमेशा लैक कर रहा है। एंड इवन दो द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स दे आर गोइंग इन इज नॉट नियरली इनफ। यहाँ पे काजा के पास डिवाइन जजमेंट ज़रूर है, उनके पास यहाँ पे 19 स्टैक भी है ऑन द थंडर बेल्ट, बट उनको ज़्यादा किल्स नहीं मिल रहे, तो वो जो यहाँ पे फ्लीटिंग टाइम भी है उसका ट्रिगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अभी वापस से जब लॉर्ड आ चुका है स्कारफेस ईस्पोर्ट्स, डू दे वांट टू गो फॉर अ हेल मैरी प्ले, दैट मींस लाइक दे वांट टू गो फॉर ऑल इन, या फिर वो डिफेंसिवली खेलना पसंद करेंगे यहाँ पे, या फिर यू नो विल जस्ट लुक फॉर द क्लियर यहाँ पे जो लॉर्ड पुश हो सकता है, क्योंकि अभी उनका जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, बट वो टाइम पे पहुँच नहीं पाएंगे, तो मोस्ट लाइकली दे आर लुकिंग फॉर अ डिफेंस हियर। बट यहाँ से जब 10K का ऑलमोस्ट एक लीड बनने के कगार पे आ चुका है शिनरा भाई, डिफेंस करना क्या पॉसिबल हो सकता है? मुश्किल की घड़ी है और यहाँ पे संगविल को किसी भी तरीके से इस लॉर्ड के साथ इस मैच को खत्म करना पड़ेगा। तुमने देखा कि जो टीम फिनिश नहीं कर पाती है इस पॉइंट पे, मॉस्को विल राइज, क्योंकि आप देखेंगे नोटिस करेंगे मॉस्को सिर्फ एक ही बार मरे, तब से वो मरे नहीं है, फार्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी टीम को जिताने के लिए मॉस्को के अंदर वो ऐसा हीरो कि वो जिता सकता है, लेकिन कोशिश करने पे अगर उनको चांस दिया जाए, लेकिन वो चांस मिलेगा या नहीं वो सारा खेल है एग्जीक्यूशन का। अब यहाँ पे देखते हैं कि लॉर्ड को कितने अच्छे से यूटिलाइज करने का प्रयास करती है।
टीम आएगी जरूर, डैमेज देते हुए अंदर की तरफ जाएंगे, डिवाइन डिसमेंट आएगा बढ़िया तरीके से, एजी आएगा, एमएम को पहले ही खत्म कर दिया गया है और यहाँ पे बॉक्स के अंदर लियो मोड आएंगे और गलती की मैं बात कर रहा था वो गलती यहाँ पे आती हुई दिखी कि ड्रैगन मौजूदा रहेंगे, शट डाउन दिया जाएगा, एक और किल, डबल किल और उसी के साथ पूरी की पूरी टीम जो है वो धाराशायी हो जाएगी, सिर्फ मेज बाकी रहेंगे डिफेंड करने के लिए। और मैं यही बोल रहा था कि कॉन्फिडेंस में आते आते ओवर कॉन्फिडेंस में कब बदल जाता है वो आपको भी नहीं पता लगेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो थोड़ी सी ओवर एक्सटेंशन यानी जो गलती की जो गुंजाइश नहीं थी वो गलती जरूर यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे इंस्टेंटली फ्लिकर आउट करेंगे संग संग जस्ट टू सेव हरसेल्फ। देख सकते कि वापस से जो वेव्स आ रहे हैं वो क्लियर नहीं हुई है, तो अगर वो वेव्स क्लियर नहीं होती यहाँ पे गेम शायद एंड हो सकती है, लेकिन वापस से यहाँ पे क्लॉड सही टाइम पे आ जाएंगे। लेकिन जो मिड का टावर है वो जरूर गिर चुका है। कानिक इज ट्राइंग टू पुश द लेन बट यहाँ पे टीम वापस आ चुकी है। ओजी का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे कनेक्शन जरूर बिल्डअप हो रहा है, टॉन्ट लग चुका है, यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन का इस्तेमाल, ब्लेजिंग डूएट जा रहा है लेकिन वो एचपी अभी भी थोड़ा सा बच गया, यहाँ पे बच के निकल जाएंगे कानिकी, उनका किल नहीं मिल सकता यहाँ पे टीम संगविल ड्राफ्ट, बट काफी करीब थे। यहाँ पे रिसोर्सेस काफी ज्यादा बर्न आउट हो चुके हैं लेकिन स्टिल ओके, क्योंकि जो नेक्स्ट फाइट होगा वो शायद 45 सेकंड्स के बाद ही होगा जब लॉर्ड स्पॉन होगा यहाँ पे, तो उसी के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। लेकिन जो गलतियां हुई है उसको वापस से दोहराना नहीं है फॉर टीम संगविल ड्राफ्ट, बट द वे दिस स्कारफेस ई-स्पोर्ट्स आर प्लेइंग दे नो कि दैट दे हैव द चांस फॉर द कमबैक, तो वो चांस फॉर दैट कमबैक इज समथिंग that will depend on team Sangwil Draft how they make the decisions in the next few minutes of the game, क्योंकि यहाँ पे गलती हुई तो बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें हो सकती है। यहाँ पे विंटर ग्राउंड का इस्तेमाल, भागने की कोशिश, भाग के भी जाएंगे, योजी का इस्तेमाल होगा लेकिन ब्लैक ड्रैगन इज ऑलरेडी देयर, द पेट्रीफाई विल कनेक्ट एंड बट स्टिल मैट इजी एबल टू जुक अवे, स्टिल डीलिंग द डैमेज। यहाँ पे शार्डसी का इस्तेमाल लेकिन वापस से बच जाएंगे, ब्लेजिंग डुएट भी लग चुका है लेकिन फाइनली वो किल जरूर मिल जाएगा, लेकिन वहां पे शट डाउन करने को भी मिल सकता है। यहाँ पे एओजी का इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका था, विदाउट दैट दे डू नॉट हैव एनी मोर skills to knock anybody down. Astrid will fall, Moshi will fall, 3 members down. यहाँ पे कोशिश करे boy को to hold the front line, लेकिन नहीं, that one mistake once again will cost Sangwil Draft 4 members. अभी जैसे पता है हमें, हालांकि मिड लेन का हाई ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे RWM भी नहीं है, तो डिफेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे जोन आउट कर रहे हैं, मॉस्को विल हिट द बेस, यहाँ पे डिवाइन जस्टमिस का इस्तेमाल, संगविल ड्राफ्ट कैन नॉट डिफेंड दिस गेम एनीमोर and Scarface with those mistakes will be able to get the comeback in this game. क्रेजीएस्ट मैच एवर। और यहाँ पे मैं बात कर रहा था, शिंजू भाई आप बोल ही रहे थे कि क्या यहाँ से कमबैक कर पाएगी टीम, मैंने बोला था अगर वहां पे इस लॉर्ड को यूटिलाइज कर लेते हैं तो जीत जाएंगे, लेकिन उस लॉर्ड को यूटिलाइज करने के चक्कर में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो फार्म गैप आपने इतनी मुश्किल से जुटाया था, जो ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे 10K का फार्म डिफरेंस जो बनाया था, वो एक गलती के कारण कम हुआ, बहुत कम हुआ, और वहां से जो फार्म है बराबर होता गया और वहां से गेम पूरी रूप से बदल गया। जिस तरीके से फाइट वहां पे हुई, और सारा जो श्रेय जाता है भाई वो जाएगा ड्रैगन को। रेज बेट किया, अंदर की तरफ गए, रिसोर्सेज यूज करवाए, और इतने सारे रिसोर्सेज यूज कराने के बावजूद फिनिश ऑफ किया, सुयू को मौका नहीं दिया, और वहीं से टीम ने उस मौके का फायदा उठाते हुए मॉस्को ने सीधा वो डैमेज दिया। और मैं बोला ही था मैंने आपको कि मॉस्को के अंदर वो कैपेबिलिटी है गेम को एंड करने की, और यहाँ पे एमवीपी के रूप में आते हुए गेम को एंड किया। बहुत बढ़िया गेम प्ले, पूरा मैच जिस तरीके से पलट दिया, सोचा नहीं था किसी ने। क्रेजी कमबैक आता हुआ, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस, एकदम मजा आ गया ये मैच देख के। जी बिल्कुल, जो गलती की गुंजाइश नहीं थी वही गलती दोहराई गई 2 बार, तो इसी वजह से देख सकते कि इस गेम का जो अंत का जो रिजल्ट था वो शायद टीम संगविल ड्राफ्ट को ज़्यादा पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि उनकी 2 गलतियां हुई, 2 बार जो गलतियां हुई मैप पे, 2 बार जो 4 मेंबर्स को डाउन किया गया, उसके वजह से गेम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ उनके ओपोनेंट के हाथ में चले गए, क्योंकि लेट गेम पे आप का जो डेड टाइमर है वो काफी ज्यादा लंबा होता है। एंड मॉस्को को फ्री फार्म मिल रहा था थ्रू आउट द गेम। आई वाज टेलिंग कि मॉस्को टीम फाइट्स के पार्ट नहीं बन रहे थे, एंड द मोमेंट्स दैट ही वाज बीइंग पार्ट ऑफ द टीम फाइट, आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एक डिफरेंस हो रहा था वहां पे, एंड दैट डिफरेंस एक्चुअली लेड टू द गेम गेटिंग ओवर दैट क्विकली, क्योंकि मॉस्को का लेट गेम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इफ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इसी वजह से the things did not work in favor of Team Sangwil Draft, but well played Team Scarface Esports. I think they did a very good job in the late game, good decision making and good presence of mind. But अभी के लिए ये गेम यहीं पे एंड होगा। एंड शिनर भाई, हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट गेम,
हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस जरूर आएंगे अगले टीम्स के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द बैटल फॉर द क्राउन। और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आ चुके हैं हम कास्टिंग नेक्स्ट की तरफ। मैं हूँ आपका सचिन रहा और बात कर रहे थे हम जिस पिछले मैच की, जिस तरीके से वो मैच गया, कमबैक आता हुआ दिखा है और एक ऐसा कमबैक जो सोचा नहीं था हमने। और वो कमबैक बहुत ही काबिले तारीफ, जिस तरीके से गेम को जुटाए रखा, हारे नहीं एंड तक और ऑलमोस्ट हारते हुए गेम को अपने नाम कर लिया। लेकिन यहाँ पे नए मैच, नई टीम्स वो आती हुई दिखेगी और इस मैच के लिए ये तड़कते भड़कता मैच होता हुआ जाने वाला है। और कौन सी टीम यहाँ पे लड़ती हुई दिखेगी आपस में? एक तरफ है द विल ऑफ डी, दूसरी तरफ है पायरेट्स ऑफ एमएलबीबी। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया भाई। जो लोग वन पीस देखते हैं दे नो देनो क्या रेफरेंस की बात चल रही है यहाँ पे। शिनू भाई क्या कहना चाहेंगे? जी, काफी इंटरेस्टिंग सा नाम है। कल मुझे जस्टिस दिख गए थे तो थोड़ा सा ट्रोल हुआ था वहां पे, बट खैर आज कुछ खतरनाक नाम आए हैं यहाँ पे। नाम्स काफी खतरनाक रखते हो आप लोग दोस्तों। इतने क्रिएटिविटी अगर गेम के अंदर भी दिखाओगे तो बढ़िया लगेगा। बट बात है कि हम लोग गेम प्ले की तरफ ज्यादा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, है ना शिनरा भाई, नाम से ज्यादा। तो उसी के साथ शिनरा भाई भी यहाँ पे इज टू स्टन टू स्पीक। आई अंडरस्टैंड कि शिनरा भाई को भी थोड़ा टाइम चाहिए यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे अंडर कंट्रोल लाने के लिए। बट देन अगेन लास्ट गेम जैसे शिनरा भाई कह रहे थे कि गेम हाथ से स्लिप हो गया वहाँ पे, है ना शिनरा भाई? तो जी बिल्कुल। वापस वैसा गेम पे देखने को मिलेगा या नहीं, क्या लगता है आपको? देखने वाली बात होगी कि किसकी विल ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। क्या वो बिल्कुल। ओजी पायरेट्स रहेंगे या फिर अपने न्यू वर्ल्ड के पायरेट्स जिनकी विल ऑफ डी यहाँ पे मंकी डी डी लूफी। वॉरियर्स, द डी जी वॉरियर्स, लेट्स बिल्कुल, गो। डी वॉरियर्स लेट्स गो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे बैन्स की बात करें तो पहले तो हार्ली को बैन किया जाएगा। दूसरी साइड पे फोबियस बैन आते हुए दिखे हैं, दूसरा बैन होने वाला है पायरेट्स ऑफ एमएलबीबी। यहाँ पे क्या बैन करना चाहेंगे दूसरे हीरो? क्या मतलब यहाँ पे खलीद को बैन कर दिया जाएगा? क्या मतलब ऐसा? हमें पता भी नहीं कि खालिद बैन हो रहा है कि नहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आई थिंक सेकंड बैन यहाँ पे मिस हो चुका है फ्रॉम टीम विल ऑफ डी एंड पायरेट्स ऑफ एमएलबी। उन लोगों ने यहाँ पे फ्रेडरिन को बैन किया है, तो जो टैंकी हीरोज है उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं उनकी तरफ से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा अप्रोच। बट शिनरा भाई, अभी तक हमारे पास वन पीस का स्किन्स क्यों नहीं है गेम के अंदर, क्या लगता है आपको? आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। रूमर्स ऐसे उठ रहे हैं कि जल्दी आएगा। अभी सिर्फ बात चल रही है। आई थिंक वो लाइसेंस वगैरह जो रहते हैं ना, उसके लिए थोड़ा डिले वगैरह चल रहा है, लेकिन आने बहुत जल्दी वाला है। अगर आई मीन आएगा तो कौन सा सोरा स्किन आया है निकालोगे? या सोरा आया है तो भाई वही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। आई मीन सांजी ऑफ कोर्स, अगर चाओ को मिलता है तो मैं तो चाओ की स्किन अच्छा निकालूंगा भाई। अच्छा अच्छा, आई सी। आपके नाम के बाद जो चाव ऐड होता है वो तो लोगों को पता नहीं यहाँ पे कास्टिंग डेस्क में जब देखते हैं आपको, लेकिन हमें पता है कि शिनरा भाई के नाम के बाद चाव इज मस्ट, राइट शिनरा भाई? तो यहाँ पे कैरी को बैन किया गया और वहाँ पे तीन तीन टैंक हीरोज को बैन किया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ड्राफ्टिंग देखने को मिल रहा है हमें यहाँ। जो बिल्कुल देखिए, तीनों ही टैंक की हीरोज की बात करें तो थोड़े इंगेजेस वाले हीरोज को बैन किया गया है, जो डिसंगेज करवाते हैं एक तरीके से, या जिनके पास जी कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा एबिलिटी है। जैसे लेयर सीसी की बात करें, फेडरिन हो गए, अर्ली गेम पे अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलते हैं। और एक तरीके से बैन, अपना जो काउंटर है यहाँ पे बैन किया है काई, तो मिनसितार यहाँ पे उठाया जाएगा। चलिए मिनसितार आ चुके हैं, उसके साथ साथ
कड़ीता उठाया जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग पिक रहने वाले हैं। और यहाँ पे मिंसी तार थोड़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा काउंटर करेंगे यहाँ पे फ्रेया को एक तौर से। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस बिल्कुल प्रकार से मिंसी यहाँ पे खेलेंगे। और मिंसी लेने का भी फायदा यही होता है कि आप टीम फाइट जीतोगे और उसी देर में, थोड़ी देर में सेकंड स्किल से मिंसी आएंगे और खच 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 सीधा टावर आपका गायब। कहाँ गया? अभी तो आई यही था थिंक गायब। आई थिंक आपने अपने साउंड इफेक्ट सही नहीं किया वहां पे शिनरा भाई, कुछ और ही होता है वो नहीं, साउंड इफेक्ट, वो बट खैर। साउंड इफेक्ट मैं नहीं दे सकता। बट नहीं कोई नहीं ना। नहीं 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 लाडले, शिनरा भाई इज वो प्लेइंग इट वाला सेफ, नहीं। शिनरा भाई इज प्लेइंग इट सेफ। यहाँ पे यूशोंग प्लस जीटियन का पिक हो चुका है। जीटियन काइंड ऑफ गेट्स काउंटर्ड बाय कर्डिटा, राइट शिनरा भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस तो यस, ये थोड़ा व्हाट सा आइडिया? वो हो गया। हाँ, थोड़ा कंफर्ट पिक की तरफ गए हैं, लेकिन कडिता बहुत अच्छा काउंटर है क्योंकि वो अपनी फर्स्ट स्किल में सीसी इम्यून रहती है और वो बहुत इजीली पोक करके जेतियन का जो पैसिव है वो ट्रिगर करवा सकती है। जो जेतियन के पास एक अपर एंड रहता है बचने का, तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल था उनके पास, वो पोटेंशियल थोड़ा सा जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगेन जेतियन वो उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि कि यूजोंग जो है ना वो अच्छे से इंगेज कर पाए। यूजोंग जब अपने ब्लैक ड्रैगन अल्टीमेट फॉर्म पे आएंगे तो वो जेतियन जो अल्टीमेट दे के थोड़ा असिस्ट कर पाएगी और मतलब आपको जो है पोजीशन रिवील हो जाती है, तो वो थोड़ा सा अपर एंड जरूर मिल जाएगा। लेकिन उनको अपनी पोजीशन बहुत सेफ खेलनी पड़ेगी। जो अगर कडिता यहाँ पे मेज नहीं होती तो थोड़ा सा वो रहता उनकी तरफ से कि लाइक हाँ उनके पास थोड़ा अपर हैंड रहता, लेकिन उसके लिए थोड़ा अभी यहाँ पे बहुत संभल के खेलना पड़ेगा उनको। ये एम्बुशेस बहुत सारे यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और चलिए यहाँ पे खलीद आ चुके हैं, मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, मेरे को पता लग जाता है और खलीद का आगमन हो बिल्कुल, चुका है। उनको यहाँ पे रेत में भी खेलना है, पानी में भी खेलना है, एंड मिंसतार के कुछ जी से जो वर्ड आता है उसके अंदर भी खेलना है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो बहुत एक crowd control abilities plus AoE plus damage based draft जा रहे for Pirates of MLBB, whereas Will of D they are going for very standalone heroes कहूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि the heroes they can do a lot in their respective lanes. They do not need that much of assistant. They can find a lot of things around the map. But then again second banning phase की तरफ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिस को बैन किया गया है। I don't know why are they thinking कि यहाँ पे एलिस को पिक कर सकते हैं। In the jungle Alice, I don't know, not the best hero, not the fastest farming heroes in the map. The Julian ban looks very targeted यहाँ पे। I don't know if Team Pirates of MLB they play the Julian or not, but बहुत targeted hero है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल हालत और में हम लोग मतलब in a very free day जब हम लोग देख रहे टूर्नामेंट, I don't think so Julian gets picked that much in the tournament scene. Mia again another targeted pick, I mean ban. तो जी बिल्कुल, लग रहा है कि what सामने about वाले the- अपोनेंट को थोड़ा पढ़ के आए हैं आज। तो थोड़ा कहीं मतलब ना कहीं वो थोड़े पर्सनल बैन्स हमें आते हुए दिख रहे हैं। जूलियन की बात कर रहे हैं तो जूलियन भी यहाँ पे कोई ऐसा बैन नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा लाइक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सोच के है। तो यहाँ पे थोड़े जो टारगेटेड बैन है वो हमें देखने को मिलेंगे। चलिए सुयू यहाँ पे बैन होते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे, जो विल ऑफ डी है, जो टीम है यहाँ पे उनका थोड़ा सा बन रहा है, पोक डैमेज जरूर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे उनको एक पील की जरूरत है जो अच्छा खासा एक सीसी दे सके। अगर कार्मिला आती है यहाँ पे तो एक अच्छा खासा वो बन सकता है इंगेज करने के लिए, और कर्स ब्लड से जो है वो यहाँ पे रोकने का प्रयास कर सकती है। तो कार्मिला आती है तो एक इंगेज अच्छे तरीके से बन सकता है, लेकिन उनको वहां पे बर्स्ट की जरूरत पड़ेगी, जो अब या तो जंगल के तौर पर उन्हें उठाना पड़ेगा। अगर एक्सबॉग आते हैं, एक्सबॉग और कार्मिला का कॉम्बो वो बहुत अच्छा बन रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा अलग मेटा चले गए हैं, बारात यहाँ पे उठा लिया गया है और काफी इंटरेस्टिंग पिक। हालांकि अभी मेटा पे नहीं चलते हैं, स्टैक मेंटेन करना एक सिरदर्दी है बाराट्स के ऊपर, इसलिए मेटा पे अभी नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत ये रहती है कि आपको लगातार या तो मिनियन चाहिए या तो क्रीप चाहिए ताकि आप अपने जो स्टैक्स है वो मेंटेन कर सके। एक गलत टीम फाइट होगी, आपके सारे स्टैक चले जाएंगे, आपको वापस जाना पड़ेगा और फिर से वो स्टैक बिल्डअप करके तब टीम फाइट पे आना पड़ेगा। जी, एंड आई डू लाइक द बैरट्स क्योंकि अगेंस्ट द यूशोंग इट इज अ वेरी गुड पिक। आप इजीली उनको डेटोनस वेलकम से रोक सकते हो। इवन अगेंस्ट द फ्रेया इट इज अ गुड पिक, क्योंकि वो जो डाइव इन होता है उसको आप इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। द एक्सबॉक इज अ वेरी वेरी स्मार्ट पिक आउट हियर। नॉट सो श्योर अबाउट द हिल्डा दो, बिकॉज येस यू गेट द रोटेशन, यू गेट द प्रेशर अराउंड द मैप, बट यहाँ पे ज्यादा स्क्विशी हीरोज है नहीं, तो आप ज्यादा मार्क डाउन नहीं कर पाओगे। एंड इवन इफ यू आर ट्राइंग टू स्लो डाउन द
if you're trying to avoid a assassin pick from the side of team Pirates of MLBB, then that could be a work, but I don't think so. They are trying to go for a assassin into the jungle. उनको एक marksman की सख्त जरूरत है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लॉड का पिक होगा. तो अगेंस्ट द क्लॉड इट इज स्टिल डिसेंट, बट हिल्डा पकड़ नहीं सकती क्लॉड को उतना इजीली. तो इट डिपेंड्स कि हाउ फास्ट दे रोटेट एंड हाउ फास्ट दे कैन पोजिशन देमसेल्फ टू बेट आउट द BMI एंड उसके बाद जाके अटैक कर सकती है. But overall, I do like the amount of dive that is there from Team Will of D. But Pirates of MLBB, they're playing a very front-to-back composition and it is very execution-based actually. उनका जो draft है वहाँ पे skills को hit करना पड़ेगा. Otherwise, you do not have any kind of re-engage tools in your arsenal. बिल्कुल. अब यहाँ पे देखिए, मैं तुम्हें को लग रहा था शायद कार्मिला अगर आती तो स्थिति थोड़ी अच्छी रहती. टू बी ऑनेस्ट, अगर कार्मिला आती ना तो यहाँ पे एक्सबॉक्स का अल्टीमेट भी साथ में लगता, यूजोंग भी पीछे से देते और उसके साथ साथ जो मेज थी उनका भी अल्टीमेट लगता, वो पोक भी लगता. तो ये एक आपका एक कॉम्प ऐसा बन जाता कि ऑल इन कॉम्प बन जाता. अगर आप टीम फाइट जीतते उसमें तो आपका फिर प्लस ही प्लस होता. अगर हार भी जाते तब भी आपके पास चांसेस रहते कि आप बच के निकल सकते हैं बिकॉज ऑफ द कार्मिला अल्ट. और उसका जो सीसी है, चेन सीसी, वो लगता तो वो ज्यादा बेटर रहता. हिल्डा हालांकि आपने उठाया है, वो कहीं ना कहीं हिल्डा इसलिए उठाया ताकि जो रोटेशन है थोड़ी सी फास्ट हो सके अगेंस्ट दी खलीद, क्योंकि खलीद यहाँ पे बहुत ज्यादा अनॉय करने के लिए आएंगे. तो वो कहीं ना कहीं कम करने के लिए आप सामने वाले के जंगल एरिया पे थोड़ा इन्वेड प्रेशर डालोगे तो आपके इन्वेड करने के चांसेस, मतलब आपके जंगल एरिया पे इन्वेड होने के चांसेस वो थोड़े से घटते हुए दिखेंगे. तो ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे जो टीम विल्ड ऑफ डी है वो अपनाना चाहती है. लेकिन अगेन शिंदूर भाई, आपकी एक बात से एग्री करूंगा मैं, यहाँ पे हिल्डा से अच्छा यहाँ पे कोई दूसरा हीरो आ सकता है. जी बिल्कुल. आई थिंक द हिल्डा इज लिटिल बिट फोर्स्ड इन दिस ड्राफ्ट, बट ओवरऑल इट्स नॉट अ बैड पिक. आप विजन कंट्रोल रख सकते हो, आप मैप पे प्रेशर कर सकते हो, बट विल सी हाउ डज इट वर्क. क्योंकि आपको भी पता है शिनरा भाई, कुछ हीरोज यहाँ पे बेहतर हो सकते थे, बट इट इज स्टिल ओके दैट द टीम्स डू फील लाइक दे वांट टू गो विद देयर कंफर्ट. यहाँ पे रोटेशन जरूर रोक सकते हैं ऐसे, बट अगेन द पैसिव फ्रॉम द कडीटा विल रीजनरेट HP बैक, तो उनको ज़्यादा रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पे. लेकिन दोस्तों अगेन वी आर इन द लैंड ऑफ डॉन, अ बेस्ट ऑफ वन बिटवीन टीम विल ऑफ डी वर्सेस पायरेट्स ऑफ MLBB. देखना पड़ेगा कि इस गेम को कौन सी टीम लेकर जाएगी. अर्ली गेम देख के हम लोग ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने पिछले गेम में भी देखा है यहाँ पे कि लेट गेम पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल सकती है. तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे होल्ड करके खेलना पसंद करेगी ये टीम है. बट एट द सेम टाइम दे आर प्लेइंग इट वेरी ट्रेडिशनल, आई वुड से. ज़्यादा यहाँ पे इन्वेड्स नहीं आ रहे, ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे साइड लेन्स पे जाके. तो जस्ट नॉर्मल रोटेशन ट्राइंग टू गेट दैट लेवल 4. उसके बाद शायद जो टर्टल आएगा उसके आसपास हमें पहला क्लैश देखने को मिल सकता है यहाँ पे. जी बिल्कुल. और जिस तरीके की थोड़ी सी जो रोटेशन है वो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होती हुई दिख रही है. टॉप लेन की बात की जाए तो वहां पे थोड़ा प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हैं और ड्रैगन के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि उनको लेवल 4 होने से पहले ना थोड़ा सा डिले कर सके. क्योंकि ड्रैगन एक बार लेवल 4 हो गए तो दिक्कत आती है टर्टल वगैरह लेने में भी, तो वहां पे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा. अब दूसरी साइड पे बात की जाए तो रोटेशन बॉटम लेन की तरफ गए थे, लेकिन टॉप लेन पे ड्रैगन को बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है. और ये मिनियन रोकने का प्रयास, मिनियन डिले करने के लिए मिन्सी को रोकना पड़ेगा वो मिनियन लेने के लिए. लेकिन यहाँ पे एक गलती साबित हो सकते हैं. अल्टीमेट का इस्तेमाल किया जाएगा, किंग्स कॉलिंग का इस्तेमाल रोकने के लिए, और यहाँ पे मौजूदा रहेंगे. अल्टीमेट लगाएगा जरूर, अंदर की तरफ गए हैं. ड्रैगन मौजूदा लॉक इन करते हुए जाएंगे. पीछे से यहाँ पे मेज आएंगे, क्या फिनिश ऑफ कर पाएंगे? जी बिल्कुल, लेडीज को खत्म कर दिया जाएगा. और उसी के साथ ब्लैक ड्रैगन काइडो के रूप में आते हुए और यहाँ पे फिनिश ऑफ करेंगे. डबल किल. जो प्रेशर इतनी देर से बिल्डअप हो रहा था प्रेशर कुकर पे, उसकी सीटी आखिरकार बजी और सामने वाले एनिमीज को ताराशाही कर दिया. जी बिल्कुल. यहाँ पे प्रेशर जो बिल्ड हो रहा था, जिस चीज़ का आपने भी जिक्र किया अभी, वो देख सकते कि वापस से टीम पायरेट्स ऑफ MLBB की तरफ बढ़ रहा है. उन्होंने ज़रूर फाइट का शुरुआत किया था, लेकिन वो फाइट बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं गया. उनको जो ज़रूरत थी मैप पे अभी वो नहीं मिली. उनको बस एक किल मिला वहाँ पे, बट वो भी टैंक के ऊपर, तो ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदेमंद नहीं रहे वो लोग. बट ओवरऑल इट्स स्टिल नॉट गोना बी एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर देम. दे स्टिल कैन बाउंस बैक. थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. यहाँ पे 3K का एक लीड धीरे धीरे बन रहा है. हम लोग देख सकते हैं फॉर टीम विल ऑफ टी. समथिंग दैट माइट बी अ लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक फॉर टीम पायरेट्स ऑफ MLBB, क्योंकि उनके पास यहाँ पे जो हीरोज़ हैं उनको आइटम्स की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे वो क्लॉड हो, चाहे वो मिनसितार हो, या फिर इवन फॉर कडीटा शी नीड्स एटलीस्ट 1 or 2 आइटम्स. लेकिन बहुत जल्दी पहला टर्रेट पुश हो चुका है बॉट लेन की तरफ. देयर इज नोबडी टू स्टॉप दिस फ्रे एंड आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. जी बिल्कुल. और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिखा रहा है. आप फ्रेया को
नहीं रोक रहे हो अर्ली गेम पे, और फ्रेया के अगर 3 यहाँ पे आई चांस आ गए तो फिर वो बैक लेन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी। सामने टैंक करने के लिए बात की जाए, विल ऑफ डी के पास बहुत सारे टैंकी हीरोज हैं जो सामने का डैमेज सोकअप करके टीम फाइट को और ज्यादा लंबा खींच सकते हैं, और फ्रेया एंड में पीछे से बैक लेन को सीधा फिनिश ऑफ कर देगी। और इस समय वो प्रेशर वो बॉटम लेन की तरफ क्रिएट हो चुका है। अब सारा ध्यान आपका ईएक्सपी की तरफ है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो ध्यान है वो ईएक्सपी की तरफ ही है, लेकिन बात यह है कि गेम गोल्ड लेन की तरफ से ज़्यादा बदल सकता है यहाँ पे, तो उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बट अगेन द मिड का रोटेशन जो है फ्रॉम द साइड ऑफ टीम पायरेट्स ऑफ एमएलबीबी इज नॉट दैट काइंड ऑफ इंटेंस। यू कैन नॉट सी कि दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन अ सिंगल लेन ताकि वहाँ पे जाके प्रेशर क्रिएट कर पाए। हालांकि उनके पास यहाँ पे बैरट्स है, इवन विद कटीटा दे कैन इजीली गो फॉर द कॉम्बो इफ दे लाइक। एंड खलीद के साथ वो जो चेन सीसी होगा उसका लेयरिंग काफ़ी बेहतरीन हो सकता है, लेकिन उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे वो लोग। जो पहला फाइट हारे उसके बाद लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। यहाँ पे अच्छे से नॉकअप आता हुआ हिल्डा की तरफ, वो हिल भी नहीं पा रहे, यहाँ पे स्टर्न लॉक हो चुके हैं एंड इंस्टेंटली उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा। बट आफ्टर दिस वॉट बहुत ज्यादा यूटिलिटी यहाँ पे यूज अप हो चुका है। यहाँ पे किंग्स कॉल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट जरूर जाएंगे बट आराम से प्यूरिफाई का इस्तेमाल करके निकल जाएंगे। फिर ऑफ द फिनिश कनेक्ट्स अलोंग विद द लास्ट इंसैनिटी, इट्स नॉट गोना फिनिश ऑफ द किल बट द यूजोंग जंपिंग इन वाइड डू यहाँ पे फ्लेमी ही विल गेट अ किल, बट देन अगेन दे आर फाइंडिंग फॉर मोर। हार्डमैन विल गेट टेकन डाउन, डबल किल फॉर फिल्मी and it's going to be another trade in the favor of team Will of D। हालांकि कुछ kills जरूर मिले यहाँ पे पायरेट्स ऑफ एमएलबीबी को, लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं रहे वो। जी बिल्कुल, अंदर की तरफ गए थे, ड्रैगन आए, उनको रोका अच्छी तरीके से, लेकिन परंतु वो किल लेने में जो है पर्याप्त हो गई। उनकी टीम जो है वो किल लेने में पर्याप्त हुई। चलिए टाइटल भी मिल जाएगा और इसके साथ अब जो है आपका गेम यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब लीड मिल चुकी है आपको। ऑलमोस्ट 4K गोल यहाँ पे मिल चुका है। टरेट टॉप का जा चुका है, मिड की तरफ प्रेशर आता हुआ दिखेगा, और वो प्रेशर इस समय बहुत ज्यादा पड़ रहा है। पायरेट्स ऑफ एमएलबीबी, इनका नाव का जो वो रहता है ना ऊपर, जैसे वहां से हवा आता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मैं भूल गया, लेकिन वो चीज उसमें भी हवा नहीं लग रही, तो इसलिए उनकी जो बोट है वहां पे स्टक होकर रह गई है। लेकिन यहाँ पे किंग्स कॉलिंग वो स्टक नहीं रहने वाला, वो फिनिश ऑफ करेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे फ्रेया को खत्म किया गया। बहुत अच्छा काउंटर का इस्तेमाल किया जिसके कारण फ्रेया वहां पे धाराशायी हुई। अब यहाँ से बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। मिड का लेन का जो है वो कंटिन्यूसली लेने का जो प्रेशर है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बराट्स जंगल एरिया पे रहेंगे जरूर, हिल्डा वहां पे आएंगे, थोड़ा कोशिश करना चाहती हैं लेकिन संभल के रहना पड़ेगा। और वो मिनियंस क्लियर करते हुए ड्रैगन अभी भी मौजूदा है, अपनी लेन पे आना पड़ेगा उनको डिफेंड करने के लिए। यहाँ से एक टीम फाइट आती हुई दिख सकती है, मिड लेन की तरफ से जरूर पोक थोड़ा आता हुआ दिखा हमको, और फिर दोबारा से जो टीम है वापस रोटेशन दूसरी लेन की तरफ आता हुआ। जी बिल्कुल, रोटेशन तो काफी इंटरेस्टिंग सा आ रहा है यहाँ पे शिंद्रा भाई। बट मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, जो क्लॉट का फॉर्म आ रहा है, क्या वो एक फिगर की बात बन सकती है फॉर टीम विल ऑफ डी? देखिए क्लॉड का जो फार्म है ना, देखिए दिक्कत यहाँ पे ये है ना, जो टीम फाइट होगी ना यहाँ पे जितने भी, तो टीम बहुत ज्यादा साथ में रहेंगी। क्लॉड का अल्टीमेट का जो डैमेज है वो जितने ज्यादा एनिमी साथ में रहेंगे उतना ही वो डैमेज जो है बढ़ जाता है, और ये कहीं ना कहीं क्लॉड के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे बनी रहेगी। या तो क्लॉड को तब एंटर करना पड़ेगा जब सारी यूटिलिटी यूज हो जाए, उसके बाद एंटर करे, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है। तो यहाँ पे अब बेस्ट यही रहेगा कि क्लॉड जो है सिर्फ मैप पे दिखे नहीं, मिनियंस उठाते रहे, और एकदम एंड में जब उनके पास सारे आइटम्स आ जाए तब फाइट लें। जी बिल्कुल, शायद उस समय का उनको इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उतना समय क्या मिल पाएगा टीम पायरेट्स ऑफ एमएलबीबी को? यहाँ पे आखिरी टर्टल जो रहेगा गेम का वो भी आ चुका है। 8 मिनट का समय होने ही वाला। अगर ये टर्टल ना लिया जाए तो वो इंस्टेंटली लॉर्ड पे ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन देख सकते हैं कि ऑलरेडी विल ऑफ डी दे विल बी द फर्स्ट टू स्टार्ट इट। यहाँ पे टीम पायरेट्स ऑफ एमएलबी दे आर लुकिंग टू कंटेस्ट फॉर इट। काफी ज्यादा लो एचपी है, रेट्रिब्यूशन किसको मिलेगा देखना पड़ेगा यहाँ पे। बट अच्छा स्टील आता हुआ हेडिस की तरफ से, बट ये फाइट शायद वो जीत ना पाए। ब्लेजिंग डुएट का इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटली डाउन हो जाएंगे हेडिस। एक किल जरूर उनको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेड ऑफ्स में कुछ भी नहीं। देख सकते कि एक्सबॉक्स को गिराने की कोशिश जरूर है उनके तरफ से, लेकिन वो कोशिश यहाँ पे नाकाम होगा। कोई भी ट्रेड नहीं मिला, बस टर्टल उनको जरूर मिला, लेकिन वो किल वापस दे बैठे वो टीम विल ऑफ डी को। एक अग्रेसिव पोजीशनिंग है कटीटा की तरफ से, लेकिन वो एंगेज नहीं कर रहे, अभी भी होल्ड ऑन कर रहे अपने स्किल की तरफ। लेकिन कितने देर तक होल्ड ऑन करेंगे? यहाँ पे टीम को कुछ शटडाउन्स की जरूरत है, कुछ मेन मेंबर्स की तरफ, लेकिन वो शटडाउन जरूर देखने को हमें मिल नहीं रहा है अभी तक। वापस से बॉटलिंग की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कटीटा अंदर जरूर जाएंगे, लेकिन अभी भी अपना
जो रफ वेव्स है उसको होल्ड ऑन करके रखेगी। बट देख सकते हैं कि जो मिनियन का प्रेशर है वो धीरे धीरे बन रहा है, एंड ये मिनियन का प्रेशर शायद बहुत ही जल्द कुछ टावर्स को ले बैठेगा, एंड दैट माइट बी वेरी बैड न्यूज़ फॉर द साइड ऑफ टीम पायरेट्स ऑफ एमएलबीबी इस गेम पे। जी बिल्कुल, वो मिड के टर्रेट के ऊपर नजर है टीम विल्ड ऑफ डी की, और यहीं पे थोड़ा आता हुआ दिखेगा। कडिता के ऊपर प्रहार, फ्रेया लेके जाएगी एक और किल, और यूजामा मौजूदा रहेंगे। डबल किल मिल चुका है उनको, और इस समय मुसीबतें बढ़ चुकी है। पायरेट्स ऑफ एमएलबीबी, उनके लिए कोई रिटेलिएशन नहीं है, इस कॉम का उनके पास कोई जवाब नहीं, और इस अटैक का उनके पास डिफेंस करने के लिए कोई जवाब नहीं। सीधा अकेले पकड़े गए और वहां पे उनको धाराशायी किया मैच को। अब खलीद के साथ यही दिक्कत होती है कि आप इनिशिएट रोक नहीं सकते, आप सिर्फ इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे देखना पड़ेगा, अल्टीमेट आता हुआ दिखेगा, और उसी के साथ फेदर ऑफ हेवन यहाँ पे आएगा, और उसी के साथ जो डैमेज है वो थोड़ा सा आता हुआ दिखा। और यहाँ पे देखा जाए तो फ्यूरी ऑफ द फीनिक्स आया था, नॉट फेदर ऑफ हेवन, और यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा जो है ना डैमेज आ रहा है, अच्छा खासा पोक यहाँ पे मिल रहा है मैच के तौर पे, और जो डैमेज है वो नहीं मिल रहा। और हिल्डा बहुत ही अच्छी तरीके से काइटिंग कर रही है। बात की हो यहाँ पे एनिमी पोजीशन की, तो हर एक समय हर एक पल पे उनको मतलब रेस्ट करने का मौका भी नहीं मिल रहा है एनिमीज को। हर एक समय उनकी टीम को पता है, यहाँ पे विल ऑफ डी की टीम को, कि कौन सा जगह कहाँ पे है वो लोग। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा, खलीद काफी ज्यादा अंदर गए हैं। एक्सबॉक्स का ट्रू डैमेज वो दिक्कत करता हुआ दिखेगा। किलिंग स्प्री मेज की तरफ से आएगा, बराट से कितनी देर तक यहाँ पे टिकेंगे, क्योंकि किलिंग स्प्री एक्सबॉक्स के हाथ में आएगा, और वो ट्रू डैमेज यहाँ पे सामने आता हुआ, और वो ट्रू डैमेज बहुत ज्यादा चुभ रहा है इस समय टीम पायरेट्स ऑफ एमएलबीबी को। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम्स की तो बात नहीं हो रही, लेकिन जब बात करेंगे डैमेज की, वो शायद इतना भी पीछे नहीं है टीम पायरेट्स ऑफ एमएलबीबी, बट यहाँ पे लॉर्ड जरूर गवाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट एबल टू मार्क द राइट पीपल। यहाँ पे वो लोग डाइव इन कर रहे हैं, वो लोग टीम फाइट जरूर ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर बात करें कडिटा विच वाज सपोज टू मार्क द जीटियन, उनको एक बार भी मार्क नहीं कर पाए। द एक्सबॉक्स वाज अ काउंटर पिक, बट उनका जो शील्ड है उसको आराम से मेल्ट डाउन कर सकते हैं क्लॉड एंड द मिन्सितार, बट उसका वो करने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका आपने भी जिक्र किया, हिल्डा की वजह से जो मैप पे प्रेजेंस है, वो हमेशा उनको पता है कि विल ऑफ डी को कि कहाँ पे कौन से मेंबर है। वापस से किंग्स कॉलिंग का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। लॉन्ग विद द रेजिंग सैंडस्टॉर्म, तो दो बड़े बड़े अल्टीमेट यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो जाएंगे। लॉर्ड बॉटलिन की तरफ से आता हुआ क्लियर करने की कोशिश जरूर है टीम पायरेट्स ऑफ एमएलबीबी का, लेकिन अभी तक शायद जो प्रेशर है वो बिल्डअप नहीं हो रहा, तो वेव्स को भी क्लियर करना पड़ेगा। देख सकते हैं एक फ्लैंक की कोशिश, यहाँ पे फंस जाएंगे। फ्लिकर का इस्तेमाल जरूर हुआ था बिन्सितार की तरफ से, लेकिन भाग नहीं पाएंगे। यहाँ पे दो मेंबर लॉक इन करेंगे, यहाँ पे खलीद को, वो भी डाउन होंगे। तीसरे मेंबर भी यहाँ पे गिरने की कगार में आ चुके हैं। यहाँ पे नॉकअप लगा 3 मेंबर को, लेकिन रफ वेव्स के साथ मोर्टालिटी गवाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि 4 मेंबर को गवाएंगे टीम पायरेट्स ऑफ एमएलबीबी, और इसके साथ बस क्लॉड रह गए हैं अकेले इस गेम को डिफेंड करने के लिए अभी के लिए। बट अगेन for team Will of D, this is a opportunity that opens a lot of doors for them, especially जो towers है, जो second tiers है, वो आसानी से ले सकते हैं वो लोग। जो बिल्कुल द विल ऑफ डी यहाँ पे भारी पड़ रहे हैं, और लग रहा है यहाँ पे जो एमएलबीबी के पायरेट्स है उनका ईंधन वो खत्म हो चुका है, उनका जो गन पाउडर था वो खत्म हो चुका है, और यहाँ पे अब वो सिर्फ अपने एनिमीज की मर्जी के ऊपर है। यहाँ से बहुत संभाल के आपको खेलना पड़ेगा, गेम अब और स्लो होता हुआ जाएगा। लॉर्ड की तरफ यहाँ पे जो टीम है वो लेने का प्रयास करेगी, लेकिन लॉर्ड आने में भी बहुत समय, तो आप जो है मिनियंस होल्ड करेंगे, जितने ज्यादा लेन जो है वो फ्रीज करने का प्रयास करेंगे, और एक अच्छी फाइट यहाँ पे आती है। पायरेट्स ऑफ एमएलबीबी को कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक अच्छी फाइट चाहिए जहां पे वो जीतेंगे, और जहां वो जीते वहां से इन्विटेड टरेट टूट जाएंगे आपके, फिर मौका नहीं रहेगा। मिन्सी के सामने कोई टरेट नहीं चलने वाला, वो बहुत जल्दी क्लियर आउट करते हैं टरेट। उसके साथ साथ क्लॉड आपके पास है, तो डीपीएस की कमी नहीं रहने वाली है आपके पास। जी बिल्कुल, डैमेज तो है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैप पे पोजीशनिंग नहीं हो रहा है उनके लिए। अगर कोई भी टीम फाइट हो रही है तो वहां पे टीम विल ऑफ टी का पोजीशनिंग एंड द वे दे आर एंगेजिंग इज लॉट मोर in a better way than Pirates of MLBB, and Will of D, they are trying to choke them down in their own jungle, in their own turrets, and वो चीज़ हमेशा हमें देखने को मिल रही है कि वहाँ से बाहर उभर के नहीं आ पा रहे।
एंड द लॉन्गर दिस गोज द वर्स इट इज़ फॉर टीम पायरेट्स ऑफ एमएलबी की ऑलरेडी यहाँ पे 8,000 का एक गोल लीड हो चुका है और थोड़ी देर अगर और जाएगा तो ये लीड 10,000 से ज़्यादा जा सकती है। एंड जो नेक्स्ट लॉर्ड आ रही है वहाँ पे शायद एक और फोर्स फाइट निकाल सकती है टीम विल ऑफ डी। एंड आई थिंक पायरेट्स ऑफ MLBB दे माइट बी अ लिटिल बिट डेस्परेट टू फाइट फॉर दिस नेक्स्ट लॉर्ड, क्योंकि उनको पता है कि अभी बात जो है वो इनहिबिटर टर्रेट तक आ चुकी है, 12 मिनट का समय पार हो चुका है, यानी जो होली डिफेंसेस है वो नहीं रहेंगे। तो वो होली डिफेंसेस के इन एब्सेंस ऑफ दैट चीज़ें बहुत मुश्किल हो सकती है उनके लिए, क्योंकि डिफेंड करना यहाँ पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ डैमेज दे आर डीलिंग विद द फ्रेया विद द डाइव इन from the Yuzhong is enough for the Xbox to just go in and use his ultimate to secure the kills, and that is the game style. And अगर in case अगर वो लोग फ्लिकर वगैरह कर भी लिया वहाँ पे टीम फाइट पे, तो वहाँ पे फ्यूरी ऑफ द फिनिक्स है, तो इट्स अ वेरी प्रॉपर सिंग टीम फाइट दैट दे आर टेकिंग। आप भी देख सकते हैं कि वापस से एक और बेट कर रहे हैं वो लोग। क्या ये बेट पकड़ेंगे टीम पायरेट्स ऑफ MLBB भी यहाँ पे शिंद्रा भाई? कोशिश रहेगी विल ऑफ जी, कोशिश यहाँ पे आती हुई और उसी के साथ एक बड़ी अल्टीमेट लगाते हुए अंदर की तरफ गए हैं और ड्रैगन मौजूदा रहेंगे। बहुत अच्छा खासा हील आएगा, वो हील बहुत ज्यादा, टीम पूरी यहाँ पे समाप्त होने के कगार पे, 2 बंदे रहेंगे। लेकिन कितनी देर तक क्लाउड मौके का फायदा उठाते हुए स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी बढ़त, लेकिन कितनी देर आपने मुसीबत सॉल्व नहीं की, आपने सिर्फ उसको टाला है कुछ देर तक। और अब वो मुसीबत बॉटम लेन से आ रही है, लेकिन मिड लेन से दूसरी जो लेन है वो यहाँ पे आती हुई कोशिश करना चाहते हैं इस लेन को बचाने के लिए। क्या बचा पाएंगे? क्लाउड अल्टीमेट लगाते हुए ऑलरेडी यूजोंग को पकड़ चुके हैं और मिड का जो टरेट है वो टूट चुका है। लॉर्ड यहाँ पे आ चुका है, वो मार्च करता हुआ बॉटम लेन से सीधा टरेट की तरफ, लेकिन मिनियंस वो अभी भी चालू रहेंगे और सही समय पे टीम का रिस्पॉन्स आ चुका है। जो लॉर्ड के साथ एक बढ़त मिलती इनको वो उन्होंने हासिल कर ली है। 2 इनहिबिटर तोड़ दिए हैं आपने, वो 2 इनहिबिटर इतने काफी हैं कि आधे से ज्यादा मेंबर्स जो हैं अब उनको बेस पे रह के डिफेंड करना पड़ेगा और आपके पास अपर एंड रहेगा यहाँ से गेम को अपनी तरफ खींचने का। लेकिन अगर इसके बाद वाला भी लॉर्ड अगर टीम पायरेट्स ऑफ MLBB डिफेंड कर लेती है तो वहां से उनके चांसेस बढ़ जाएंगे कमबैक करने। जी बिल्कुल, अभी पायरेट्स ऑफ MLBB के पास थोड़ा सा मौका और बन सकता है, क्योंकि उन्होंने टाइम बाई कर लिया यहाँ पे। तो टाइम बाई करने की वजह से उनके पास अभी जो फार्म लूज किया उन लोगों ने मैप पे, वो फार्म जरूर वापस से लेकर आ सकते हैं। लेकिन जो टीम फाइट्स हमें देखने को मिल रहा है वो टीम फाइट्स बिल्कुल भी उनके फेवर पे नहीं जा रहे। तो अगर ऐसे फाइट्स होते रहे, अगर ऐसे फोर्स आउट फाइट वो लोग लेते रहे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ज़रूर हो सकते हैं उनके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बात करें गोल की, अभी भी उससे ज़्यादा बढ़त नहीं हुई है टीम पायरेट्स ऑफ MLBB को। एंड द नेक्स्ट लॉर्ड विल कम इन अबाउट 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड बाद शायद एक बार फिर से वापस से बेट कर सकती है टीम विल ऑफ डी फॉर टू पायरेट्स ऑफ MLBB, ताकि वो आके फाइट ले और अगर वहाँ पे फाइट वापस से हुआ तो वो फाइट पे मुझे लग नहीं रहा है कि ज़्यादा चीज़ें बदल सकती है। लेकिन एक चीज़ जो पायरेट्स ऑफ MLBB करने की कोशिश कर रही है कि हमेशा 4 मेंबर भेज रही है टीम फाइट पे, क्लॉड को फ्री लेन दे रही है, क्लॉड को फ्री फार्म दे रही है, लेकिन उस फार्म का इस्तेमाल वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, उस पर ये गेम काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। एंड आई थिंक दैट माइट चेंज द फैक्ट कि कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट गेम पे भी देखा था शिंद्रा भाई कि वहाँ पे जब मॉस्को फ्री फार्म कर रहे थे लेट गेम पे, मॉस्को ने ही गेम को बदला था। जी बिल्कुल, और यहाँ पे भी वो थोड़ी सी स्थिति जरूर आएगी। हालांकि क्लॉड उनको बहुत ज्यादा संभल के खेलने की जरूरत है। देखिए वो आगे आके भी नहीं खेल सकते क्योंकि हिल्डा वहां पे ऑलरेडी मैप पे हमेशा प्रेजेंट रहती है एनिमी के सामने कुछ ना कुछ करने के लिए, जिसके कारण क्लॉड को भी बहुत संभल के खेलना पड़ता है। उनको भी पता है कि सामने की तरफ आएंगे तो हिल्डा उनके ऊपर चार्ज कर देंगी और इन द प्रोसेस अगर हिल्डा मर भी जाती है आपने सही कहा, वो बहुत जी बिल्कुल जी बिल्कुल। बट यहाँ पे एक और फाइट की शायद शुरुआत हो चुकी है शिंद्रा भाई। कोशिश रहेगी लेकिन ये लॉर्ड चुराते हुए नहीं चुरा पाए। कोशिश अच्छी थी लेकिन मौका नहीं मिलेगा। दूसरी साइड पे कितनी देरी आप सस्टेन करेंगे, वो ट्रू डैमेज आता हुआ दिखेगा। अनस्टॉपेबल मिल चुका है, मिंसी का किल मिल चुका है, मिनियंस आपके बेस की तरफ जा चुके हैं। खलीद को बैक ऑफ होना पड़ेगा, एमएम को बैक ऑफ जाना पड़ेगा, लेकिन कितनी देर तक, क्या वो यहाँ से गेम फिनिश ऑफ कर पाएंगे? क्योंकि मिनियंस वो ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं बेस की तरफ। डैमेज बहुत ज्यादा है, हिल्डा ऑलरेडी बेस की तरफ आ चुके हैं, एक्सबॉक्स का जो शील्ड है वो भी आ चुका है, जिसके कारण वो हील आ जाएगा और यहाँ से लेन क्लियरिंग एबिलिटी एक्सबॉक्स के पास बहुत बढ़िया तरीके से रहेगी। अल्टीमेट
लगा दिया गया है, लेकिन वेट करेंगे लॉर्ड के आने का। और इस लॉर्ड के साथ आई डोंट थिंक कि टीम यहाँ पे पायरेट्स ऑफ एमएलबी इसको डिफेंड कर सकती है, उनके पास कोई चांसेस नहीं है। इवन वो लॉर्ड को जो है थोड़ी देर के लिए इंगेज करते दूसरे टावर पे, लेकिन मिनियंस वो बॉटम लेन से ऑलरेडी बेस की तरफ आ चुके हैं। फ्रेया यहाँ पे अल्टीमेट लगाते हुए जाएंगे वल्गैरिटेशन का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन वो बेस वो कितनी देर तक आप संभाल पाएंगे। मेगा अकेला, और इसी के साथ गेम यहाँ पे फिनिश ऑफ होगा। ये लॉर्ड मार करेगा सीधा क्रिस्टल को, क्रिस्टल आपका तबाह। और इस मैच में जो विक्ट्री है टीम बढ़िया तरीके से लेते हुए जा चुकी है। बहुत बेहतरीन गेम प्ले, मौका नहीं दिया सामने वाली टीम को, फार्म कराते हुए गए। गलती करने की जो है एक स्टेप रहता है कि आप गलती करेगी सामने वाली टीम तो जीत जाएंगे, लेकिन वो गलती का मौका ही नहीं दिया। जी बिल्कुल, एक बहुत क्लीन एंड डिसिप्लिन गेम प्ले कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ टीम MLBB। पायरेट्स ऑफ MLBB उन लोगों ने कोशिश किया कि वो सेम इंटेंसिटी के साथ टीम फाइट्स जाके ले, लेकिन द ओनली डिसएडवांटेज दे हैड थ्रू आउट मोस्ट फाइट वाज द फैक्ट दैट क्लॉड वहां पे मौजूद नहीं थे एंड दे वर टेकिंग अ 4v5 फाइट जहाँ पे उनके पास डैमेज काफी ज्यादा लिमिटेड था। उनके जो स्किल्स है वो हाईली चांस बेस्ड था कि अगर आपका स्किल कनेक्ट हुआ, अगर आपके पास डैमेज है तभी आप किल्स निकाल पाओगे। And I don't think so sending Claude all the time to the other lane just for the split push was a very bright idea। यहाँ पे अगर Claude टीम फाइट पे रहते तो डैमेज काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियली हाई हो सकता था, क्योंकि उनके पास फुल आइटम बिल्ड था यहाँ पे, तो उनकी जो डैमेज थी उसका इस्तेमाल काफी बेहतरीन तरीके से कर सकते थे। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे आइटमाइजेशन फ्रॉम द साइड ऑफ टीम MLBB, 3-3 चेस्टर स्पॉल्ड्रन है वहाँ पे, 2-2 डोमिनेंट साइज है, तो शायद क्लॉड को ज्यादा मुश्किल हो भी सकती थी अगर वो टीम फाइट पे आते, बट वी नेवर नो कि क्या चीजें बदल सकती थी अगर क्लॉड टीम फाइट पे होते, क्योंकि ओवरऑल आई थिंक इवन द टीम पायरेट्स ऑफ MLBB दे वर प्लेइंग वेरी पैसिवली। उनके पास मौका था कि अर्ली गेम से ही थोड़ा सा डोमिनेंस करे विद द खलीद एंड द कलीटा कॉम्बो, बट वो अग्रेशन बहुत लिमिटेड था, क्योंकि उनको एक बार पनिशमेंट जो मिला टॉप लेन के पास, वहां से उन लोगों ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की वापस से एक अग्रेसिव गेम प्ले खेले। वो एक अग्रेशन था, उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा पैसिव हो गए एंड दैट वाज वेयर टीम MLBB दे जस्ट टू कंप्लीट कंट्रोल एंड दे जस्ट ट्राइड टू force team Pirates of MLBB to make the mistakes and force them into a very passive state of gameplay. And वही passive state of gameplay was what that slowly boiled down to a very huge goal lead. And इस goal lead के बाद आपको पता है कि heroes like Freya, heroes like the Xbox, अगर उनके पास items आ जाते हैं तो उसके बाद गेम बहुत आसान हो जाता है, वो snowball कर सकते हैं आसानी से। जी बिल्कुल। और इसी के साथ देवियों सज्जनों, गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूले। वो आपको कैसे करना है, टोटल 11,000 डायमंड्स का गिव अवे चल रहा है, तो आपके हाथ से वो मौका ना जाए। कैसे पार्टिसिपेट करना है, इंस्टाग्राम पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, जो लिंक है आपको वहां पे मिल जाएगा आपको, और वो मिलेगा आपके जो है डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन पे हमारे जो मॉड है वो आपको लिंक दे देंगे, वहां पे जाके सारे जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करिए और पार्टिसिपेट करिए फ्री डायमंड जीतने में। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको इस मैच के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
Desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back to Algambo Esports presents, of course, Battle for the Crown. And we're going to be kicking straight back into the best of one knockout series of this round of 64 Group D, which is obviously the last set. And we've already had three games back to back, and we had a little bit of a short break due to a walkover, but now we're back with another one. And myself, obviously, I am Ray, gonna be the voice of the game, casting together with none other than my bro on the side is gonna be Ash TZ. So Ash, welcome. It's nice to have you again. Thank you so much, Ray. I'm really excited to watch out what will be happening today, because Group D is kind of a crossover group. We will have Bengal server, Mumbai, Delhi. So all those server players are here in this Group D. So right now there will be some clashes. एक बात phrase है हिंदी में, एसिम भाई बोलते रहे भाई, जिसकी लाठी उसका सर. यहाँ पे वो चेंज होता है मोबा में. That is जिसकी सर्वर उसका जीत. So that's the thing. But you know what? Server maybe changes, but if your game, your intent will be same, then you might gonna win the game as well. But for now, this fifth game will be Senigami versus Red Rose. I'm watching Death Note right now and so familiar with this name, Shinigami. And Red Rose is here as well. So let's see. We'll be taking on the Barton forward to the round of 32 on the last day of round of 64. Yep, they ban out the Zushin right now, and Red Rose will follow it up. I can predict every ban, by the way, Ash. You know that, right?
But yeah, but yeah, jokes aside, Yes, Nishant. uh, Yes, of I've course. actually witnessed the gameplay of Shinigami. I was fortunate enough to see it in the round of it 128, and they play like a very good. I mean, if you consider like those mythic teams to be S tier and then elite teams to be A tier, I think Shinigami easily falls into that B plus tier, you know? So they're like one of the better teams I've seen in the tournament so far. But at the same time, I did not get to see how Red Rose gameplay is, so maybe they're even better, right? And in a best of one series, honestly, it's not about who's better, it's about who can bring out the best strategy in that game itself. Because let's be real, even the best teams, they lose to nobodies in a BO1. Definitely, because sometimes your comfort really gonna be a pain in where for the big teams, and I have Where seen you this sit. thing Ray, like even though my mindset is different during the rank, but I really lose out to a Hanabi, to a Mia sometimes. So that's the thing. Even though you're preparing meta for your mindset, you're going for those meta picks, still you're losing against those Mia kind of picks because they have practiced it more than the meta we have known. So for now, there might be a chance Shinigami gonna go for the comfort. But first pick is kind of a Suyu, but Suyu's banned here, so maybe they're gonna go for the Zetian. no. Okay, you can predict it. I was not Hey, expecting this, but as Zetian is here, Ray, do you think that the Gatot Kacha will be a prioritize for Shinigami, or will they go with the Khalid, Hilda kind of option? oh yeah, Khalid is something that I feel like some teams just prioritize and some teams just do not. It's like really depends up to the teams, but you know there are other picks open like the Harley, for example, and you even have yeah, Kalia is there too, I think. So I think those two picks could be pretty good, but they pick up the Phobius, and there we go. We even get the Harley. Yeah, let's see. The Phobius and the Harley together in the side of Red Rose. And if the Phobius is here, there is a big chance that Red Rose might gonna go for the Harith pick as well. And now, as the Phobius there, Shinigami can't go for the Harith. So they need to prepare something which can counter the Harith here. That might be a Beatrix, might be a Moscow, or if they really want to go a sneaky here, then the most traded hero when we see a Harith is the Granger. But you have to be prepared for it. You have to get the early snowball. You have to play safely in the early phase. Then only your artillery, your damage in the late phase will be shine. But for now, as Zatian is here, there is a lot of set of comp kind of heroes which can get better with this Zatian. The Grok is banned though, but there might be a chance that they're gonna go for the Gatot Kacha. There is a little chance for the Tigreal, or no, they're gonna go for the Mino. He does have the setup, and Ray, if you remember, you during MS2, like Minotaur is kind of a walking guardian helmet. But for now, the healing effect is kind of low. So he's not at all a walking guardian helmet for now, for this season at least, this Yeah. economy at least. Talking about the Lapu Lapu Ray, is it an early Lapu pick? Because a lot of counters are open right now. Alice winning lane, Uranus winning lane. You can come up with the Arlot as well if you want. Dragon 2. I think perhaps this might be their comfort. They were maybe afraid that this might get banned out, and they wanted a Lapu Lapu that can go into the back line. And it could be that they might not go for a assassin for kind of a jungler because Suyo is already banned out, so assassin fighter is no longer an option. So either you go with a fighter, which is most likely going to be, you know, something like a Leo mode, or you go with an assassin. So maybe they wanted someone with that assassin fighter role that can sustain but also go the flank, you know. So that might be it. But yeah, Alice is obviously something that can do the flank as well, but she's not exactly burst, you know, compared to what Lapu can provide you. So with that, we also get the Marcel coming in from Red Rose, which either it means that Red Rose are a very experienced team too, because Marcel requires a really good coordination. If not, he's gonna be the reason you actually lose. BBG, Babiji, Boo, and that's a ban on to carry as well. But there you go, another ban onto the MM. That will be the Claude. Carry, Claude, Irithel, all this marksman has been taken out. Now the Hadith is open though. And you know, the first pick in the second picking phase is falling towards the side of teams Red Rose. So they Knew might it. be going for to prioritize that Hadith here. Leo mode will be taken out as well. Against the Harley, Suyu, Leomord, these two things work so well. And now both the things are banned. What you're gonna prioritize here? If you're going for a Bakshia, then you better go for a proper
damage dealer kind of not a Granger. You might gonna watch out for a Moscow, but at the same time the risk is higher. Moscow will be farming up in the late phase. In the early phase, you need a proper damage dealer. Zetian obviously is present there, but cannot withhold those damages in the early phase that much, which is required by you. So very much thinking into the draft right now. There is a lot of mind pressure for the side of Team Shinigami here. Last ban coming in, Ray. What the heck? Wow. A gourd ban? That's interesting. I don't see, like, I don't feel their composition is that weak to poke because they do have a heal. Heal will help you survive poking damage. So that gourd ban is weird. Maybe they've done some research It's and actually well due to Marshall. What do you think? yeah, could be. Yeah, you're right. But Kimi is also there, so kind of interesting. But will we get to see the best combo, which is of course Marcel Beatrix? You know, that day we saw it, but it did not really happen that well. Maybe tonight we will get to see it. Yeah, that was godlike, and this time it is Red Rose. So let's see if Red Rose can pull out that synergy with the Marshall being there, and they're going for Red Beatrix. Ray, as you mentioned about it, it is here as well. Beatrix plus Marshall combination. Now they have a chance to go for a Kimi as well. So look at the artillery they are having. The projectile, Beatrix, Kimi, Harley. At the same time, the Phobia is going to give that backline hindrance. A lot of things are there, and I told you they might going to go for the utility here, Ray, because having a Nathan is really opening a chance for the utility. But at the same time, your physical damage will be a little bit laser down because Nathan and Zetian, both of them, going to give the magic damage. But now it's a Lancelot. Yeah, I mean, Lancelot is right there for the burst. They do have Lapu Lapu as well, which is, I guess, kind of balancing things out. But yeah, when you go for a goal lane that is magic base, especially Harith or Nathan, you do overflow in the magic department. Good thing enough, I guess, that Zetian is not exactly a mage that is, burst kind. So she's not going to get affected if they do build up too much magic defense, because the main thing that Zetian provides is the fact that, she's able to give you that great movement speed boost, that stun, and obviously good amount of utility with her Phoenix Fury. So I think she's not going to be affected. The reason most of the time it can backfire if you get too much damage is because your gold lane gets affected because they have to fight against an Athena or a Radiant Armor. So maybe it will work out. Oh, Red Rose, they're going a lot of late game security. Just like their name, they will go for the Sicilian. And with this pick, I'm not even sure about it, that how it will goes into the early phase of the game. Having a Lancelot into the side of Team Shinigami, mine gonna have a lot of problem for that Sicilian and the Beatrix here, because they're totally late game oriented right now. And other than the Harley, who you have the Marshall, okay, he gonna give out those early invasion and taunts, but at the same time you're lacking the sustain with just having the Phobias there. Yeah, and I think that can be a really important key factor, because once Phobius is no means like a squishy hero, but once Phobius is down, that does mean that Lapu Lapu and Lancelot have a better window to go deep. But at the same time, the fact that there's a Phobius, I feel like Lancelot will hesitate quite a bit and might not be able to, go that deep as he wishes to go for. So it's going to be a really interesting match that we have in front of us, as we'll be going into Land of Dawn pretty soon. Here we are, guys. Shinigami versus Red Rose, round of 64, Group D, game number 5 of the night. Having this game, and both the teams have really cooked up the draft here, but looking after the execution will be the best thing to see, that who will be carrying out the victory for them and going into the next round. Look at that invasion. And at the same time, I'm going to see the Minotaur guarding out the blue buff here. Marshall going to go and sneak peek there. Have to force out the retreat. Now, Throne Rose going to easily get that blue buff into his hand, but out of the bot side, Beatrix is really going for a winning lane against that Nathan. Yeah, that's... Okay, we'll figure it out on the first turtle fight, honestly. For now, they're just going to play poke as much as possible. Both have heroes that can poke each other. You have the Sicilian with the Bat Claws, then you have the Zetian with her first skill as well. You even have the Harley, which is going to be obviously being the nuisance with the poking. So we have a lot of poke in both of the departments. And even the gold lane is something similar as well. So expect to see a lot of HP trade-off, but Shinigami does have, like you mentioned, a healer. But
like you mentioned as well, the heal has been nerfed quite a bit, so they can't exactly 100% rely on it. The turtle's going to be coming up in 30 seconds. Yeah, obviously, and look at the burst onto the Beatrix, force him out to go back into the safer side. Onto the level EXP, we're going to see that both the EXP has not reached the level 4 mark yet. And whoever will reach it first, I'm going to give a lot of support into the turtle steel. But there you go. Inside the tier, going to get a lot of damage from the structure. Minotaur zoning out the bush there, checking it on to the Harley. I don't feel like Deadly Magic will get used at this moment. But as the river is flowing on, it's the time for the first turtle to barge into the Land of Dawn. And look at that little bit of poking coming out from the Harley here. As you mentioned, both the teams have a lot of poke kind of heroes. Can really poke out so many people. But what is happening to the Phoenix here? Inch of health, but now Lapu goes in. There is the bravest fighter, but Turtle will be secured down by the Harley here with that Deadly Magic onto the Minotaur. But he will be, not to the Minotaur, but to the Lapu. He'll be fine. But look at the Lancelot. He's invading out that blue buff and will be succeeded onto it. Puncture, getting a stun there, goes back. Yeah. The turtle successfully taken into the hands of Monstar, and with this, the first blood still yet to be secured. Both their teams still being very defensive. That could have been a Beatrix first blood, though, if it wasn't for the fact that Beatrix did have really good instincts. We got to look into the itemization. It's going to be, of course, the Fury Hammers getting built up for the Assassins, and of course the Beatrix as well. The mages are going to be prioritizing. Okay, Nathan actually completed the boots. He really wants that slight bit of penetration over the attack speed. I feel like the attack speed would have been a little bit better if you just prioritize it completely, but it's okay. The gold hasn't shifted that much just yet. It's pretty much equal. The game hasn't really taken the lead into anybody's hand, but mid lane still poking. I guess we'll have to wait for the real team fight for now, Ash. Let's see. They are waiting for the perfect opportunity, and now the Minotaur goes in, flicker back into the safer side. Bazooka launcher. Not gonna get connected onto anybody, and that will be a safer choice for both these sides. 3 minutes and 40 seconds to reach, and not a single kill has been taken down. And now they might gonna go for the Natan here. He does have the entropy to get safe into the way. Marshall goes in first. Stun happened there. That will be the ultimate coming in here as well. He went for the entropy, but into the golden hour side. That is the middle, and Fury comes in the way. Fury the Phoenix connected out of 4 people. What a heavy sissy comes out from that Zaytian here, but he couldn't manage to burst out those people, and they will be going back into the sleeper side without any casualties. Ray, can you just believe? 4 minutes straight away game. Second turtle appearing into the Land of Dawn, and not a single kill has been taken out from any of the sides. Yeah, both of these teams are very disciplined. They're just doing HP trade-offs, and if the moment they see the danger, both get out of it. I mean, they're playing it safe in a way that's not giving kills, but at the same time, it looks like an objective-wise team fight. Look at that, another turtle. You have the mobility, but at the same time, you get hindered by the Infernal Burst. Your first must secure inside the backline, but he's gonna get taken down with the tier damage coming in. Final blow from the Beatrix there. But Natan onto the sneaky work onto the bot side. Secured that tier for the side of Team Sinigami. Turtle secured, structure secured. You got the first blood as well, so I'll say Sinigami in a better trade rate. Yeah, they take the dub on this one because that turret is actually way more valuable than even the turtle, and they get the turtle as well. So that's a big W for them. Let's take a look at the itemization again. Nathan has already gotten the Feather of Heaven. Lancelot prioritizing. Okay, he's building the Fury Hammer and going for the War Axe. Intriguing. But better safe out. But does he immune? No. Oh, he did. He did it, and now you're gonna see that. Using your own teammate. That's like a backfire. The Phobius was waiting for his turn to jump onto that Lancelot, but that golden hour was misplaced. And this is the synergy I was talking that day, Ray. If you have not a good synergy with a Marcel, you're like, it's useless for your team. Marcel genuinely is like the best troll you can ever have. But anyways, on the other side, he doesn't have... he does have the Aegis, but it's not enough. Okay, he used the entropy there, and but couldn't manage to survive himself. 1-2 the score is, and Red Rose will be leading the micro scoreboard here. But at the same time, I believe Lancelot might gonna take off the trade, and he will! There with
the Phantom Execution execute down that Beatrix. Instantly make him vaporize into the air. Now waiting for the perfect moment. They might gonna go for the mid-tier trade here. What do you think, Ray? I think they're just gonna go for the turtle, not risk the turret yet, and I think they do have a good amount of wave clear due to ace on that Sicilian. Let's see, this turtle fight, the last one of the match, might be a very crucial. It does give you the most amount of gold. Let's see, Lancelot and Harley both have one turtle under their name. This will even out the odds. Let's see what happens. Golden Hour. Bazooka launcher used as well. There is the fat impact, but with Beatrix falls down. Luffy as well. Slain happen on a monster. They're gonna go for the fourth one. Flicker out there. But Phobius, can he survive? I don't feel so. And that's the double for Maswatch. There you go. 4-man down with a turtle into the hand. Shinigami just trade off each and every kills into their hand and made the vicinity a graveyard pit. Yeah, this is honestly surprising to me. But now they are the ones with the lead. They have 6 kills on their board, 3,000 gold advantage, 1 turret, make it a 2. And with this, they are leading the macro game as well. And looking forward to it. I definitely believe Red Rose, they do pick up the Marcel and the Beatrix, but it's not working out. The synergy is just not there yet. And maybe they're just maybe panicking out, but his ultimate is not letting the spot. And even the Beatrix is not really able to follow it up either. Let's see what happens. Monster does get the Sky Piercer, but it might be too late maybe. 8 minutes, but anything can happen. They do have the Sicilian, so if they just defend it, they do have really good chance in the late game, Ash. I believe the synergy workout is not working properly for the Red Rose. That's the reason they cannot go for a winning team fight here. And even you're going to talk about the artillery, this Lapu Lapu is really marking down the Beatrix in each and every fight. And that's the reason maybe he's not even useful with that Marshal right now. And sooner or later, Ray, when Shinigami will have the late game power spike into their hand with that Nathan, the impact will be a lot much better in the team fights. So, like, this is not a good case for Red Rose. They need to do something in the early phase or else into the late side. I don't think game will be better for them. Yeah, precisely, because the side of Shinigami, they can just end the game with the lead that they have secured right now. But let's keep hope for them as well. Red Rose, we're looking for a competition from your side, especially with the Sicilian that they have, which I believe 100% is their main insurance if things do go wrong. Nathan, yep, he's prioritizing the attack speed, gonna be going for that Windtalker. Lancelot has the breastplate, wants a little bit more defense, doesn't really want to get bursted out. Other than that, rest of the members wait. Beatrix went for the first item, Malefic Gun. I mean, it's not bad, but not exactly preferred. You could have honestly went for the Blade of Despair. And Phobius, he's going for... Oh, I see why he's not tanky enough. He's going for a slight bit of damage when he should be playing fully sustained, considering he's the only frontline they have, except for the Marcel. Okay, he did have the Thunderbelt, but yeah, Thunderbelt takes time to stack up. Anyways, the Lord fight. They're gonna take that Barton here, as well as the bait retribution. Lancelot finds the Lord here and goes in for the Phantom Execution, trying to chase down that Marcel. He goes back there, but will be taken down by Monster. Chainsaw Man falls down by Monster. Now the Marshal coming in here, and Chopi hears Nathan giving a lot of damage. We're gonna keep that final blow onto the Marshal. This will be a 1-for-1 trade. Roma for the jungler, but doesn't matter. Shinigami got the Lord into their hand. Now this will be affecting much more better into those mid tiers and those front tiers in the mid. Immediately, Shinigami have cemented their lead even for the... Oh, Nathan! Oh, that's a nasty blow! That's a nasty blow from Nathan! Literally created the opening for the side of Shinigami and will make sure that he's gonna punish out that Harley there. Not only that, he's going for the tier here. Phobius gauging out, interested for the engage, but not gonna do anything. The sun comes in here, and Chopi, look at the damage! Cut out for the defense, but the Holy Shield will be taken out. Lord marching from the bot. Beatrix trying to stall it down there, and I believe they're gonna go for it. Okay, Lancelot trying it so. But into the mid side, the tier 1 is about to fall down. Structure secured. Throne Rose comes to the way. Puncture. He's getting a lot of damage. He goes back there. Marshall chasing it out. He's gonna find his way into that Lancey. At the same time, your top has been taken down. Your mid tier 1 is taken down. Marshall and a very bad position. Golden hour for the survival.
that was a 3-man golden hour. Beatrix was just not nearby, or neither did have the bazooka ultimate. That could have been a really good spicy ultimate if we did see it executed. Maybe it was not communicated well. But yeah, right now 8-3 score. Red Rose on 29k, almost 30, while Shinigami is leading with 5k goal advantage on their hand, almost 12 minutes into the game. And I believe with this lead, okay, how much stacks you have? 22. Okay, building it up. But yeah, other than that, almost 12 minutes into the game, the macro lead is very strong for Shinigami, especially considering that Nathan is able to solo a Harley. That already kind of shows you that they're pretty much ahead. Plus the fact that, he even has a Divine Glaive, so no amount of Radiant Armor is going to be helping you either way. Luffy, Ashiwat, Phantom Execution, Infeld will be secure that kill with a puncture. Recall spamming happening there as well. Luffy goes into the previous pointer right now. He had the channeling order. 2 people, Mid and Fury, 3 gone. Knock-on happens, and that falls down Luffy into the hand. Killing spree happened by the down there, and now they're going with the trophy. Throne Rose Years goes in with the puncture. Secure the kill order, says C, and the Phobius will fall down as well. And with this, the 5-man wipeout has been done onto Red Rose. It is another graveyard pit for Red Rose by the side of Shinigami. They are really going with their name, God of Death. Shinigami is creating havoc in Land of Dawn at the Battle of Crown. Yep, 13-3 score, and they have around 8k gold advantage. A pure snowball game that started off from very disciplined, because considering we only had first blood at 4 minutes 47 seconds, both of the teams paid respect, but Shinigami took the lead and has never looked back, especially Nathan. And going for that Aegis spell was obviously the best move ever, because I honestly feel like, I'm going to be honest with you, as I don't understand why Harley's even meta. So I'm glad. But anyways, top lane. Top lane. A little bit of fight going on there, but I don't feel like it will get extended. Now the minute is interested. He goes in there, getting a lot of damage. Phantom Execution comes into the way. Throne Rose, killing spree secured. He's going for a puncture. Golden hour, Michael confirmed, but now Luffy taken down here. Double onto the CC. Mega onto the Phobius. That is just monster. Picked up. No. He goes back with the help of the Harley hat, but now the minions are going inside the base. You need to clear it down, but no, this Nathan will finish it off as soon as possible. This will be a game victory for the side of team Shinigami against Red Rose. They will be making sure that Red Rose will get knocked out from round of 64, and Team Shinigami will get their hand into the round of 32 at Battle for Crown. Ray, interestingly, I'll say one thing here. DOMINATION. Domination. Yeah, you spelled it out perfectly. And execution-wise, of course, Team Shinigami did it for us. Because even I was honestly surprised to see a game so slow suddenly become so fast in just a second. The game ended at around 14 minutes. And it honestly did not feel like that. So kudos to them. And I mean, I did mention that Shinigami really stood out to me. And it really looks like they are here to prove it as well. And with this, we are done with this best of 1 series, ladies and gentlemen. And right now, obviously, we're going to be taking a short little break, because this was just the match number 5. We still have match 6, 7, and 8 left. So we'll be right back with a short little break. Make sure you stay tuned at Algambo Esports Battle for Crown, and we'll be right back. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
Desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back. We are back again with another interesting match, and I am your caster PT, back again with Ash. Ash will be joining us shortly, but before that, let me introduce you what it is going to be, because hey, it is the Battle of Crown with 15,000 prize pool in cash, so that is really crazy. But talking about the teams, it's going to be Cyber Drifters versus Titans of ML. Now both of them are new teams, and as much as I remember, I would love to see if Group D are really interesting or not. And with that, Ash, are you there with us? Definitely, Pichi, I'm here. And Let's go. Cyber Drifters versus Titans ML. Okay, we saw Pirates of ML today and Oh. Titans of ML as well. So all these Titans Pirates are out from their home. Let's see how they're gonna cook it out in the drop. Banning out the Jushin, Zatian. From here, we're gonna see that Phobius as well as the Freya. If the Phobius is banned, Pitchy, then there is a huge chance that Team Cyber Drifters might gonna go for the Harith pick here. You should take care of the Harith ban as well. Suyu is a must ban right now, Pitchy, as a blue side. The way they pick the Jushin if it opens, same goes for the Suyu right now. Nowadays, Suyu first pick is a real thing for the blue side. So I'll say Titans ML literally did the best thing they can ever do. And with that, Harley will be picked up here. That is a huge chance that the Croc as well as the Lilia, or maybe you're gonna talk about that mid lane Eve or for Farsa kind of picks for Titans ML at this phase right now. Let's see. Kadita, okay.
Oh, interesting picks definitely are coming from both the sides, given the fact that we have not seen this pick. Especially me, I have not seen these picks in such a long time. Now that we are looking at a Harley right there, it is like a bit 50-50 for me. One, if you can snowball very well, but your damage is just on a scale upwards. Now, again, I have seen a lot of Harleys in my rank games as well, which have been, invaded like hell into the early game, but yet again still pulls up into the game once he starts getting his item. So maybe if that's the scenario that we will be looking at, that could be happening, but anything could happen because this is Mobile Legends 5v5 and epic comebacks are always around the corner. But with that mid laner going in strong, it is going to be one of the heroes that can easily clear the lanes and poke as well. So Kimmy along with a carry. Now, carry though. No Cloud Ban and a carry. What do you think about that, Ash? I think these two picks are early picks for Team Cyber Drifters. They could have gone with at least EXP or Roma with the mid lane and goal lane. That could have been a better scene, but they really picked out so fast, and now you have a counter for it. I mean, indeed, the Kimi's counter is not a Kadita, because if you're gonna go for the Purify with your second skill, you can easily dodge out that Kadita. But here, no one wasn't expecting the Granger, but it will be a Granger game for the side of Team Titans of ML. But Pichi, like with a Granger, you really need to build your snowball, and not only that, but you also have to prepare yourself in the early phase of the game as safe as possible. So all these things mattered a lot, and as you have a EXP Mincy or maybe a Roam Mincy, who knows, I don't feel like the Granger could better option. But still, as your artillery have a proper range, you have a proper range in a fight, so you can easily dodge out that carry and gonna give him a lot of damage. But at the same time, in the late phase, the carry will be a little bit vulnerable onto you. Let's see though, because there's going to be a lot happening into the Land of Dawn with Akemi onto the mid lane. I am a little skeptical, like in a good way though, because I have not seen Akemi in a long time. Plus, Kimi being Kimi can actually pull up with the damage as quickly as possible. And talking about the Granger, that is a bit again 50-50, but hey, these are the teams battling it out for the best of one series, so comfort is utmost priority. But talking about bans very, very quickly, there's going to be the Akai, Hilda, Gushien as well as Kaja. A lot of emphasis onto the tanks because both the sides have not gone for their roamers, and that naturally means that they just want to make sure they don't be having a hard time right there, because once you are really having that good tank and getting trapped around their crowd control, it is going to be quite annoying. So avoiding that, there is quite a good amount of emphasis onto the rank, so that is really looking good. But onto the same note, we'll have to look how they will be trying to counter the Grok, since you did mention that the Grok is open, and here you go, the Grok has been taken down. That's what needed for the side of Team Titans of ML, with that Kadita being there. It will really actually gonna work proper for them, but then you have a Vinci into the EXP, so you need to be careful about it as well. Because Lapu Lapu, which I was about to say, and it's just got appeared there with a Cho Roam. So now I believe Team Cyber Drifters are really having lesser sustain into their way. It's just the Lapu Lapu for the front line. Chow will be played as a pick off here, but at the same time, if the Granger is not going for a Purify Pitchy, he is getting into the trap of Way of Dragon. There's going to be an interesting one to see, given the fact that teams are really interested on taking a early game jungle as well, matching the magic energy that Harley's going to give. It's going to be a Julian for Titans of ML. Now that the picks have been done, both the sides are really into re-engage.
especially for drifters. Again, when talking about titles of ML, they do have a re-engage in a way that the Granger can continuously deal damage along with the Julian, who has the shorter cooldown. But other members, they are very reliant on their skills. They're very reliant on their ultimates. So once the setup is done, they'll have to wait it out 20 seconds, 30 seconds, and then go back again. But the other side, with the amount of basic attacks that they have, the Kimmy, the carry, it is going to be really crazy. So I want to see if Titans of ML can keep up with them, or is it going to be the other way around? That's going to be another interesting match. So I hope you ladies and gentlemen are already up waiting for your dinners as well. So if you are, go bring it up. This is the right time. It's comfort versus meta right now. Julian into the jungle after a long time, and I'm really happy to see it. It's my hero, so but I don't see it properly in the tournament scene much because of the range, you can say, or because of the damage in the early phase. You have a damage in the early phase, but if you could not cope up with it and you fall down for 2 to 3 times, you cannot make yourself back. That's the main thing. But at the perfect moment in the early phase, you can see the Shunpo is giving out a lot of damage with the Kimmy taking over that mid lane in the early phase. That's a quick scene you always see with the Kimmy there. Round to the bot side, Cyber Drifters are really winning all those lanes, top, bot, mid. That's a good idea coming out from them. But look at the Julian. He has the faster jungle clearing ability, but Chow waiting for the perfect moment to grab in that Julian, invading it out onto this red buff. Now the Shinpo Yush. And he will get hindered by that wall as well. Ooh, now that's going to be a bit no first blood on from both the sides. That means they'll have to wait it out. Maybe onto the mid lane, there is a high chance on how these teams are moving around. But at the time, not liking that position will be the first blood. Zilla gets caught down between the wall. Now, as a marksman, you are the first blood. That is very, very dicey for your farm. When you're going for a King's Calling, you know the Lapu Lapu can cast out the Bravest Fighter inside it. So you are really into the losing lane side. And if you're going to talk about the Granger and the carry, Granger is eventually playing the winning lane, but was getting that early game damage. But that rotation was way to the point, way to the mark, I'll say. Way of Dragon, he doesn't have it right now, but that is a knock-on coming in here. Kadita goes back there to the safer side. He just have the Shunpo, and look at that aggressive approach from this Cho. Inside the jungle area, they're going for the fight. British Spider hears Julian falls down before the turtle. It will be a slain on plane and a double onto Flippy. But Arul falls down with a tear damage coming in there. Granger give out the rotation, but he's in a very bad position. Will be taken out with the Shunpo. 4-man down. King's calls into the way. Of health and survival falls down immediately there. Carry soaking out the gold from the wall of the tower, and now you have a chance to grab the turtle, Pichi. Definitely. Now the carry is just making sure that hey, whatever has been missed will be taken back as quickly as possible. Now with that, let's hope for the best, because Granger, once he picks up his Skypier, so it's going to be very hard, and into the bottom lane as well. Once again, that is going to be Lapu Lapu dealing too much damage. He goes more, he goes in along with the Chug, gets the double. There's a lot of action into the bottom lane, and there you go. He is alive and full HP already. Bro, this Arul is really changing the momentum and shifting each and every time. Retribution onto the Harley. Why? But Julian, take the turtle away from the Harley there. That's a good engage coming out from Titans of ML. They grab the macro into their way, but for now, the scoreboard is kind of falling forward for the Cyber Drifters. They have a lead into it. Minsita. Minsita though is really struggling right here against the Lapu Lapu. Now again, I do remember NTS Arul into the scrims. He really plays the good EXP, and he is definitely showing. Wait a minute, radio though. King's calling. He missed it out this time. Cho finds his way back into the safer side. You know, having a Cho against a Minsita, you really went for a bigger bait. But cross-map play is going on there. Death Sonata connected onto the carry, taking out the minion waves and into the behind. We're going to see the Grok giving out the zone here. Follow-ups coming out soon there. They're going to take out the gold away from the tier 1. And might going to destroy out the tier structure as well. Grok engaging out there, but not expecting that Harley to come in. Deadly magic use, flickered. Take charge for the defense.
There is a skirmish still going on. Inch of hell. Can he survive? He's getting a lot of damage though. That's not a. But no casualties. That's okay. That's okay. Julian's still there now. Will be going. Oh, the flicker Bears fighter. Crazy damage coming in, and he is getting a killing spree. Now that he has, farm from the bottom, from the bottom lane. Is it? I'm gonna jinx it. I feel like because Arul, he's looking quite low. He does have the shield, but no, it's a double kill for Devonshiki, who comes up at the right moment. But Minsita though, they invade. He goes in for the King's Calling. Catches none. He got hit there, and now he's gonna get that way of Dragon onto the face. That's a beautiful outplay, and you can see the reaction. The recall spamming is the reaction for that overextension of Minsita, which he will get punished for. But I'll tell you what, Arul, he needs to taken out at this point. If he will be alive and engaging into the team fights, you're doomed, Team Titans of ML. You might be the Titans of ML, but he is the, dominator. True, look at him. Mega kill once again for him. The turtle though, it is definitely gone into the hands of Cyber Drifters. Now they're looking for more, given the fact that Goku Black is very, very low and is still trying to deal damage right from the backlanes. Now with the backlanes, he will have to retreat, get his HP back, but mid lane in jeopardy though. Let's wait and watch if the teams can actually make a bit of a comeback, because it is quite possible the way the teams are playing. But NTS Arul strikes back. He goes in, and Omjin into the same note is looking quite low. He goes back safely, but I can't say the same for this Kadita, who unfortunately gets caught out right there. Now there is a lot of presence of this Lapu Lapu, but let's not take a bit away, the spotlight away from this Hali as well. Too much radio bottom lane, too much damage. Shivam will be taken out. That was a nasty one, I'll say, Titans of ML. They couldn't survive that way of Dragon for now. The pickoff is too high from the side of Cyber Drifters that you cannot do anything at this possible moment. And if you're going to talk about the goal lead, Pitchy, it's already rising up to 5k, which is really high in just 7 minutes of the game, and Turtle is just getting secured by Cyber Drifters at this moment. So it's just for the Lord. He goes in there. That is the rough waves, but not going to take out the... he getting outplayed though. Bravest Fighter comes into the way. He is getting tormented down, but at the same time, oh no, he's not going to survive. Sky Piercer will be walking out from the behind. A shutdown happened to the Lapu Lapu. Carry going to take him down as well for the overextension. Now, it's a trade-off for Titans of ML. They got some kills into their hand, and... eventually recuperate the 5k goal lead into a 3k. That's a good way. 100% right there. Now Turtle being here, there's going to be the last Turtle, but that the team does have the chance to convert it to the lot, since there's just 20 seconds left. Now will they go for that kind of a gameplay or not? It is up to them, but no, they are trying to go for the Turtle as of now. And oh my goodness, the flicker, crazy flicker coming in. Looks like Kevon picks up the Turtle for himself. Omjin flickers out of the way, making sure he is safe. Yeah, but Turtle eventually went into the hand of Cyber Drifters. They got 2 turtles into their hand on the top side. There's a fight going on. He went for the enhanced guide, but not going to survive that deadly magic onto him and falls down immediately there. Minsita in a very bad position. Might gonna get caught out. 3 members chasing him down there. Might gonna get trapped down as well. He doesn't have... he do have a King's Call. He went for it there, but inside the King's Call, they're taking up the fight, and the British fighter gonna work it out so well here. Cyber Drifters, each and every team fights right now into their hand. But talking about the macro lead, it is also being settled for their side. So now it's just the wait for the Lord Pitchy, and then they might gonna finish the game as well. That is true. Let's say if they are able to finish the game with just 1 Lord, because the goal difference that we are looking at, it is quite possible, but at the same time the teams will have to go. Radio though, he goes in for the kick, but now it is on to the wrong side. It is on to the wrong side, and even why are you kicking off Grok? What's the need?
It's more like overextension for that show, but at this Yeah. time you can do anything you want because your Yeah. damage output is too high. Let's call you. You're gonna get survived there easily. He's the tank of the game. Cyber Drifters are literally drifting out this game from the hand of Titans of ML. If something can happen for Titans of ML is Granger getting the farm out of the hand and Kadita trying to take out the Kimi or carry in the team fight will be a better trade, I'll say. Let's say the Kadita onto the same note was not able to pull up with the surprise element because Kadita is much more known to be into the bushes and try to go for it. Oh, nah, that No. is crazy coming in. Yep, and you will not gonna get survived there. Enhanced Kite got used, chain into the way, carry falls down there. No, he survived, but that's a double onto the Julian. Shutdown happened to the Harley because of the overextension. The overextension, that was a proper kind of engage from that Kadita. Gonna use the rough waves, but nothing gonna happen to the Cho. But I'm still not believing why the Cho is taking out the Mincy or Grok. He could have easily targeted out that Granger in the team fight, but for now, Granger, you're not gonna survive. The slash gonna hit him up, and it will be a monster for the Lapu. Crazy, definitely. Now that the Ranger is out of the way with no kills, no assist, and as less assist as possible. Wait a minute, Sleepy tries to go for Arun. That is also another bad job, but no, shut down. He tries to get it. Oh, that Lord knock-up was just the surviving factor for Zelo this time around, and Radio takes away the Lord. What is happening? With Arun taking out triple kill as well, he's trying to go for more, but no, Radio got his back. This duo is really unstoppable. I'll say you one thing, Pichil. I mean, even the God is in the side of Cyber Drifters. That knockout from the Lord was really impactful in the team fight. Now he went for the deadly magic, used the rough whips a little bit ahead of the time, but will get the reason back and health back. The Holy Shield is not there into the mid. Lord slamming into the mid as well. The minion waves coming into the way. They got resurrected back into the Land of Dawn. But Inhibitor gonna falls down immediately. The setup is happening there. Lapu goes in. Godlike secured out of the Kadita. He's getting a lot of damage from the structure. Gonna get shut down from the Granger. And the Holy Shield of the top will help out to clear out the Lord. That was a pretty good move coming out from the side of Team Titans of ML to defend the Lord. I mean, just deflect the Lord into the side of Holy Shield, and it will clear out the Lord as soon as possible. Cho trying to pick off Ranger here, but not gonna able to do it. So carry. Look at the damage of carry. Gonna just stay there, secure the structure, comes back. Just waiting for the sweet time as of now. And with Inhibitor still standing strong, they'll have to, make sure to get that Inhibitor as soon as possible top lane. There is the minion pressure right there, but Arul though, he is already level 15. That is really crazy how much you can just get the level difference just by taking too many kills. Now, talking about the items that are presented right in front of us, Minsita going for pure damage is, I feel like, maybe a bit of a downfall, because I do believe the hybrid is much more better on the Minsita. Pichi, I'm thinking right now that the Julian pick was unnecessary here. That's the reason, because you couldn't manage to grab the early snowball what you were for there. Now you're kind of pretty useless there. Oh, Way of Dragon into the map. And you're going to see the deadly magic as well. They just vaporize that Grok into the air with 2 set of ultimates. Now, okay, he's fighting with the bush. Gonna go for the rough waves. Not gonna get connected onto anyone. Shinpo coming to the way. You gotta hook it down there, but Slippy just gets left down. And Julian goes back with the help of the enhanced Sky there. For now, clearing out all those minions going into the base. Might be having a chance to finish it down. King's Call comes into the way. Not gonna survive. Slain happen onto him. And before the Lord bars into the Land of Dawn, the crystal will fall down, and it will be a victory for the side of Team Cyber Drifters. Drifters. Yeah.
Let's go, Cyber Drifters. What a game that they have shown, especially for the Lapu Lapu who took away all that, spotlight. Let's look at the results. Yeah, and as expected, he is going to be the MVP. Now, once again, how they played is really crazy though. I feel like Lapu Lapu onto the bottom lane really got a very good advantage, and he made sure to take full advantage of the advantages that he had. Of course, and not only the Lapu Lapu, but the Cho was doing incredibly good. And you said that Arul and Cho was having a proper synergy in each and every team fight. They know whom to pick it off and whom to go for a initiation, when to go for an initiation in a team fight. And that was pretty good, I'll say, from the carry as well, to give the follow-ups instantly in each and every team fight. So properly, I'll say, it's 100% team fight synergy coming out from the side of Team Cyber Drifters to take on the game and to win it out, and to make sure that they will be entering into the round of 32 by knocking down Team Titans of ML. Yep. Titans of ML. And with that, ladies and gentlemen, let's go for a short break. For you guys, bring up your water, your food, anything that you're craving as of now, and we'll be right back. I see. Desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Hello, welcome back, ladies and gentlemen. After a short break, we are back again right here at the Battle of Crown. And with that, it is going to be another team, two teams, interesting teams who are here to battle it out and try to go towards the round of 32. I'm back again onto the caster deck, but this time it's going to be him also being back again. Hello, Ray. How are you doing? Yeah, I love the way you had to emphasize the fact that even I am back, right? Because I just left for a bit, and right now, wow, what a coincidence. We just kicked Ash out. Damn. But yeah, just like, of course, we are here for the 7th game of the evening. We're going to be getting even another one. We have another match, ladies and gentlemen. So do not forget, 8th match is going to be on the way as well right after this one. So make sure to stay tuned for that. But of course, let's focus on the present, which is going to be, of course, team. Damn, I just literally read their name. What? Okay, Yep. yeah, Vanguard Elite versus Matrix. So looking forward to their performance. And other than that, ladies and gentlemen, and let me please remind you that we have a giveaway going on. Make sure you participate. It's 9,000 diamond, and you can obviously get out of it as well. Make sure you also follow Algambo Esports on Instagram, so you can even participate on the 2,000 diamond giveaway as well. So you do have the chances to get some free diamonds, so make sure you get it. Let's move on to the draft, PG. Let's go. Glue, understandable. Minsitar as well, because I feel like Minsitar is getting a lot of traction into the
banning onto the ranks lately. So I feel like that is the reason why the Minsitar is getting banned. Onto the last game as well, we did were able to see a Minsitar getting picked, and it just did not work out against a Lapu Lapu. So this time around, since this is the best of one series, it's just better to have it, better safe than sorry. I will always mention one thing, that our pictures are always like mirrored. Your hands are on the right, my hands left. It's always kind of cool that we mirror each other. Really nice. But yeah, like you mentioned, I've been seeing the Minchitra ban a lot here, honestly, in this tournament. Obviously, top teams, they don't really care much about the Mincy, but it's kind of nice that new rising teams, or at least teams that are, aspiring to come into the esports scene, they're really trying to play the Mincetar more often, because he's a hero that you don't see often either. But yeah, the Florin and the Estes heal is ban is a kind of, honestly, diabolical. Surprised, yeah, because healer ban is pretty crazy. But to be fair, obviously not to being judgmental, both of these teams are obviously a little bit novice, so we might see more comfort rather than what's meta, because we do get a first pick Clint. That's true, and it's just better safe than sorry. Like, who would know Estes can take a savage? That is highly possible. I mean, I have taken at least a maniac, so. I mean, Estes is the only healer who technically can, due to the enhanced basic attack, and you can actually build a marksman, which I used to do back in the day. So those days are over, sadly. I mean, not over. No days are over. You can just try it and maybe fail a little bit, but yeah. Other than that, Matrix does pick up the Freya, quite of a meta pick compared to the Clint and even the Sicilian. That is their late game insurance. Looks like Matrix is going very strong with like a reliance on the late game burst. Vanguard Elite, let's see what they come up with. Let's see. Now again, comfort heroes can lead you to victory as well. So let's not underestimate that as well. But early game, as of now, Matrix will have to pick up something so that they will be floating and not putting everything onto the late game. But for Vanguard Elite, look at that. They will be easily making a bit of way for the Clint, but at the same time, Clint has to position himself very well. You talked about floating, and you summoned the Veil, who's floating as well. So maybe this is Peachy's fault that we're getting to see a Veil. But yeah, jokes aside, we do get the Dairoth as well. Don't really see him that often, especially after revamped design. Maybe people like the older design more. But honestly, I think he's kind of more into the sustain fighter, which has, I feel like the older Dairoth mains don't really prefer it much him anymore, because back then you could play him for burst. Right now, he's like a sustained fighter in the sea of sustained fighters. So people are just like, I would rather play Alice. So Vanguard Elite coming up with this, we are obviously looking forward to that. But okay, Matrix suddenly going for a Zushin ban after 2 healer bans. Maybe Vanguard Elite did have a healer user, perhaps. Maybe, and look at that. I mean, there is quite a possibility that we might be able to see these kind of mages coming up, or maybe onto the Rome as well. I feel like Rome Zushin might be a thing, since both the teams are going for comfort heroes. So it's just like, you know what? Let's just ban it. Let's just not have it in a way. At least the other heroes, we can just do something and get it done, Yeah, it honestly feels like that. We're going to be getting a lot of comfort picks and bans coming in from both sides. Just target picking each other, because it doesn't really make sense to ban out the meta when they don't even play the meta, because comfort is what's going to be their strongest suit. We already have the Gushin banned out along with the Zushin, and right now the Akai, and I think how about a Hanabi ban? Oh, highly possible. Like, Matrix is playing on the comfort heroes, okay? Like something like a Sicilian that has not been picked for such a long time. I feel like Hanabi could be also a good ban right here. Yeah, and right now last 2 picks left. Both of them have, okay, no, Dairoth can be a jungle pick, or can be played EXP as well, I guess, if you want to. But we'll figure it out later on as we move on. Okay, there we go. We get the Hanabi ban coming in, and right now Matrix will be picking up
There. Okay, so Freya is gonna be gold lane, and Vanguard Elite. What do they respond with? Let's see. Now, for Vanguard Elite, if they pick up something like a, Julian, could be a bit dicey, I feel like, onto the jungle, or maybe something like a Joy if they are very comfortable with. It is, I feel like, such a good hero right here, but it's gonna be an Alice. I feel like Dyrot could have been the EXP, but no, Dyrot has been upgraded to the jungle EXP Alice, and there you go. The Belleric is here as the tanker. Now, as a tanker, I feel like if he's able to catch out the Tigreal's moves, then it's well and good, or it's gonna be the opposite. Tigreal gonna catch them off guard. Yeah, precisely. And I think we're gonna be seeing a lot of vengeance spells, honestly, in the game. Bunch of vengeance, because you have Uranus, you have Freya, you have, the Belleric and everything. Bunch of vengeance. It would be kind of ironic if the fact that Diroth doesn't get upgraded to the jungle and it's actually going to be Alice in the jungle instead, because anything is possible, honestly. And on the other side, I think Julian is definitely... Imagine Julian is also not jungle, but why would you play Freya jungle? I don't think that will be a case. In this match, less likely, but maybe on the future matches as well, we might be able to see that. But for today, let's see how this team will be faring. Plus, they'll have to move towards the next round. This is going to be the Group D. And with that, ladies and gentlemen, are you guys excited? Because don't forget, the giveaway is on. That means head to the Instagram. The instructions are there and you will be entered. And the steps are easy. You don't have to tag anyone. You just have to, be active in the chat as well. That's all. Exactly. And make sure you remember the round of 32 starts from Monday next week. So if you're looking forward to that as well, make sure you mark your calendars, or make sure you're just there. Sometimes memory is also good. And with that, ladies and gentlemen, welcome to the Land of Dawn. It's going to be Vanguard Elite on the blue side and Matrix on the red side. Kind of suits their logo as well, because it's a Red Bull. But yeah. Ooh. Right now, okay, yeah, the Alice is actually going for the jungle, so we're going to be getting Dyrot Vengeance versus... Okay, are they going for a 5-man rotation? What is that? Atrocity. What? This is Brawl incarnate. First of its kind. I guess they really want to help him invade, but they're going to be losing out on the turrets. But funny enough, the opponent, they are assuming they're somewhere else, and they do not realize that 5 people just came to the jungle. To be fair, that's Alice. Her jungle is ridiculously slow. Yeah, first blood coming in. That is going to be going into the hands of the Julian. That is definitely crazy talking about that, because 5 members just roaming around. They were, much more interested on their own lanes, but they were like, hey, let's just get this Julian farmed up, and they're still going 4 members together. This is like brotherhood at the peak as of now. Yeah, Matrix looks like they're really taking their name seriously and sticking together and not really letting the Alice get much resources. They take away the orange, and right now they're looking for a little bit more. Okay, they really are rotating like in a group. Oh my goodness. I mean, there's obviously clear downsides right there, because you're splitting all the resources, which is not a good thing. And I mean, Sicilian is obviously taking away the... I'm not sure how good this strategy works. This would have worked 20 seasons ago, but not sure about now. Ray, I'm really happy to be in this match, because I really love how they're all together right now, not interested in the turtle. Yeah. Julian gets it on. And still, Dyrot had a free lane and he's still not level 4. Oh, he's yet to take that. Yeah. Oh, yeah. He hasn't really taken his minions. I think he's not playing aggressive enough. He's playing too safe. Like there might be an ambush. So yeah, I think he should take the initiative right now. Oh, is that a mistake?
could have been, but Julian will survive with 1 HP as a Revitalize. Oh, there was Revitalize actually coming in from Beleric instead. But anyways, yeah, this is the downside, of course. Rotating together like brothers obviously has downsides because that strat doesn't work. You're going to be losing out gold, but at the same time, D-Roth better play safe as well because you might get pushed inside the turret. Let's see. Now onto the top lane. Sicilian just jumps up as quickly as possible. Now Beleric really looking quite low, one shot away from the Sicilian, but now he just moves in, accepts his fate, and onto the same note, Dairoth, I feel like that's going to be the same thing. Double kill for the Tigreal? Crazy. Yep, 0-3 score. Matrix right now gonna be getting the lead already, and considering Julian has been farmed ample enough, has 1 kill, and is leading the charge with level 6 onto the board, I think they're kind of settled with the early game. And if they completely dominate the early game, they have good enough late game to make sure that Clint doesn't really dominate because they do have the Sicilian on their hands. Goal lead has not really shifted that much just yet, but we might see it shift lately. Julian gets us a little bit of a stun right there. He gets taken out. Sicilian comes in as well with a bad feast, but that's a bad position to be in. He does retreat out of there. Will it be enough? Vale misses out the ultimate, the waves, but at the same time, Clint trying to dish out a little bit more damage, doesn't really have it. Freya trying to come in with the dashes. Here comes Valkyrie's descent already used up, but decides not to go. But Implosion at the nick of time on a really bad spot. He gets taken out when the Clint was just 1 HP left. Crazy. Vanguard and Light are really pulling it up as of now, but Matrix is really a step ahead with their rotation. So this kind of a setback really doesn't matter, but at the same time, it is still the Matrix losing their goal. Though I feel like this strategy, it is 50-50 for them, more than 50-50. It is like 70-30, 30 not winning the game because you're losing gold as of now. But yes, there is Julian farming it up. Look at him, he's trying to get all the kills, but there is this Beleric trying to come up. But hey, they will be not taking a fight. Yep, no fight just yet. Freya though, getting a lot of poke in the bottom lane. Obviously not able to do much to the Clint, but looks like she might be trying to steal another resource away from the Alice. That's the downside of the Alice's jungle. Her farm is so slow that she cannot clear everything, and that just leaves the creeps open to the opposing side. And look at that, Freya just got a free orange buff right under there, and with this turtle, we shift the focus right there. Matrix has 4 kills on their boat, 2 on the side of Vanguard Elite. But at the same time, let's see, Alice comes in with the Throne of Ruin, but Retribution missed out. Here comes Vale's ultimate as well, but Implosion connected with the Wrath of the Dryad. Here comes D-Roth with the punctures damage, double kill secured for a Beleric. And right now they're going back. Vanguard Elite make good use of their team fight. They have literally wombo combo. They have Wrath of the Dryad, Vale's Windfall Fury, they have Alice's Throne of Ruin. All of them basically cover the same circle area. My goodness. Vanguard Elite are really pulling it up, and they also know that it is kind of easy to crack down Matrix as quickly as possible. Since the members are moving like, all together, the lanes are quite open, and because of this, the bottom lane might be taken down and the top lane already done. Wait a minute, Daya. Whoa, Vengeance won't be helping there against this Clint. The way that he is in that HP, he has to go back, but Sicilian for the rescue. Oh, I feel like there's a bit of a vision already coming up. Julian spotted out. That means he wants to just go back and farm. Yep, PG, and with this, we're in a bit of a stagnant period. The scoreboard remains the same, 5-4, as we head into almost 7 minutes into the game. Still pretty early game. We are just heading a little bit slightly towards the mid game, and this is where maybe the Clint might be able to outshine. But at the same time, there is the Freya, which is of course the one with the biggest AoE damage. But at the same time, top lane going to be rotation being made by Beleric, might be seeing an engage coming in, and they have to pay respect to, of course, the damage coming in from D-Roth as well. So for now, last hurdle going to be coming in. 114 stacks for Sicilian, scaling up decently, I would say. Ooh, let's see. Now Team Matrix will have to think about opening up the lanes, but Vanguard Elite, they are playing it strong. Oh, back lanes, Tigreal though
Whale's ultimate really hitting it a lot onto the killer of enemy. He is the first one to fall down. Along with that, Sicilian, not the Sicilian, but the Tigreal in a very bad position. Wait a minute. This is like a deja vu. 4 members roaming around. Not 4, but 5. They are literally copying Matrix strategy as of now. Yep, they realize if you're going to stick around, then maybe we will as well. And this is working better for them, especially considering they have 3 basically same AoE skills and really good crowd control as well. The Veil, the Belleric, the Alice, it's just textbook combo of combining 3 really heavy AoE CCs together, and right now they're going to be able to get the turtle as well. 8-4 score, almost 9 minutes into the game. Vanguard Elite have taken back the lead that they lost, and slowly but surely they're trying to build it back. They have already taken the turrets and the top lane, and even looking towards the bottom lane as well. Even a mid turret has been exposed, so macro wise they're actually doing way better compared to Matrix. That is true. And talking about the gold as well, they managed to get the gold high up as 4,800 as of now. So that is going to be really good difference onto their hands. And look at them. They want to open up the map, but Clint being there to clear the lanes as quickly as possible. And it is just not working out. Belleric trying to taunt them down, but no, STR taking the Sky Piercer damage. Look at that. His Sky Piercer with 40 stacks available. He is really lethal. But onto the bot lane as well. Oh, mid lane. Julian really tried. Yep. He has good damage, but it's the fact that he's kind of alone. Throne of Ruin coming in. The Gets bursted out of the existence, and with this 11-4 score, Matrix have yet to gain a kill after that early game lead that they have gained, and Vanguard Elite just keeps on rampaging them non-stop, and now they're looking to take down even more turrets. The mid lane, they might go for it, but Clint is not present yet, might go for the bottom lane. Instead, they're trying to go for a flank possible with the Belleric, but let's see what happens. We're entering 10 minutes into the game. We are in mid-game territory now, heading towards the later. Let's see. They're looking quite godlike for this Clint. He's not stopping. His positioning is very well. Takes another kill. It's going to be a savage though, because hey, the team members are really coming onto his plate quite easily. He does not quite go in for that, and Dharmic is going to be the one taking away the kill. And Melon, his flame shot really worked there. Julian finally getting a chance to open up the map, and Vanguard Elite, I think this is the time where they disperse or go for the Lord as quickly as possible before Julian comes in. Yep, I think they're going to be going for the Lord. Unless Julian can pull off a miracle steal, it's going to be really hard for him. Because right now there's going to be 4 members on the Lord. D-Roth is just trying to solo him completely. Oh, no. He successfully does it because of the fact that he has the Vengeance, and yeah, his sustain is much stronger than a Julian's. And with this 15-4 score, Matrix unable to get a single kill, and he even get the Radiant Armor. So yep, there was just no way that Julian could have shredded through that magic defense of this point. He only has attack speed, no penetration whatsoever, unfortunately. Oh, Alice is actually kind of going for the damage, going for the glowing wand, the priority. Clint, I believe he has around 60 to 70 stacks, and he's building towards the Sea Halberd as well. Crazy that is happening right from both the teams, because it is just non-stop pull and push of the advantage with Matrix. Whatever they had, they just lost it into the hands of Clint, especially because Clint has been farming up and getting all those kills. Look at him, he's able to get those Uranus's health bar down, and with the Lord coming in, Lord marches down. That's a bam. And I would love to see how much the Sicilian has farmed up as well. Looks like he will be going down. And with that crazy taunt coming in, that is what a tank. And the setup looks like triple kill coming in for the Clint, and the base wide open. Matrix, their strategy did not work. Yep, unfortunately that's going to be the case. And Team Vanguard Elite, after the early game slight bit of lead that Matrix took, immediately took it back and were able to win it out in a very dominant fashion and in a very quick timing as well. They ended it, I believe, in a very around 12 minutes, I believe, because we did not even get to see the Lord, right? So Yep. really well played.
Definitely looking at the result screen, it's gold versus silver, and almost like 70% of the kills into the hands of Clint. Now again, Clint did a wonderful job farming on his lanes, making sure his positioning is not compromised, and that is also another reason why he got the MVP. Yep. I mean, he was just early game. He did not actually pay much attention to anything. He was just focused on farming. And yeah, once he built up the Sky Piercer and he started getting the kills, it was just a snowball game. And he ultimately got it as well. What a gameplay. Really loved it. That is coming in from the Vanguard Elite. Congratulations to you. Moving towards the round of 32, but hard luck for team. Yep. And with that, ladies and gentlemen, let's take a short break. We'll be right back. I see desperation. I come to crush my enemies. I read the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I read the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I read the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet.
Desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet.
The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
Desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet.
Desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back. A very late good evening, rather. And with that, let's resume our last match of the day. The teams are all ready. We are trying to get to the round of 32. This is going to be the last of the round number 2. So let's gear up. It's going to be Team Asur versus Team Evil Kaizen Esports. And with me, it's none other than Ray. Hello, Ray. What are we going to see today? Well, even I am actually on blind. Honestly, I've not seen these teams. I mean, I've seen Asur in a previous round, but honestly, their opponents were not up to their level. So maybe this time Evil Kaizel can give them that competition. So let's see. This is, of course, round of 64. Final match, final day. And Monday we start again with the round of 32, obviously, where we'll be kicking things off for the qualifiers for the round of 16 as well, and so on. So we're coming up with the bans. We are already seeing what looks like to be a Kaja and a glue ban. Okay, along with Rafaela. Oh, what's with the healer ban suddenly?
Oh my god, looks like teams are really hell-bent on banning those healers. And I feel like it is okay for them to do this at this round because it is best of one. And on top of that, it is just, prevention is better than cure. It's just better than safe than sorry. Absolutely right, Peachy. That's the procedure they're going for at this point. They're going to be banning out the Marcel, and right now, as the countdown go in, let's see what they will go. Except for the Rafaela, I believe all of the bans are honestly like pretty much Valid. meta standard. Oh, yeah, the Rafaela is kind of weird unless they're trying to target someone. Other than that, what is it? Evil Kaisel first pick right now. They have a varied options, but they can just go for a perhaps like a Kalia, maybe a Freya, maybe okay, they go with the Freya. Oh, Freya, interesting choice for the goal lane or perhaps the EXP lane as well. And now that they have been actually picking these kind of heroes, that is also going to say that the rise of Mincetar, a Mincetar can be picked. So let's see if that is the case or not. But hey, similar to Minskar, it's going to be the Phobius. Now, Phobius also has very good potential with his skills. So, yep, I am curious to see how they will be trying to counter it out and how they will be trying to get a kills out of it because Harley, which was open, will be taken. Yep, there's still a lot of options still open though. Like the Sora still left out open, Zushin still left out open. You will have the Kalia still left out open, something that a lot of teams go. And there we go, we got the Zushin. And okay, they are just picking up the OP heroes. Oh. I mean, both the sides are definitely doing, other than the Phobius, have not been quite very consistent in the meta as of this season and even the scene that is going on to the tournament as well. So I do believe it is going to be a lot of meta heroes coming in and a lot of brawly team fights that we will be witnessing. But back again, Asur. Yeah, they'll have to pick one hero, and I do believe they will be more inclined towards a team fight. Yep. I mean, when there's a Zushin, it is most likely to go for a Eve, and that's what they go for. And right now, we're going to be getting the second phase of the ban. So one side has the jungle, other side has not. So with the Sora pick, it is pretty clear that Freya is actually going to be going for the goal lane. And that cements for Evil Kaisel to maybe ban out some marksmen. So Freya has a little bit more easier time. Maybe the late game marksmen that can bother her. Other than that, on the other side, they can... All right, what is that ban? Do they assume Freya is jungle? Eh? My goodness. Yeah, I think they think Freya is jungle, honestly. Oh my, okay. Looks like Obsidia getting banned. Okay. The other side makes sense. They want Golden ban, but why is Asur banning marksmen? I mean, to be fair, YSS can be played on jungle, but still, I would consider a marksman considering what the direction they're going for. So kind of confused why they went for 2 marksman ban. I guess they're assuming Freya is a jungler. Look, there is a possibility, okay, that the Freya might be a jungler, but the possibility, in my opinion, is very, very less. Yes, the teams are playing on comfort, and since there is a lot of display of meta heroes, that is just, telling me that this is a goal lane. So the teams banning up the goal lane is a bit skeptical, especially coming in from Asur. So let's wait and watch what they are cooking because the bans doesn't matter once they just end up in the game. Absolutely right, PT. And right now, they pick up the carry, a very strong late game option, going to be able to melt out Sora and Freya simultaneously. And I believe that is something that Evil Kaisel will definitely have to watch out for because against a late game, obviously, marksman, you're not going to be able to win it with a Freya. Unless, I mean, she's have been adjusted and plus, you can't reach the backline that easy considering there's a Phobius right in front of you and you don't exactly have a melter. So right now, Evil Kaisel have the chance to respond. I've been seeing, whenever there's a obviously people, they pick up the Lancelot. Despite the Phobius, they pick up the Lancelot. And what do they end up with? Okay, Grok. So Evil Kaisel, basically the draft is a full-on meta
heroes combined with a very standard lineup. You have a jungler, EXP, fighter, gold, like very standard lineup. Asura is also kind of doing the same, honestly, Peachy. This is all meta composition, nothing out of the extraordinary. That is true. That is true. But at the same time, taking a Lancelot right in front of OVS, that is, I am like really curious to see how they will be trying to get it on, because Lancelot will have problems, because that is true that the Grok, the Sora will be providing sets for him, but at the same time, he will be the one who will be trying to pick up the crumbs rather than being the damage dealer as well, because in this team composition, if he starts dealing damage, as in like going before Brock or Sora does, he will be getting caught. He will be punished for that. So I feel like Lancelot is a bit risky, but Belleric, they are literally closing down whatever is going to be a melee. Yeah, the Belleric pick honestly feels like the fact that since they have all melee heroes already, and only the Zushin has kind of a range, but even Zushin needs to get close to pick you up, they're countering out with the best close range tank you can get, which is of course the Belleric itself. In a way, on theory, on paper, this is perfectly like capable to do it. But let's see what we'll have in store for us as we dive into the game. Ladies and gentlemen, welcome to the last match of tonight and last match of round of 64. Let's go, let's go. And the carry reminding Sora that he forgot the skin. That is really funny, because I hope the players do realize that this is visible to us and everyone in the stream as well. But oh my goodness, a lot of damage right there. First blood already done, like punishing right off the bat. That is really good for the carry. Too much deep. Freya went way too deep unnecessarily and got punished. And right now, even the mid lane, looks like a lot of poke has happened. So we are going to be definitely seeing a lot of brawl coming in from both teams by how they have basically started off the game already, Peachy. True. Mid lane as well, look at them. They are trying to make sure to get the pressure on, because Belleric, really good hero to put that pressure against the Zushin. You know, that is going to be there. But RIP me from Asur, really aggressive. Like, he's putting up 100% vision right there. Really tried to take away the purple buff, but that was such an unsuccessful attempt. And he is just trying to make sure to not lose his life as well. Now onto the bottom lane as well. Lane freezing, that is classic carry, which is going to come up. And, you know, there's an Eve, right? The Eve was picked right before the Zushin was picked right before the Eve could have been, and not quite sure why still. Oh, this is what I was talking about. If the Lancelot goes in first, he will be punished, he will be caught off guard, and now he has to retreat, he has to go back to the base and get his HP up. Yep, 0-1 score, and Asur seems to be taking the lead and charge on everything. Eve hasn't really gotten to level 4 yet, doesn't really have the RWM to charge in, but right now, here comes RQ Gamer, right now going for maybe possible engage. Sora comes in, RQ Gamer captures the kill onto Smarty. Here comes the RWM as well, but the turtle secures for your enemy. And with this, looks like Flicker's going to get used. Belleric right now completely getting abused as well. Doesn't really have the Wrath of the Dryad, needs to retreat, but unfortunately he won't be able to. And a little bit of a fun fact, both of their tankers are their captains. That's crazy, but same note, Oi will be taken down. Now, you know, since the Freya was taken down once, there is a level difference. Look at that. The level difference is really crazy. Looks like Mist will be the one spotting out. As a mage, you're not the one going in the turret. Will be met with a tectonic charge, and Mist will be taken down. Fabi 5 tries to jump in, but no. Wait a minute. Got picked up by the Lantern Flare. This carry needs to reposition, and or will be taken down. Looks like the answer will be taken down by the same hero. Double kill for the Freya. Yep. 5-4-2, and Evil Kaizel right now has taken the lead. Honestly, not sure what Eve did. Like, you literally saw Freya did the same mistake and got taken down, and you did the same thing. Why would you go in that bush as a mage?
I think that was either miscommunication or kind of overconfidence coming in. But right now, 5-2 score, 4 minutes in. We are definitely getting the brawl already. Fabi gets that golden staff first priority item. Zushin going to be going with the Skypiercer priority as well. So she's confident they're going to be able to get the kills. No Wrath of the Dryad yet for Belleric, right? Yep, he's just gonna wait it out as of now, but I feel like it is gonna come back in just few seconds as of now. But Sora being taken down time by time now, that is going to be really interesting to see, because Zora is also another hero that is much needed right there. RIPB Solo will be taken out. Adventure Boy still playing into the RWM. He tries to get missed as well, but missed with the flicker is surviving. I feel like that flicker is just needed, but at the same time, if Mist did realize that they won't be using everything on them, on her especially, or the hero or the person, that would have been better. But now your enemy does get the turtle once again. There you go, Adventure Boy with the mega kill. He's not stopping. Landerfly might be coming in once again because of his mana issues, and since Zushin takes a lot of mana, that you need to really know when to stop and when to play that skill. Yep. An 8-3 score, 5 minutes into the game, 2,000 goal lead. Evil Kaisel has taken a massive lead in the game already. And by the 10 minutes, it's going to be interesting if Asur will be able to clap back with possible Harley or maybe the carry. But by the looks of it, oh, they're actually responding. They take down 5v5. Wait, 5v5's name sounds like 5v5. But on the bottom lane, oh, that's a flicker used just to get out of the RWM. Skill wasted, but a flicker, I guess, valuable. He survives to tell the tale a little bit longer. But, of course, the Sora has been bullying the Phobius with using his immunity. But at the same time, he's fallen to Harley almost 3 times. Two times. Ooh. Yeah. That is really dicey when you're falling down a lot, and that is not needed, because you need to try to predict where your enemy jungle might be. As a goal laner, as an EXP lane. Yep. 8-4 score already into the top lane. RIPB might have to pull up the Wrath of the Dryad. Yes, he does. He pulls in 3, pulls in 4. Here comes the tech charge. Going to be able to find the target. Maybe Johan falls in first. Next one into the list. RIPB survives it barely. He uses to retreat, and Harley does so as well. RQ Gamer, though, on the other side, gets detected out by Mist and taken down. Zushin still looking for the kills. Has the Skypiercer, but doesn't have enough stacks to really commit to it. And right now, the turtle of the game has spawned in, and we're looking for an interesting bit. Oh, Zushin almost could have been taken out. The jungler is playing a little bit of a hide and seek, looking for the angle. Oh, the Harley actually goes back. He's looking for something, perhaps. Okay, he's looking for the Lancelot. Could have been a very risky play, honestly. He could have been taken down. Oh, flicker play! But the hat right on time, used to get out of it. Quite smart, I would say, from Smarty. Okay, his name is Smart. Peachy, are you back with me? Hello. Okay, looks like Peachy will be back with me a little bit later. 9-6 score. Okay, you're back. Let's go. A bit of a network issue, but here we are now again. Despite, the Sora being taken on quite a lot, I'm not quite sure why they have not pushed it down, but Fabi 5, that is nasty damage coming in from Carry now. Yep, Carry alone, taking care of the Freya by herself on a 1v1 situation. Last hurdle of the game. Who will it be? It is Smarty taking it out. RWM in the perfect place with the Wrath of the Dryad placed as well. Your enemy falls. So does OA. Monster kill secured for Zushin. But if she falls, that's going to be a really bad thing, because she's the important caveat. That's going to be a massive bounty gone into the hands of Johan. And with this, Asur have taken back the lead. 2,000 advantage and 11 kills on the board. They have now scored it even. And right now, they're the odd one out, looking to take the macro lead by taking down the turrets. Crazy damage coming in, especially for the Carry, who has not been in check. Carry has been definitely getting all those kills, all those farms right from the game minute number 1. And that is allowing her to rotate as quickly as possible for now. And with that, Lancelot really struggling to take the buffs as well. Yep. Since his purple is going to be gone, despite the fact that we are already
almost 9 minutes into the game. He doesn't exactly need a lot of farm, but the fact that it's going to be thwarting him from becoming level 15, that's definitely obviously something that Asur has taken charge in. And right now, the Harley is going to be able to get the level 12, maxing out his ultimate to level 3. And looking at the itemization, let's take a look. It's going to be the Lightning Truncheon done with the Genius 1. Phobius actually went in for the Chest Pauldron with the carry, going for the obvious Trinity build. Going to be completing the DHS pretty soon. Let's compare to Freya. Only has 2 items, so carry almost an item ahead with 1000 gold lead. And on the other side, your enemy also falls. Ooh, nasty damage coming in, but at the same time, 5v5, he moves away with this mobility, but carry though, still trying to deal damage. Now Adventure Boy is being very cautious. And thinks of Billaric right here. What a setup coming in from Sora, but that is only Johan, who is the tanky person. At the same time, he's trying to get Adventure Boy as quickly as possible, but Lantern, Crimson Beacon helping right there. There's a cannon minion coming in. That means the cannon minion can easily tank it up, but no, with 3 members right there, it is going to be the side of Team Evil Kaizen taking those minions quickly as possible. Now the Lord is up and Team Asur is guarding it with all their might. Now they are looking for the bottom turret as quickly as possible, but it is not being possible since there's a lot of members present right in the bot lane. Yep, 10 to 13 score at this point. Evil Kaizel, they still are trying to catch up, but Asur have taken the lead with 4k gold lead with a Lord under their belt. And looking at the macro as well, they have taken down 3 turrets, which is basically all the tier 1s. Now looking for that tier 2 as well. Carry just so much ahead. 5v5, he's kind of behind. Right from the minute 1, he's making a few blunders. And right now, he's really behind of the carry, who might be able to just carry this game on her back. Okay, 5v5, going for a Sky Piercer so late, especially when one of your teammates has one. That's not a good decision either, honestly. And right now, even the tier 2 will fall. Look at them dealing damage 1 by 1, killing spree picked up by Rehan, and he's just not stopping. Now that the Lord is coming in, the minions though, they are trying to bait out that Holy Crystal. Unable to do that, that means they will have to wait for the Lord that is just gonna jump in. Now top lane, the pressure is gonna definitely increase while Smarty realizes there might be a window of opportunity opening up for him, but Rehan, he is in position. Along with that, he does manage to get the Freya, pops the Vengeance, but then not at the right time. It dies at the base. And on the front lane will be the first one to fall down, the secondary tank down. That means Tectonic Stars coming in. A little bit of a wrong decision because they needed to get one more person onto the knockup, and that would have been such a wonderful set. But at the same moment, Lancelot out of the way. It's just 2 members, and Smarty once again tries to go for the Adventure Boy, but he himself just gets taken down. Now wait a minute, Rehan, he is trying to deal damage to the crystal. It is quite open. Adventure Boy, he's not able to clear the lanes, and it is going to be Team Asur winning up the game. Yep, a pretty clean game, honestly, from their end, and not that unexpected, especially considering that the side of Team Evil Kaiser Esports, they kind of made a few mistakes and few blunders, honestly. Because losing a gold lane so early, it's obviously going to affect you. And looking at the stats as well, right now, 17 to 13, 12, we had Harley almost completing the Holy Crystal carry done with 4 items compared to Freya's only 3. And that one was also Sky Piercer, which is a very cheap item. I definitely believe that I think the gold lane was definitely a key reason that they actually lost this game. But the MVP goes to none other than Mist. Damage coming in, and really loved it how they played it off. Now with the same note, the team really did their best. Exactly. And with this, ladies and gentlemen, we have come to the closure of round of 64 and tonight's matches. We'll see you on Monday at the beginning of round of 32. So make sure you're there present. And of course, none other than Algambo Esports. Make sure you subscribe to the channel because we want to hit that 1k subscribers for more giveaways. And there's already going one right now. Make sure you stay tuned for that in the round of 32. And you can obviously join the giveaway happening on Instagram as well. So make sure you follow our social handles. And we'll see you at round of 32 on Monday. Good night.
and take care.